Right, the first match, day 2 of this prestigious cricket tournament, Planet A Trophy 20. So umpire have signal to start the match and the first ball of the day प्राप्त करने में सफल। रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है इन 2 रनों के साथ। गेंदबाज रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। पहले गेंद पर 2 रन प्रदान करने के बाद एक बेहतर शॉट मिड विकेट पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने। गिर चुका और ऐसा कहना पड़ेगा पहला विकेट खो चुका है। यहाँ पर 80 बाजी आगे बढ़ाते हुए राजेश के लिए दाहिना तो पर विकेट अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए तैयार। ऑफ कटर गेंद को इस वक्त ढकेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए। ओवर की समाप्ति, बेहतर ओवर की समाप्ति इस वक्त हो चुकी है अरुण की, जिसमें सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए। 1 विकेट प्राप्त करने में सफल रोहन नक के रूप में। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक धीमा शुरुआत इस वक्त कर चुका है अग्रार। कुल मिलाकर 3 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर पानीर के खिलाफ आज के इस दूसरे दिन के पहले मैच में। और जहाँ तक अगले मैच का सवाल है, जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, Ranipura will take over Fajir in the next match, and because of that I request the players of these 2 teams to please report to the stage for the signature procedure। और जहाँ तक इस मैच का सवाल है, 7 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे, 7 overs per side to be played, 2 ओवर पावर प्ले। और इस बीच गेंदबाज द बॉलर स्टार्ट्स फ्रेश प्रोसीडिंग्स इज ऑस्टिन, और वो इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और लॉन्ग ऑन पर फील्डर थोड़ा सा वाइडर तैनात, लॉन्ग ऑफ बिल्कुल सीधा। और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ। हाफ स्टॉप इस वक्त करते हुए स्क्वायर लेग के फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें बल्लेबाज के पास मौका 1 रन न प्राप्त करने का। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर शुरू हो चुका है और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लगभग जमीन के सहारे आते हुए गेंद को रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला अपनी बाईं ओर जाकर गेंदबाज जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। रन से सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए और इस वक्त क्रीज पर जमने की कोशिश करते हुए ये दोनों बल्लेबाज ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए रन लेना चाहते हैं, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित। वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी ही हैव नॉट सक्सीडेड, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और ऑस्टिन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। एक्स्ट्रा कवर पॉइंट शॉट थर्ड मैन, स्क्वायर लेग मिड विकेट और मिड ऑन, जबकि शॉट फाइन लेग 20 गज के दायरे के अंदर तैनात था। ये गेंद बॉल्ड जस्ट कॉल फॉर अ माइटी ही हैव नॉट सक्सीडेड, मच स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द बॉलर। और इस वक्त विकेट प्राप्त करते हुए बल्लेबाज ने गेंद को इस वक्त उछालना चाहा था, लेकिन गलत लाइन पर खेल गए। बल्ले और पैर के बीच में अंतर और उस अंतर को चीरते हुए सीधे गेंद लेग स्टंप को बिखेर कर ले जाते हुए जॉसविन की पारी समाप्त। दूसरा विकेट गिर चुका है। इनफैक्ट इट्स सेकंड विकेट डाउन, इट्स 6 for 2। So Jason, the number 4 batsman is now comes out to the middle, और इस वक्त तो सामना करेंगे गेंदबाज ऑस्टिन की गेंदों का। 4 गेंदें इस ओवर में ऑस्टिन फेंक चुके हैं। 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के नए बल्लेबाज जेसन के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। 2 गेंदें बाकी इस ओवर में। ये गेंद उछाला मौका, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे तैनात था। ऐसा कहना पड़ेगा नॉट फुल्ली कंट्रोल दैट स्ट्रोक, लेकिन अंतिम अक्षर में गेंद मिड ऑन फील्डर के आगे टिप्पा खाते हुए और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद अजबार गेंद को उछाला स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ पॉइंट फील्डर, सॉफ्ट डिसमिसल फॉर द बैट्समैन। और गेंद को इस वक्त उछाला था जरूर, लेकिन स्ट्रोक पर नियंत्रण नहीं था और गेंद हवा में डोलते हुए सीधे पहुंचे पॉइंट फील्डर के हाथों में। आसान सा कैच लपकते हुए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। अग्रार नाउ आई मस्ट से दे आर लुकिंग इन ट्रबल। इन फैक्ट 7 for 3, 3 top Indus batsmen already back into the pavilion. Really struggling time continuing here for the batsmen of Agrar in this situation.
तो जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, गेविन नंबर 5 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। 2 ओवर की समाप्ति, 2 overs completed. The batsmen of Agrar are still searching for the right track in this situation. 7 for the loss of 4 wickets they scored. Still in overall calculation it's going to be 5 overs left in their innings. और तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार अरुण, जिन्होंने अपना पहला ओवर काफ़ी बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 3 रन प्रदान किए थे, और अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और सपना करते हुए इस वक्त जैसन दाहिने हाथ ओवर द विकेट ऊपर की पहली गेंद लेकर तैयार। ऑफ कटर गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, इस वक्त गेंद पहुंची एक्स्ट्रा कवर पर, 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका, कुल मिलाकर 8 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। इनफैक्ट गेंदबाज अगली गेंद, ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, लॉन्ग आउट की दिशा में गेंद जाती हुई पीछे, काफ़ी पीछे फील्डर तैनात, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर, और 9 रन तमाम 9 रनों में से 7 रन सिंगल्स के रूप में अब तक बन चुका है। सिर्फ एकमात्र कपल इस वक्त लिया गया है बल्लेबाज द्वारा, और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार, चप किया इस वक्त गेंद हवे में जरूर, लेकिन फील्डर पॉइंट पर थोड़े से स्क्वायर तैनात, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट इस वक्त, और थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई थी 20 गज के दायरे के बाहर फील्डर द्वारा, और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। अरुण तीसरा ओवर प्रगति पर, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अरुण जो कि इस वक्त सामना करते हुए, माफ कीजिए गेंदबाजी करते हुए, और दाहिने हाथ के बल्लेबाज जैसन सामना करते हुए इस वक्त गेंद को खेलना चाहा, लेकिन खेल नहीं पाए। गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए पानीर के गेंदबाज, और एक बार फिर से गेंदबाज अरुण तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ अंतिम क्षण में, और गेंद को जब तक शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर जमने की पूरी कोशिश करते हुए, एक साझेदारी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए, और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो अरुण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ रन पूरा कर चुके हैं, दूसरा रन लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े इस वक्त, थोड़ी सी हिचकिचाहट, लेकिन दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर हुई, 3-4 कदम दौड़ने के बाद दूसरे रन के लिए बल्लेबाज कुछ हद तक झिझक गए, लेकिन बाद में दौड़ना शुरू किया, लेकिन 2 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल, जब तक थ्रो पहुंचे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 14 रनों पर। 14 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट, 3 overs had been bowled, and still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings। तो 4 ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं बचे हुए 4 ओवर में यहाँ पर अग्रार के बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए द बॉलर स्टार्ट्स फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स एंड 4th ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स, और अंपायर इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए, बेहतरीन अंपायरिंग का पैनल इस श्रृंखला के लिए नियुक्त किया गया है। श्रीमान सतीश मूडुबिद्रे, श्रीमान सुरेश मूडुबिद्रे और श्रीमान श्रीराज कुंपला इस वक्त इस श्रृंखला के लिए अपना अंपायरिंग का कार्यभार बखूबी अदा करते हुए, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, इयान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है, एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट गिवन बाय द अंपायर। फुल टॉस के तौर पर गेंद थी, और जो गेंद थी विनीत की, वो गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप को केंद्रीकृत कॉन्सेंट्रेट कर आते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद उनके पैरों पर टकरा, उनका पैर बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने रहा, और अंपायर को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है, और बल्लेबाज जैसन आउट होकर वापस लौटते हुए 5 रन बनाने के बाद 4था विकेट खो चुका है।
काफ़ी संकष्ट की स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ अग्रार 14 रन जोड़ चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है जनाब इरफान बेद्रा इनके सारथ्य में। और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई स्वराज मैदान मूडबिद्री पर। काफ़ी विशाल सा मैदान स्वराज मैदान मूडबिद्री कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है। और यहाँ एक मशहूर और प्रतिष्ठित श्रृंखला की शानदार प्रगति होते हुए इंटर पैरिश 11 अंडरआर्म टूर्नामेंट प्लैनेट ट्रॉफी 2026 सीजन 1 के अंतर्गत। और नए बल्लेबाज एंजेलो सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को मोड़ दिया इस वक्त मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर पीछे तैनात काफ़ी डीप मिड विकेट पर जस्ट सिंगल ही गॉट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले गो इन द इनिंग्स। एंजेलो इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं सामना करते हुए गेविन और विनीत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। परफेक्ट लेग कटर, दिस इज आउटस्टैंडिंग डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर। रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेलना चाहा लेकिन गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर को भी वंचित करती हुई निकल गई इस वक्त फॉरवर्ड शॉट लेग पर। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 16 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और विनीत अगली गेंद लेकर तैयार। एंजेलो सामना करते हुए इस बार ऑफ द टॉस, गेंद को मोड़ा जस्ट ओवर द मिड विकेट फील्डर साइड। जितोड़ कोशिश जरूर की थी पीछे की ओर जाकर गेंद को लपकने के फील्डर ने 20 गज के दायरे के कुछ बाहर, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर उनके सिर के ऊपर से गुजरते हुए और 2 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल 18 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 2 गेंदें अभी भी बाकी और विनीत इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। एंजेलो सामना करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, बेहतर गेंद थी, मत स्ट्रेटर लाइन। गेंद को छोड़ दिया एंजेलो ने कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन मिस जजमेंट इस वक्त करते हुए और सही गेंद को उचित अंपायर द्वारा विनीत इस ओवर में अंतिम बार एंजेलो के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ट्राई किया इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में 2-3 कदम आगे जरूर बढ़ाए और मिसफील्ड इस वक्त फॉलो थ्रू में गेंदबाज द्वारा होता हुआ। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता है 1 रन का इजाफा हो चुका है। सिंगल टू इन द ओवर, 4 गॉन एंड आफ्टर 4 ओवर्स स्टिल द स्ट्रगलिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ अग्रार। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 3 टू गो इन द इनिंग्स। 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में अग्रार के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो आगे का आंखों देखा हाल सुना, लेकिन आज पहली बार मेरे काबिल दोस्त मेरे लंबे समय के साथी सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंतिम 3 ओवर का आंखों देखाल सुनाने के लिए। गुड मॉर्निंग सतीश, हार्दिक स्वागत है आपका। और 3 ओवर का खेल बाकी और पहला 4 ओवर ऐसा कहना पड़ेगा सतीश बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ पानीर। धन्यवाद। Thank you very much, Gopi. Good morning to everyone and welcome to the day number 2 and final day and champion decider day of prestigious Planet Air Trophy 2026. And the match number 1 of the day number 2 is in progress and a nice little progress here for the team Agrar and wide outside the line of leg stump and going to be a white signal umpire. So extra runs here in the form of overthrow, white +1. A couple of runs added to total, and with that couple of runs, Kobana moves on to 22 on the board. Winning the toss, captain of Lady of Mercy Paneer, they elected to ball first, and so far they bowled well to restrict some runs from the opposition Agrar. They have to get some acceleration of run rate. This time lovely delivery, beautifully bowled, appeal for leg before wicket, but not a confident appeal, just an excitement rather than the confidence. And left hand batter just wanted to go for the big shot, Angelo. They need to get some partnership going. Lost 3-4 quick wickets in the morning, exploiting the morning condition very well by the bowler. Again played it wide of the fielder into the deep mid wicket region. That will go into be a boundary. No, it is stopped by the fielder. No, I think he stopped that one and just inside the fence and ample time. Oh, direct it is gone. What a throw came from the fielder. Absolutely fantastic.
Just they wanted to check the boundary there, umpire. They just wanted to see whether the fielder is saved the boundary or not. If he saved the boundary, then definitely batter is in trouble. Just have a look at it in replay. And driven that one in the gap, and the fielder just wanted to see whether the fielder is cross the boundary line or not. Have to zoom it a little bit to see that, because something which is we can see there, whether the fielder is managed to. So it's a boundary. Is absolutely across the boundary line. It touches the rope before he going to stop the ball, and that's what umpire. The good decision there for umpire, and before the giving that decision, they just wanted to check the boundary line. This is what the quality of the umpiring is all about. Even the quality of live telecast of YouTube channel Bedra Media. We're just getting a close view of that attempt from the fielder to save the boundary. The very lucky escape here for the batter. 26 on the board. Again lofted that one down to deep long on, and protection is there in the deep, so that ample time for the batter to complete the couple of runs. With that couple of runs, Bundel moves on to 27 on the board. Very important runs are coming in this over number 5th of Austin. Wanted to go for the sweep shot, wicketkeeper missed it. Umpire called it bye. So with that bye, Bundel moves on to 28 for 4. The match number 1 of the day, number 2 after that very successful day number 1 yesterday. Team 90 Warriors are true to the finals of prestigious Planet Air Trophy 2026 season 1. This time lofted. It's going to be a chance for the fielder, and yes, he does. Excellent judgment by the fielder. It's a tall man down at deep long on region, making no mistake at all. Definitely at one stage it looks like the ball will going to get the distance. He got the elevation but fails to get the distance. Very unfortunate. The morning it's not so easy to get the distance. Wind is not that much of huge in the ground, and that's the reason. And the batter a little bit disappointed that he fails to get the distance. And the wicket number 5 gone. It's 28 for 5 after completion of 5 overs, and the last 2 overs remaining in the innings of team Agrar. Stian is a new batter in, and walks towards the middle. Is the bowl batter number 7. The bowler brought into attack to bowl the 6th over, just in number 0-4. And this time appeal for stumped out. Wide call by umpire. Third umpire for wide decision. They wanted to check the wide. Stumped out. Even for yes. Let's wait and see, and it's a very close one here for the third umpire to watch, and because umpire is also almost in front of the camera, but still they're getting some zooming action, and the provision is there to zoom a bit whether the batter's back foot is safe or not. And but I want to tell you, on the line is always a danger. They need to have a little part of your body, whether it's a boot or anything, need to be little bit inside the line if you want it to be the safe. And wait and see umpire's decision when the bails are off, whether the batter is safe or not.
Definitely going to be a very crucial decision for the umpire to judge. Very, very interesting. Now looks like better might be trouble or not. Wait and see. It's going to be a third umpire decision. The line belongs to the third umpire. Need to be a little bit part inside the line, and that's what the danger. Out is a call from third umpire. They just wanted to. The ball is wide. Wide given by the umpire. Wide ball and stump out, and batter is absolutely on the line. It's not good enough for him to save from the stump out. Very good decision there from the third umpire as well, and Vishal, the new batter in. Planet Hair Trophy 2026 Season 1 under progress, which is proudly presented by Planet Air Travels. Inter-Paris cricket tournament in this most beautiful and historical Swaraj Maidan here in Moodubidire. This time going to be a one more wide, Spectra wide, with that extra score moves on to 30 on the board. Very important runs are coming here for the team Agrar so far. After they got a shackling start in the beginning, lost the wickets quickly. Played it across the line, down to mid-wicket region. Protection is there in the deep, so that ample time for the batter to complete the single. In comes a throw from the deep. And one more addition, the total addition of that single score, but moves on to 31 for the loss of 6 wicket in the over number 6 is in progress. Sanat to Stian. Round the wicket, Sanat balls to Stian. Stian just wanted to go for square cut, but doesn't get that much of timing good enough for him to rotate the strike. 32 for 6. Bright and sunny morning, and absolutely the fantastic weather condition in the morning itself. Again, doesn't get hold of that stroke properly. They wanted to come back for second, but asking for trouble. Only the single there, with the single score, but moves on to 33 for the loss of 6 wicket. Over number 6 in progress. Sanat again, round the wicket. Down the leg side, going to be wide. Lot of extras in this over. Highly indisciplined bowling performance. And this is going to be a third wide of this over from the bowler, Sanat. This time better line, almost close to the off stump. The ball is just missed the stump. And coming into the batter, this is what line the bowler have to concentrate. Getting the ball coming into the batter by pitching the ball just outside the line of off stump. One more better line, and good comeback here by Sanat after changing his angle, and it's definitely going to benefit him to get the line length proper. Round the wicket is in operation. Drives that one down to mid wicket region for a walkable single. They're looking for second, and fumble from the fielder, and grabbing this opportunity and converted that single into couple. And with that couple of runs scored, now moves on to 36 for loss of 6 wicket. After completion of 6, they're going exactly 6 runs per over. Last over remaining in their innings. Next match will be played between Ranipura versus Fajir. So that I request all the players of both the teams to kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. ರಾಣಿಪುರ ಹಾಗೂ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ 8 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಘಟಕರಿಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ರಾಣಿಪುರ ಮತ್ತು ಫಜೀರ್ ತಂಡದ
ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Runtection is a bowler brought into attack from the scouts and guide the building end, and he will go into bowl the last over of the innings of Agrar. To Vishal. Balled him, cleaned him up, right in the money, right on the target, in the occasion, just coming into the batter. Missing the line completely, you miss high hit, and wicket number 7 back in the pavilion. Lovely delivery, shaping into the batter. Misses the line complete, almost exposed his stump, tried to play inside out cricketing stroke. Misses the line completely. The 7th wicket back in the pavilion. Last 5 deliveries left in their innings. New batter in, walking towards the middle with the jersey number 07 for Agrar. Hansel, the new batter in. Mr. M, lovely take there from wicketkeeper behind the stump. White call by umpire. 37 for the loss of 7 wicket. Runtection. Shot on up. Again, wanted to go over the right, chance of run out, and very interesting to see that wicket keeper, instead of returns the ball to the hands of a bowler, that mid-off fielder takes the throw from wicket keeper. 38 for 7. Stein way back on strike. Runtection, right arm over the kitty balls. Lovely delivery, quicker and faster one from Runtection to unsettle the batsman. Not really given an opportunity for Stein to get into any kind of stroke there. Dot ball, very important dot ball of this last over. Once again, he's given him his plum in front of wicket. Absolutely, that ball is going to hit the middle and leg stump. Stein just missing the line completely there, and he's finding himself right in front of a middle and leg stump. And wicket number 8 gone. The team Agrar are 38 for 8. Frasley is a new batter in. Last couple of deliveries left in their innings, and wait and see how well these two batters are in the middle. The Frasley will go into face the 5th delivery. This is our main stage, and everyone is very busy in watching mobiles, but Gopi is different. Is watching not old movies, he's watching the match, relaxing in the morning, enjoying the morning condition here in Swaraj Maidan. The last delivery of their innings will go into commence. 39 for 8. Oh, lovely delivery, beautifully balled. That's it. The over number 7 which is comes to end. That means Agrar, they finished their 7 overs quota, and they scored 39 for 8, and they set a target of exactly 40 to win this match. 40 to win this match, and wait and see how well the team will going to get this total. Paneer have to get 40 to qualify for the next round of the prestigious Planetary Trophy 2026, and let's take a short break here, and after short break my friend Gopi will going to take over the microphone in Hindi language for the innings of Paneer. 40 is the target. Thank you.
ರಾಣಿಪುರ ಹಾಗೂ ಫಜೀರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ Ranipura as well as Fajir to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. धन्यवाद सतीश. तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त exactly 40 the target for Paneer set by Agrar and the innings now going to start. First ball पहली गेंद को ड्राइव करते एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंची और वहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर. पहला ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार रहा. यह गेंद बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, स्क्वायर ऑफ द विकेट और चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला. 2 गेंदें इस वक्त गेविन फेंक चुके हैं अपनी ओर की. तीसरी गेंद लेकर तैयार रहा, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची, थ्रो पहुंचा नॉन स्ट्राइकर रन पर, लेकिन स्ट्राइकर रन पर अगर थ्रो करते तो शायद वहां पर रनआउट का मौका हो सकता था, लेकिन फील्डर ने थ्रो किया इस वक्त नॉन स्ट्राइकर रन की और फलस्वरूप बल्लेबाज 1 रन सुरक्षित पूरा कर चुके हैं. वाइड का इशारा यहाँ पर हो चुका है, तो 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल एंड विद दैट कपल रन द रन्स अकाउंट बिगिन फॉर पानीर. 2 रन बिना किसी नुकसान के इस वक्त जोड़ चुका है और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई एक और वाइड का इशारा, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट एंड अ वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर. और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और ये गेंद इस बार गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. He swept it well and finds the gap as well just wide of the square leg fielder. और 4 रन इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करते हुए, बेहतरीन स्ट्रोक लगता हुआ अरुण के बल्ले से और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर. और जहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का पानीर का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर शुरुआत और पिछले गेंद पर स्लॉग स्वीप शॉट के जरिए इस वक्त गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ अरुण ने, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और अरुण न इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 8 ऑन द बोर्ड, फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस और गेविन अगली गेंद लेकर तैयार रहा. यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, मौका जरूर है लेकिन रनआउट का मौका, लेकिन दोनों मौकों में इस वक्त बल्लेबाज बच चुके हैं. और पहले कॉटन बॉल का मौका था, गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद को फील्ड करने के बाद विकेटों पर निशाना दागा स्क्वायर एंगल से, लेकिन यहाँ भी निशाना चूकता हुआ और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुका और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 9 रनों पर. अगली गेंद, यह गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त अंदर की ओर आती हुई गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन 1 रन उन्हें ज़रूर मिला और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 10 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि 5 गेंदें इस ओवर में फेंके गए हैं. गेविन के अंतिम बार इस ओवर में तैयार रहा. यह गेंद उछालना चाहा, हवे में ज़रूर रहा लेकिन विकेट कीपर के पहुंच से बाहर रहा. ओवर की समाप्ति, स्टेडी स्टार्ट फॉर पानीर चेसिंग द विकेट टारगेट ऑफ एग्जैक्टली 40 in 7 overs. They made a good start. In fact, it's 10 without loss after completion of first over. Exactly 30 runs required in remaining 6 overs with a required run rate of exactly 5 runs per over. और जहाँ तक सवाल है रेंटेक्सन और अरुण आरंभिक बल्लेबाज और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. गेंदबाज द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स एंड जस्विन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और दूसरा ओवर शुरू होता हुआ पानीर की पारी में एंजेलो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. एंजेलो ರಾಣಿಪುರ ಹಾಗೂ ಫಾಜಿರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ರಾಣಿಪುರ ಹಾಗೂ ಫಾಜಿರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದರೊಳಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈದಾನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಒಳಗಡೆ ಚೆಂಡು ಬಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. इस बीच पहली गेंद थी और गेंद को इस वक्त रन्स यहाँ पर मिले 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर. गेंदबाजी शुरू कर चुके एंजेलो और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ
ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद, यह गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड द लास्ट मोमेंट, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर, 12 ऑन द बोर्ड। इस बीच इंजलो अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिट, नॉट सक्सीडेड, मच स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द बॉलर, और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। इंजलो फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, काफी लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंचने में असफल, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ अरुण के बल्ले से, और ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त उन्होंने उछाल दिया था खूबसूरती के साथ, और चौका यहां पर प्राप्त करते हुए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर, 16 ऑन द बोर्ड। to lose any wicket in the over number second in progress. Good progressing here for Paneer in this situation. और दूसरा पावर प्ले ओवर उनका इस वक्त प्रगति पर, और गेंदबाज एंजेलो अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर, लेकिन सही गेंद इस वक्त घोषित, गेंद कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और इस बीच अगली गेंद लेकर इंजेलो इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद इस बार बाउंड, जस्ट गॉन फॉर अ लॉफ्ट, नॉट सक्सीडेड, मच स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द बॉलर, और यह विकेट यहां पर गिर चुका है। अरुण जो बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, इस गेंद को उछालना चाहते, एक और चौका लगाना चाहा, लेकिन इस बार गलत लाइन पर खेल गए, और गेंद उनके बल्ले और पैर को वंचित करते सीधे लेग स्टंप को बिखेर कर ले जाते हुए, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। अरुण डिपार्ट्स आफ्टर प्लेइंग अ गुड नॉक फॉर द साइड ऑफ 9 रन्स इंक्लूडिंग 2 बाउंड्रीज, एंड फर्स्ट विकेट लॉस्ट फॉर Paneer इन द टोटल ऑफ 16. It's 16 for 1. So जीवन द नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, गेंदबाज इंजलो की गेंद का, और इंजलो गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 18 रनों पर, 17 रनों पर, माफ कीजिए, 17 ऑन द बोर्ड। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, चांस एंड टेक, ही ड्रॉप दैट वन एट द लास्ट मोमेंट, द बॉलर हिमसेल्फ इस वक्त गेंद तक पहुंचे थे, लेकिन आखिरकार इस कैच को लपकने में असफल, और बल्लेबाज जीवदान के साथ साथ एक रन इस वक्त पूरा करते हुए, आसान सा मौका गंवाते हुए गेंदबाज, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर, जबकि 2 ओवर का खेल यहां पर संपूर्ण हो चुका है। 2 overs completed, 18 for 1. Paneer looking in a good situation in fact. Now just 22 to get for victory in remaining 5 overs. So that means in remaining 30 deliveries, and the asking run rate is now straight away coming down to exactly 4.40 runs per over. और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका, और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं, और गेंदबाज हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी शुरू करते हुए स्टियान पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, फील्डर मैदान पर छा चुके हैं, फील्डिंग का स्प्रेड आउट हो चुका है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद, जबकि डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी शुरू करते हुए स्टियान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सामना करने के लिए तैयार, इस वक्त जीवन पहली गेंद लेग स्पिन गेंदबाजी, गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, लेकिन मौका जरूर है फील्डर के लिए, जी हां, कैच को लपकने में सफल, गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके, और देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था, लॉन्ग ऑन फील्डर बिल्कुल गेंद पर नजरें गड़ाए रखते हुए इस कैच को बेहतर जजमेंट के साथ लपका, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। 1 more wicket fall on जीवन डिपार्ट्स, एंड इट्स 18 for 2. इस बार नए बल्लेबाज का स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर पर,
शॉर्ट स्क्वायर लेग पर कहना पड़ेगा 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर। तीसरा ओवर प्रगति पर, गेंद पास किए, गेंद इस बार कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 3 बेहतर गेंद इस ओवर में गेंदबाज सेबास्टियन फेंक चुके हैं लेग स्पिन के तौर पर, और अपने ओवर की चौथे गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट लेग स्पिन गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, इस वक्त डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सेबास्टियन अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूंकि वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर 21 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सेबास्टियन अगली गेंद लेकर तैयार, स्वीप करना चाहा, पहले ऊपर गेंद टकराई, स्टंप्स पर टकरा चुकी है, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। बल्लेबाज ने गेंद को मोड़ना चाहा था, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चीरती हुई सीधे लेग स्टंप पर जा टकराए, और इसी के साथ बल्लेबाज नेल्सन के पानी पर पर्दा गिर चुका है, और तीसरा विकेट इस वक्त गिर चुका है यहाँ पर पानीर का। नेल्सन आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए, और कुल मिलाकर 2.5 ओवर का खेल उनके पारी में पूर्ण हो चुका है। स्कोर इस वक्त स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ पर गेंद को स्वीप करने के प्रयास में चूके थे और स्टंप्सों पर गेंद टकरा चुकी है। नए बल्लेबाज नंबर 5 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, लेफ्टी बैट्समैन, और सेबास्टियन अब तक उनका बेहतर ओवर साबित हो चुका है। गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अविनाश नए बल्लेबाज जो कि सामना करने के लिए तैयार, और सेबास्टियन अगली गेंद लेकर तैयार, लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को मोड़ना चाहा चूके, और इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति हो चुकी है। 3 completed, 21 on the board for losing 3 wickets. Paneer now 19 more runs they have to score for victory in remaining 24 deliveries. That means in their stipulated 4 overs, and required run rate is now exactly 4.75 runs per over. और इससे पहले कि चौथा ओवर पर माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा सुनाने के एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। ರಾಣಿಪುರ ಹಾಗೂ ಫಾಜಿರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Thank you so much, Gopi, and the team Paneer are looking in driver's seat of winning this match unless and until the bowlers of Agrar to get some breakthrough and get some good overs. And this is not a good start for the over number 4. Starts with a wide, and with the Texas score moves on to 22 for the loss of 3 wickets. That means exactly 18 needed for the victory, and 18 needed in remaining 24 deliveries. For to get that target. This time wide outside the line of off stump and played it down to extra coverage and for an easy single, reaching for the delivery, and the batter are in the middle. Ren Texan has got his one more run for his account, and total score numbers on to 23 for 3. That brings Avinash into strike. Lovely delivery, just outside the line of off stump. The batter just tried to get the ball into the offside region, and just tried to push the ball on the offside region. Beaten by the turn and the flight. Wicketkeeper behind the stump. Slight a bit of fumble in the first attempt, but in the second attempt he just tried to make the stump out. But it's too late for him to get into that stumped out. Get into that attempt for the stump out. 23 for 3, 17 more runs required for the victory.
The match number 2 will be played between Ranipura versus Fajir. So request all the players to complete the signatures as soon as possible. Gently plays it down, extra coverage, and they're looking for the second. This is a good placement and good running. Excellent placement. Not really try to hit it too hard. Avinash just placed the ball very well. You know exactly this is a big ground. Once you get the ball into the gap, you can convert that single into two if they want to run well. And the key for the success that they complete the first run very quickly. 28 for 3. Reverse sweep comes into play. Lovely placement. Ball almost reaching towards the deep third backward region before the throw will going to come to the hands of. Oh my goodness! Opportunity of run out in the non-striker's end. And it's gone unnecessarily. Not required to take that much of risk because the run switch is coming very freely. There are plenty of deliveries remaining, and you're going for the third run, asking for trouble. Unfortunately, Avinash back in the pavilion. 27 on the board for the loss of 4 wickets. Another 13 more runs required for the victory. The new batter in is with the jersey number 78. Rantexon. The striker. And Austin, the new batter, came into bat. Catch it is a call, but no one there in the mid off inside the ring. There is a long off. Nice looking drive there from Rantexon. Picked up a single for that. With that single scored Namuzan to 28 for 4. 12 needed from 19 balls. That looks like the equation really supporting the chasing team. Austin, the new batter, will going to face. Balled him, cleaned him up. Lovely delivery, beautiful. Sharp incoming delivery. The batter absolutely let the gap between bat and pad. Huge gap. You can see that incoming delivery, angling around the wicket. They are nowhere near the pitch of the delivery. The front foot and the gap between the bat is a huge one. Just have a look at in broadcast camera, which is absolutely zooming that dismissal. Just have a look at a beautiful view of this fantastic off-cutter. The flighted one. When you are giving some flight in the delivery, always extra deviation the bowler can get. This is what needed for the bowlers of team Paneer if they wanted to back in the game. Correction for Agrar to back in the game. The Paneer are looking still in a commanding position. 12 to get from 3 overs. The asking run rate is not a huge one, just 4 runs per over. But you cannot underestimate cricket. Even sometime the fall of wickets can bring some kind of comeback here for the bat team, the fielding team. If you picked another 1 or 2 quick wickets here, the pressure for the chasing team, Paneer. Nicely lofted that one down to deep long on for an easy single. Having Rantexon in other end, a big came as an opener for the side. Hanging there in the middle. Try to get some runs on the board. Coming very close to the target. 11 needed for the victory. Leg by call by umpire. Nothing has happened here. Ball is deflected from the leg. The 10 needed for victory from 16 balls. Lovely leg spin delivery. Lovely leg spin delivery here from the bowler Stian. You know exactly that this is a 1 over. They have to bowl very well if they wanted to take this match into the last over. And this is not really a good thing to see. After that dot ball, he bowled a wide. That means all the efforts are gone in vain. What he did in the previous delivery. 9 needed from 15. And once again going to be a wide. One more wide. Tried to bring the ball around the legs. But ball is absolutely going outside the line of left arms too much.
And the fielding team wanted to take the review for the decision which is given by the umpire wide Swaraj. And umpire Suresh Moodubidire will going to have a look whether this is good enough to call the wide or not. This is not a one. This is the previous one already given wide. The next delivery. And this one we can see that ball pitched outside and black stamp, not really getting that much of turn in the ball. But still umpire will want to see that whether the ball is good enough to call it the wide or not. The field umpire decision is a wide. What could be the decision here from the third umpire? Let's wait and see. Umpire will go. It's a wide confirmed by the third umpire as well, and that means they lost the review. The fielding team. 8 needed from 15. Stian. Bowling right arm over the wicket. This time wide call by umpire once again. Maybe the ball is just slipped out of the hands of bowler. Gone far away outside the line of leg stump and wide call by umpire. 7 needed for the victory. This is a better line. This is a better line. Almost close to the off stump. The ball is just missed up. Stumped by Whisker. Just a slight bit of the movement and turn here for the bowler. Once again, try to go for the drive. Good comeback here by the bowler. Back to back 2 dot balls. Texan came as opener for the side. This time lofted straight down the ground, and he will going to get the distance or not, whether it's a bounce into the fence or it is a 6. That is a 6. The scores are level. Texan shows all his frustration in that stroke. After he played a back-to-back 2 dot delivery, he just lofted it one over the head of the bowler, as straight as an arrow. Down to deep long on, just clearing that straight long on boundary. Just 1 run required for the victory. Scores are levelled. So get ready. The next match, Ranipura versus Fajir. So captain of Ranipura won the toss. They elected to ball first. They have to enter the ground very quickly. And immediately after this match, just 1 run required for the victory. Still there is a lot of discussion is going on here. The fielding team. The scores are level, and this is really need to appreciate the level of confidence of Agrar. They still got a hope of they can make a tie the match. I think for that they have to pick all 5 wickets, remaining 5 wickets. Jason brought into attack. All we can see it's test match fielding scenario here in Swaraj Maidan. All fielders inside the ring. Try to save the single. Still the fielding set is going on here. 1 run required. The first one is a dot delivery. Needed another 11 dot balls. 1 needed from 11. He finished the match in a style with the 1 bounce into the fence. No, it's a 6. The comprehensive victory for the team Paneer defeated team Agrar by 5 wickets and 10 deliveries to spare. Congratulations is coming here from the opposition team as well. It's very important whenever after the match congratulating opposition, thanking umpires. The field umpires always the part of cricket. Winning and losing is a part of cricket, but congratulating your opposition for their success is also one of a unique part of cricket that was really required in the end of the match. Every day it is that. Congratulations on match which is ended, and man of the match which is goes to Austin for his all-round performance. So that I request Austin to please come to the presentation dais and receive your man of the match from our chief guest. The first match, man of the match, which goes to Austin of Team Paneer. So before the next match will go into comments, it's time to change in voice as well as language. Once again, I would like to invite Mr.
request Austin, please come to the stage and receive the Man of the Match award from Vikas, and I request Mr. Vikas to please distribute the Man of the Match award for Austin for his best performance in this match. Thank you. So that's it, and match number 2. Thank you Satish. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त मैच नंबर 2 का, रानीपुरा का मुकाबला इस वक्त फजीर के साथ होता हुआ, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त टॉस रानीपुरा ने जीता है और पहले फील्डिंग का करने का निर्णय लिया है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त दोनों आरंभिक बल्लेबाज फजीर की ओर से इस वक्त क्रीज पर मौजूद प्रज्वल और डेनियल और सनिल इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए। फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच इज नॉट कमिंग अप। पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ, और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो प्रज्वल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। द फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच इज नॉट कमिंग अप, और साथ ही ऑफ स्टंप पर लेग कटर ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के। और जहाँ तक का सवाल है बेहतर गेंद इस वक्त अगली गेंद का, तो लेग कटर गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में असफल रहे और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार रहा। यह गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहा, बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद टकराती हुई, और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदलते हुए, और 2 रन यहाँ पर बन चुके। 2 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। सनिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार सामना करेंगे डेनियल। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलते हुए, सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 करके दायरे के बाहर तैनात, और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई पैरों पर गेंद टकराई। 1 रन का इजाफा हो चुका है, और इस बीच 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर। 3 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस, और गेंदबाज सनिल अगली गेंद लेकर तैयार। This time turns it away, finds the gap as well, and it's gone over the fence for a boundary. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से, और डीप मिड विकेट पर जो कि फीडर मौजूद थे, लेकिन थोड़ा सा सीधे गेंद को इस वक्त उछाला था, थोड़ा सा स्क्वायर, और काफी लंबा दौड़ इस वक्त लगाई जरूर फील्डर ने, लेकिन गेंद तक पहुंचने में सफल, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। स्ट्रोक के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 7 रनों पर। 7 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, और कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद घोषित था, रन बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 7 रनों पर। और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सनिल दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, मिड विकेट की दिशा में खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया इस वक्त, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। Working over the toes onto a deep in wicket for a couple run by the batsman, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर। 9 on the board. First over completed. CD start for Fajir after being losing the toss and put it to bat by Ranipura in the match number 2 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Planet Air Trophy 2026 season 1, which is proudly presented by Planet Air Travels. और तो दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, और एरिक इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए फील्डिंग में जब ओवर चलते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर शुरू होता हुआ। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त हरिक्सन का, तो इस वक्त तो गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज डेनियल के लिए। पहली गेंद लेकर तैयार, इस बार चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ। कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, काफी लंबा दौड़ फील्डर लगाते हुए और गेंद को जब तक रोकने में सफल, डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर
तब तक बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को लॉफ्ट किया था इस वक्त डीप कवर पॉइंट पर 2 रनों के लिए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 11 रन, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का शुरू हो चुका है। और गेंदबाज एरिक्सन एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट अगेन, he just lofted at one and finds the gap as well. This time he finds the gap as well. No, in fact it cuts it off just inside the fence. 3 खिलाड़ियों ने उस गेंद का पीछा किया और उनमें से एक खिलाड़ी गेंद को रोक कर रहा, हालांकि खुद बाहर चले गए लेकिन गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने में सफल। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 3 रन प्राप्त करने का। 2 बेहतरीन स्ट्रोक्स पिछले 2 गेंदों पर डेनियल बल्लेबाज खेल चुके हैं और स्कोर बढ़कर इन 3 रनों के साथ पहुंच चुका है 14 रनों पर। 14 ऑन द बोर्ड। अंपायर इस वक्त वहां पर परिशीलन करते हुए कि क्या फील्डर ने गेंद को सही तरीके से सीमा रेखा के अंदर ढकेला था या नहीं। तो बातचीत इस वक्त जारी है। शायद अपने पैर में कुछ हद तक दर्द महसूस करते हुए डीप कवर पॉइंट के फील्डर, शायद मांसपेशियों की खिंचावट, हैमस्ट्रिंग इंजरी जिसे कहते हैं, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। रोशन जो कि चोटिल होकर, इंजर्ड होकर इस वक्त मैदान के बाहर जाते हुए, और सब्स्टिट्यूट फील्डर जो कि इस वक्त मैदान पर जा चुके हैं उनके बदले में। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए एरिक्सन पहले 2 गेंदों में 5 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं, तीसरी बार इस ओवर में। और गेंदबाज एरिक्सन प्रज्वल के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी दिस टाइम, मच स्ट्रेटर लाइन, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स नहीं मिला। और एरिक्सन एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार प्रज्वल के लिए। गेंदबाजी करते हुए इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर। 15 without loss in the over number 2 in progress. Good progressing here now for Fajir और गेंदबाज एरिक्सन अपने और की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद बेहतर परफेक्ट ऑफ कटर, गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज एरिक्सन और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, कोई फील्डर वहां पर नहीं, लॉन्ग ऑफ से फील्डर दौड़ कर रहा है इस वक्त। गेंद को जब तक वो फील्ड करे, सबसे पहले पहुंचे डीप मिड विकेट के फील्डर और गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोक कर फील्ड करते हुए थ्रो करे। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, बेहतर स्ट्रोक था इस गेंद पर बल्लेबाज डेनियल द्वारा, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर। 17 without loss, 2 overs completed. Good start for Fajir against Ranipura in the match number 2 of the Day 2 of this prestigious cricket tournament, Planet Eye Trophy 2026 Season 1. Just talking about the next match, the match number 3 is now coming up live exclusively right in front of you right after this match between Saint Sebastian versus Bundel. One more good match is now coming on, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage for the signature procedure. All the players of Saint Sebastian and Bundel, please report to the stage for the sign procedure. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त लेस्टन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, और गेंदबाज इस वक्त तैयार सामना करते हुए इस वक्त प्रज्वल, जो कि 8 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 1 चौके की मदद से। प्रज्वल इज नाउ बैटिंग ऑन 8 इंक्लूडिंग 1 बाउंड्री, मीन टाइम डेनियल इज बैटिंग ऑन 7। इस बीच लेग स्टंप पर आते हुए गेंद, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 18 for none एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर, और लेस्टन
फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंद बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद जाती हुई लंग आउट की दिशा में, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोककर जब तक थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरत स्ट्रोक था इस वक्त, खाली क्षेत्र चुनते हुए लंग ऑन और मिड विकेट के बीच से गेंद को निकाला खूबसूरती के साथ 2 रनों के लिए बल्लेबाज प्रज्वल ने, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर, 20 ऑन द बोर्ड। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजी है, गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट मिसिंग और साथ ही ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट, परफेक्ट ऑफ कटर फ्रॉम द बॉलर, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। लेस्टन अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई इस वक्त, जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका, it's off the bat in fact, and single run added to the total. That single run, the scoreboard moving up to 21 on the board for losing no wicket in the over number 3 in progress, और Leston इस बार उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, गली पर गेंद पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इस बीच एक रन दोनों बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। रन से आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए, और एक बेहतर साझेदारी, आरंभिक साझेदारी इस वक्त जमते हुए फजीर के लिए, और इस बीच लेस्टन बाएं हाथ ऊपर था विकेट, लेग स्पिन गेंदबाजी बाउल्ड आउट, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। पेस का चतुर परिवर्तन किया था इस वक्त, आखिरकार गेंद कुछ हद तक धीमी गति से फेंकी थी और इस गेंद को समझ नहीं पाया, और गेंद उनके पैरों के बीच से होती हुई सीधे टकराई इस वक्त मिड लेग स्टंप पर, बेल्स डिस्टर्ब होते हुए, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाह चुके, और विकेट इस वक्त तक होते हुए बल्लेबाज प्रज्वल पहला विकेट गिर चुका है। सो 22 runs, द ओपनिंग पार्टनरशिप हैज बीन ब्रोकन इन द फेस ऑफ प्रज्वल, bowled by Leston in a good delivery, and they lose their first wicket. It's 22 for 1. फ्लॉयड नए बल्लेबाज, और लेस्टन इस वक्त तैयार इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करने के लिए, बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार नए बल्लेबाज फ्लॉयड है, जो कि सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, ऑन साइड पर गेंद गई, ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर पर एक रन का इजाफा हो चुका है। 1 run added in the face of leg by, with that leg by run the scoreboard moving up to 23 for the loss of 1 wicket after completion of 3 overs. Still 4 overs left in overall calculation in their innings. And just talking about the next match, once again I would like to call upon the players of St. Sebastian as well as Bundel to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart for the next match. The bowler starts afresh proceedings. जोस्विन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और चौथा ओवर शुरू होता हुआ फजीर की पारी में। इंटरपेरिश 11th अंडरआर्म क्रिकेट टूर्नामेंट प्लैनेट एट ट्रॉफी 2026 सीजन 1 की शानदार प्रकृति यहाँ पर होते हुए, और गेंदबाज जोस्विन चिप किया गेंद को इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन फील्डर मौजूद डीप कवर पॉइंट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। इन फैक्ट गेंदबाज जोस्विन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ऑफ स्टंप से बाहर वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 started just short while ago in their innings. This time chipped away, just clearing the infield, और 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा, जस्ट सिंगल ही गॉट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। स्टंप्स एक्सपोज करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त चिप कर दिया था, और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल। 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। जोस्विन अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए क्विक पिच ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स, लेकिन इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है।
बेहतर तरीके से विकेट इस वक्त चटकाए थे विकेट कीपर ने, और देखना है कि जब विकेट उखाड़े गए थे विकेट कीपर द्वारा तब बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे या नहीं। तो इस वक्त निर्धार सौंपा गया है तीसरे अंपायर के लिए। नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर, और देखते हैं तीसरे अंपायर इसका परिशीलन न करने के बाद क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। तो इस वक्त मॉनिटर पर आउट इस वक्त दिखाया गया है और बल्लेबाज को इस वक्त जाना होगा पेविलियन की ओर, और एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। सो द विकेट फॉलन ब्रिलियंटली स्टम्प्ड बाय विकेट कीपर एट द लास्ट मोमेंट। तो देखिए रिप्ले पर किस तरीके से इस वक्त दिखाया गया था। द बैट्समैन गॉट जस्ट शॉट आउट ऑफ हिज क्रीज, ही हैज टू गो एंड वन मोर विकेट फॉलन। सेकंड विकेट गॉन, फ्लॉयड डिपार्ट्स। नाउ इट्स 26 for 2. So the new batsman is now comes out to the middle. विल्सन नए बल्लेबाज और गेंदबाज जॉसविन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर था विकेट तैयार। अगेन ड्राइव किया, oh lost, I think is gone in fact, just dragged out of the stumps at the last moment, absolutely much straighter line from the bowler and he just kept rid of the batsman। और रिप्ले पर इस वक्त दिखाया जा रहा है, देखिए किस तरीके से ये विकेट यहाँ पर गिरा था। स्ट्रेटर लाइन गेंद को खेलना चाहा, चूंकि he just wanted to play that one the wrong line and just paid the penalty for that. One more wicket fallen, Wilson departs. It's 26 for 3. It's out for a golden duck in fact, Wilson. 2 गेंदें इस ओवर में बाकी, और नंबर 5 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए एरोन। सो द न्यू बैट्समैन, और ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 28 रनों पर, 27 रनों पर, 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और जॉसविन ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। लॉन्ग ऑफ पर गेंद को उछाला था वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर, जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की अंतिम गेंद लेकर जॉसविन इस वक्त तैयार। लेफ्टी बैट्समैन एरोन इज नाउ गोइंग टू फेस जॉसविन लास्ट टाइम इन दिस ओवर। ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जस्ट फॉर अ सिंगल एंड सिंगल टू एंड द ओवर। सो 4 overs completed after completion of 4 overs. It's 30 for the loss of 3 wicket. So good comeback made by the bowlers of Ranipura in the last 2 overs. After being conceding 17 in the first 2, they come back very well with conceding just 13 in the next 2. So 30 for the loss of 3 wickets, 4 overs complete. The equal battle is now continuing here. और देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में फजीर के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा सोने के एक बार फिर से अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।
Thank you so much, Gopi. And 30 for the loss of 3 wicket team Fajir against the team Ranipura. Winning the toss, selected to field first Ranipura. And so far, the equal battle is on between these two. And the Fajir team, they try to get some good score in the remaining 3 overs. Even they lost 3 wickets. But still, they got opportunity to get some runs in the remaining 17 deliveries in their innings. Left arm over the wicket. This time, a lovely delivery. Ball is almost coming around the legs of the batter, well within the reach of the batter. The right call from umpire, and that was a playable delivery missed out by the batter Daniel. This time lofted into the deep extra cover region, and that will going to be a chance for the fielder to field the ball. Off stop by the fielder, and enough time for the batter to come back for the 3 valuable runs. Total misjudgment by the fielder in the deep extra cover. With the direction of the wind, ball is just deviating, and he couldn't manage to judge that deviation. Sometime he need to read the condition of the ground, and there's some grounds which you can see that winds are flowing in some direction. At that time, the fielders were feeding in the deep. Have to be a little bit concentrate over that deviation of the ball. And that's what a misjudgment by the fielder again. A catch, it is a call there from the bowler. But ball which is absolutely missing the hands of wicket keeper. It's 31 for 3. Leston, left arm over the wicket balls. This time again, the ball just missing the leg stump. Beautifully bowled. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಬೊಂದೆಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಾನ್ವೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೈಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್. Leg by call by umpire. One more addition, and with the addition of that single score now moves on to 35 on the board. 35 for the loss of 3 wickets. So over number 5, which is comes to an end after completion of 5 overs. It's a 35, going exactly 7 runs per over. The team Fajir against Ranipur. Over number 6 will going to start from the commentary box, and the bowler brought in to attack the ball. That's over number 6, Sunil. The one more big name as far as Underarm cricket is concerned, one who represent for team Friends Kuttar, Sunil. Round the wicket right arm. Coming into the batter, played it very nicely into the mid wicket region. Will they come back for the second? Yes, they're coming back for the second, but asking for trouble. But the batter is more aggressive as far as the running width is concerned, and is not happy with that effort from the fielder, saying that it need to be a little bit quick enough to stop the couple of runs, and with that couple of runs, Kobanda moves on to 37 for 3. Lovely delivery, and the ball hits the leg stump. Quicker and faster one there from Sunil. The batter just tried to play across the line, almost exposing the stump. Just have a look at the replay, where the stumps is, where he was standing. And Sunil know exactly where to pitch the ball. He know exactly how to concentrate on the leg stump of the batter. Expose the stumps, Aaron, and he just pays the penalty for that. You can't give this opportunity for the bowler like Sunil, the experienced bowler. Just have a look at this, concentrate over this leg stump. You know exactly, he's just watching the stump and giving the opportunity, Aaron, for the bowler Sunil to get the ball into the leg stump, and the furniture disturbed. 37 for 4.
Sunil just wanted to change his angle because right hand batter is came into bat. Joel. One more lovely delivery which is came into the batter. This is turning out a good over so far there from Sunil, giving his all his experience in this over. Joel to face Sunil. Oh, slower one, change of pace. Not really able to read that slowness of the delivery. Joel too early into the sweep shot, but ball which is did the trick. Just have a look at it in replay. Just a little bit of release and getting some extra deviation as well and hitting the leg stump of the batter. Joel departs and more trouble for the team Fajir. 37 on the board for the loss of 5 wickets back in the pavilion. New batter in is jersey number 22. Sunil. This good contest now. Sunil to Sunil. So Sunil to Sunil. Right above the wicket balls to Sunil. Sunil this time beaten. Wicket keeper behind the stump is also beaten. Frustration for the bowler. By call by umpire. One more addition to total addition of that single scoreboard moves on to 38 for 5. And the over number 6 is in progress. The last delivery of this over will going to commence. Again, Daniel is playing a waiting game here for his team and came as opener for the side. Will going to retain the strike for the next over. 39 for the loss of 5 wicket after completion of over number 6. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಪೆರಮನ್ನೂರು ಹಾಗೆ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಬೋಂದೇಲ್. ಈ ದಿವಸದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಸೀಸನ್ 1. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 2ನೇ ದಿವಸದ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. Sam brought into attack. It's not Sam Karan, but he is a Sam from Ranipura. It's Sam Pinto and far outside the line of off stump and white call by umpire. With that single scoreboard moves on to 40 on the board. 40. Again, one more extra. The consecutive wide deliveries here will going to give some kind of bonus run here for the team of Fajir. Will going to enjoy each and every run in this last over. 41 for 5. Sam is struggling. Sam Pinto. Pinto wearing the jersey number 18. And this is not a respect for the jersey number 18. Again played it nicely into the deep long on. Coming back for the second. Good running between the wicket. Positive cricket. Appeal for run out. Umpire says not out. Batter is safe and very valuable couple of runs. 44. All the runs are going to be very important here in the morning. The time is exactly 10 past 45. It's a very bright sunny morning. Very, very different weather condition compared to the yesterday. Looking for the improvising sweep shot. Ball misses the bat of Daniel. Sunil correction.
Sorry, Daniel, the batter. Here comes next delivery. Played it nicely into that point. Short advantage region. Good piece of fielding there by Sunil. But now umpire Suresh Moodubidire going for the third umpire. But I think now the first thing they have to see that whether the run out which is taken place in the strikers end or not. So striker end is out. So the no question of asking for the another run out, because here is a run out taken place. Yes. There is no score for the previous delivery because the run out which is taken place in the strikers end. Lovely throw came from Sunil there. What a fantastic return came from him. Fantastically done. And that's showing his all his experience in this particular dismissal. 3 balls remaining. Macklin, the new batter in. Sam to continue. Lovely delivery, just played it down to mid off region. Long off fielder, I have to run to his friend to stop that ball, field that ball. Ample time for the batter to complete the single. 44 for the loss of 45, correction, 45 for the loss of 6 wickets back in the pavilions. This time drives that one down to cover point region. Wanted to come back for second. They're dealing with the last final deliveries, so they have to look for everything to get runs as much as possible. And team Fajir are getting some runs in this last over. 47, they're almost very close to the 50. Psychological advantage once they get past that 50. So last delivery of their innings is coming up. Drives that one, but just a single. That means 48. The Fajir will going to finish their 7 overs quota, and they set a target of 49 to win the match for the team Ranipura at the required run rate of exactly 7 runs per over. And wait and see how Ranipura will going to get this total, and wait and see how team Fajir will going to defend this total. It's going to be a more interesting game of cricket is coming up. Before that, once again I request Saint Sebastian ಮತ್ತು Bundel ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಗೋಪಿ ಇವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರ ಪದವಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त लक्ष्य है 49 रनों का रानीपुरा के लिए फजीर ने रखा है। उनकी पारी की शुरुआत इस वक्त होती हुई और दोनों सलामी बल्लेबाज रोशन पिंटो और सचित इस वक्त क्रीज पर मौजूद और गेंदबाजी शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से फ्रॉम द फार एंड सनवील गेंदबाजी शुरू करते हुए और पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ 49 they have scored in the stipulated 7 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them and the first ball of their innings is now coming up और सनवील गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए रोशन पिंटो जो कि सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। फर्स्ट बॉल लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्राइक रन पर थ्रो करते तो शायद वहाँ पर मौका हो सकता था, लेकिन फील्डर ने थ्रो किया इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर और बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं। तो एक रन का इजाफा हो चुका और एक रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। एक रन न बिना किसी नुकसान के और सनवील अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार इस बार सचित के लिए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट लेग स्टंप से बाहर पुल किया इस वक्त मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट प्ले दैट वन विद द विंड, हवा के रुख के साथ इस गेंद को उछाला था और स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। डीप मिड विकेट फील्डर मौजूद थे लेकिन उनके सिर के ऊपर से गेंद उनको बीट करती हुई सीधे नेट्स पर टकराती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा के और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार इनसाइड आउट क्रिकेट खेला खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई काफी लंबा दौड़ फीडर लगाते हुए इस वक्त एक रन दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं बल्लेबाज और 2 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त सचित के बल्ले से लगता हुआ स्टंप एक्सपोज करते हुए इनसाइड आउट क्रिकेट इस वक्त उन्होंने खेला था एक्स्ट्रा कवर डीप एक्स्ट्रा कवर पर और 2 रन बटोरने में सफल। एक बार फिर से गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया मिड ऑफ पर, गेंद 1 रन मिलेगा। कुछ देर के लिए गेंद हवे में जरूर थी लेकिन आखिरकार खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाती हुई और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 10 रनों पर बिना किसी नुकसान के। स्टैंड विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। सनवील अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट लेग स्टंप से बाहर और जहाँ तक सवाल है इस वक्त रनों का, रन्स मिलेंगे ज़रूर लेकिन वाइड के रूप में और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 11 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। सनवील ये गेंद स्वीप कर दिया इस वक्त, गेंद को खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग फील्डर के बाईं ओर से गेंद जाती हुई काफी लंबा दौड़ लगाते हो, इस बार गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। गेंद तक पहुंच गए थे अंतिम क्षण में सीमा रेखा के पास लेकिन जैसे ही वो गेंद को फील्ड करने के लिए झुके गेंद उनके हाथों को वंचित करते हुए निकल गए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर जो फ्लेक्स है वहाँ पर गेंद टकराती हुई और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 15 ऑन द बोर्ड। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए पहला पावर प्ले का ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा। 16 on the board. The flowness is now started. Flowness of runs is now started for Ranipura in the very first over of their innings. और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, लंगोन से बाहर गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। रोशन पिंटो के बल्ले से यह छक्का लग चुका है, छक्का नंबर 2। पहला छक्का सचित ने लगाया था, अब रोशन पिंटो की पारी और इस छक्के के साथ ऐसा कहना पड़ेगा ट्रमेंडस स्टार्ट इस वक्त कर चुके हैं बल्लेबाज रानीपुरा के। 22 रन स्कोर्ड फ्रॉम द फर्स्ट ओवर and this is an absolutely magnificent start given by the openers of Ranipura for their team. 22 without loss after first over. So straight away the required run rate is now coming down to exactly 4.5 runs per over. 27 to get now in remaining 30-60 levels. That means in remaining 6 overs. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य का, तो इस वक्त लक्ष्य काफ़ी हद तक आसान हो चुका है। पहले ओवर में जिसमें 22 रन बने इसकी बदौलत दूसरा पावर प्ले ओवर राउंड की पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ और गेंदबाज प्रज्वल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सामना करने के लिए तैयार। सचित फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, अभी भी 2 फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, लंगोन और डीप मिड विकेट इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास तैनात और गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए
फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, पहली गेंद ओवर की लेकर तैयार। इस बार गेंद को ड्राइव करते हैं मिडऑन की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े मिसफील्ड इस बीच, और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज एक रन न प्राप्त करने में सफल, और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर, 23 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड जस्ट स्टार्टेड शॉट वाले गो। और प्रज्वल अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद शॉट फाइनल की दिशा में गेंद पहुंची इस बीच। जहां तक का सवाल है इस वक्त, अंपायर इस वक्त कुछ पूछताछ करते हुए कि गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकली थी या नहीं, तो वहां पर वो पूछते हुए, और अब ऐसा कहना पड़ेगा उनके निर्धार का इस वक्त इंतज़ार है। अब यहाँ पर सही गेंद घोषित कर चुके हैं, शायद गेंदबाजी करने के बाद अंपायर के आड़े आ गए थे, तो अंपायर इस वक्त स्ट्राइक रेंज के बल्लेबाज कुछ कहते हुए अंपायर से कि ये वाइड है, लेकिन अंपायर इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए उनसे, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। नाउ तो गेंदबाज ने इस वक्त कहा कि यह गेंद वाइड है, तो बेहतर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पर दिखाते हुए गेंदबाज प्रज्वल जो खुद इस वक्त उन्होंने कहा कि गेंद वाइड है, और इस बीच ये गेंद ड्राइव करना चाहा, बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, और इस गेंद के साथ डॉट गेंद इस वक्त हो चुकी है, बेहतर गेंद इस वक्त गेंदबाज प्रज्वल की। और जहां तक रनों का सवाल है तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। दाहिने हाथों पर द विकेट, प्रज्वल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, मिडऑन की दिशा में गेंद पहुंची, अपने पैर पर कुछ हद तक दर्द महसूस करते हुए बल्लेबाज है, लेकिन एक रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल, और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 25 विदाउट लॉस, एब्सोल्युटली टेरिफिक प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर रानीपुरा। प्रज्वल अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया, इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा की, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। Fantastic stroke came from the bat of Sachit. Just made an improvisation and he just played that one with a twisted bat and finds the gap as well at last. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर, 29 the score. Now exactly 20 runs more required in 5+ overs and the things getting much easier now for Ranipura. और इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, और इस वक्त प्रज्वल चौका प्रदान करने के बाद देखना है कि अगली गेंद पर किस तरह वो कम बैक करते हैं। इस बीच ये गेंद स्वीप कर दिया, इस वक्त गेंद को शॉट मिड विकेट की दिशा में, रनआउट का खतरा, लेकिन निशाना इस वक्त चूक चुका है, और एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं, 30 रन बन चुके हैं इस वक्त बिना किसी नुकसान के, 30 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर जस्ट सेकंड इन प्रोग्रेस इन द इनिंग, स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। और प्रज्वल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। इस बीच यह गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, छोड़ते तो शायद वाइड हो सकता था, लेकिन इस वक्त रिवर्स शॉट खेलने में सफल, एक रन बल्लेबाज और टीम के खाते में स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर, 31 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs. Fantastic start given by the openers of Ranipura now. Roshan Pinto and Sachit playing very confidently. 9 runs came from the last over, and now after 2 overs, still I must say, they are looking in a commanding situation. In fact, it's 31 for none with just 18 to get for victory. 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए, और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। Required run rate straight away coming down to exactly 3.60 runs per hour, 18 to get from 30 deliveries. That means in remaining 5 overs. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, जोयल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए। फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम जोयल टू द राइट हैंडेड बैट्समैन रोशन पिंटो, जो कि सामना करते हुए जोयल की गेंदों का, और जोयल पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, फाइन लेग की दिशा में गेंद निकल चुकी है, लेकिन वहां पर फील्डर ने गेंद को रोकने में सफल, शॉर्ट फाइन लेग पर वाइड का इशारा, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड, couple of runs added to the total, scoreboard is now moving up to 33 without loss in the over number 3 just
हैव टू स्टार्ट। और अगली गेंद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई इस बीच जब तक फील्डर दौड़कर आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेल दिया था सचित ने इम्प्रोवाइजेशन करते हुए और 2 रन यहां पर बटोरने में सफल। 35 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 3 स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले गो। जोयल सचित के लिए अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद उछाला इस वक्त मिड विकेट पर लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। सचित इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन जस्ट ट्राइंग टू गो फॉर अ बिग वन दिस टाइम बट नॉट सक्सीडेड। और लॉन्ग ऑन माफ कीजिए डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकते हैं। फैंटास्टिक इनिंग्स ऑफ 15 रन्स केम टू एन एंड फ्रॉम सचित इंक्लूडिंग 1 6 and 4 he scored 15 runs and the first wicket lost 35 runs. Opening partnership has been broken in the face of Sachit and they lose their first wicket. It's 35 for 1. Just 14 to get for victory. Or new batsman Sunil is now comes out to the middle as a number 3 batsman. और जोयल इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। सनील के लिए जोयल अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद कट किया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई क्लीन पिकअप नॉट मोर देन अ सिंगल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 36 on the board in the over number 3 in progress. So this is an absolutely fantastic progressing here for Ranipura. They are cruising towards to their victory in this situation. Just 13 to get for victory. और गेंदबाज इस बीच जोयल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार चूके स्टंप आउट का मौका लेकिन इस वक्त स्टंप पर गेंद लग चुकी है। बेहतर स्टंपिंग विकेट कीपर कर चुके हैं और इसी के साथ रोशन पिंटो की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। इज आउट फॉर 13 इंक्लूडिंग 1 6 and 4 he scored and after being scoring a 13 valuable runs he's backing to pavilion now and the second wicket loss for Ranipura. It's 36 for 2 and Roshan Pinto departs. So still 2 balls left in this over और विशाल इस वक्त गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार। जोयल इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद ड्राइव किया गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद निकली इस वक्त मिड ऑफ पर और लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सिर्फ 12 रन मात्र विजय के लिए चाहिए और जोयल इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज सनील के लिए अगली गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ। जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एंड ड्रिवन दैट वन स्लाइड बिट ऑफ फंबल देयर एंड द बैट्समैन कम बैक फॉर द सेकंड रन बिकॉज ऑफ दैट। और अंतिम क्षण में गेंद इस वक्त छूट गई लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों से और इस का फायदा उठाकर बल्लेबाज 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। दे आर लुकिंग इन अ कमांडिंग सिचुएशन। Ranipura they are cruising towards to their victory. Just 10 more runs to get in remaining 4 deliveries and the required rate is now straight away coming down to exactly 2.5 runs per over. 24 balls remaining, 10 runs they have to score for victory. प्रज्वल स्टार्टिंग की सेकेंड ओवर। पहले ओवर में 9 रन प्रज्वल ने प्रदान किए थे और अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। और पहली गेंद लेकर तैयार प्रज्वल दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद देखिए गेंद को इस वक्त डॉट करने में सफल। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकली और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। जस्ट 10 more runs now they have to score for victory. और गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बार ऑफ द टोज मिड विकेट पर मौका निशाना चूक चुका है इस वक्त।
That was absolutely a chance at the striker end, लेकिन गेंद स्टंप से कुछ दूरी पर निकलती हुई और विकेट कीपर भी गेंद को गैदर नहीं कर पाए और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बचते हुए 40 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट। और इस बीच सनील बैक ऑन स्ट्राइक, प्रज्वल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज सनील के लिए अगली गेंद। स्वीप करना चाहा, गेंद इस वक्त विकेट कीपर के हाथों से चूकी, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज प्रज्वल फेंक चुके हैं और जहां तक रनों का सवाल है तो रन से यहाँ पर नहीं मिला। और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, स्वीप करना चाहा, इस वक्त गेंद पहुंच चुके हैं शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। He's got a bat onto that at the last moment. With that single run, the scoreboard moving up to 41 on the board. In the open number 4 in progress. और प्रज्वल अगली गेंद लेकर तैयार विशाल के लिए, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को खेलना चाहा, चूंकि ऑफ स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सही गेंद को घोषित अंपायर द्वारा सिर्फ 2 मात्र रन इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं। पहले 5 गेंदों में प्रज्वल बेहतर ओवर साबित होता हुआ और अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार प्रज्वल गेंदबाजी करते हुए विशाल के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट। इस बार चिप किया, गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर थोड़े से पीछे तैनात था, 1 रन मिला, दूसरा रन नहीं लेना चाहते हैं। 3 runs came from the first over. 3 runs came from this over. In fact, the first good over came to an end in the innings of Fajir, which cost 3 runs from Prajwal. And after 4 overs, still Ranipura looking in a commanding situation. It's 42 for 2. जोयल अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए और सामना करते हुए इस वक्त विशाल। Just 7 more runs now they have to score for victory. First ball comes. पहली गेंद लेकर जोयल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर के दिशा में गेंद को निकालने में सफल, लेकिन फील्डर मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 43 for the loss of both openers. In the over number 5th started just short while ago in their innings. जोयल अगली गेंद लेकर तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर, और अगली गेंद लेकर जोयल इस वक्त तैयार सनील के लिए, यह गेंद खेला इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन फील्डर मौजूद, जस्ट अ सिंगल ही गॉट। 44 on the board for losing 2 wicket in the over number 5 in progress. 2 deliveries bowled in this over और जोयल इस बीच विशाल के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट, इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन मिला। 46, 3 to get for victory. 45 in fact, 4 to get for victory. और इस बीच अगली गेंद लेकर जोयल पहले 3 गेंदों में 3 रन अब तक प्रदान कर चुके, 3 सिंगल्स के रूप में। रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतर गेंद थी गेंदबाज जोयल की और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 45 रनों पर। जोयल left that inside out cricket plate but straight to field, that extra cover brilliantly stopped by the fielder. बेहतर फील्डिंग, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर रन आउट का मौका गंवा चुके हैं गेंदबाज। बेहतर फील्डिंग जरूर, लेकिन बल्लेबाज बच चुके हैं रन आउट के मौके से, 2 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ। 47 on the board now, just 2 to get for victory in remaining 13 deliveries. The things getting much easier for the batting side. अंतिम बार इस ओवर में जोयल, reverse shot and he just finished the match in a style with a huge one. So fantastic victory for Ranipura against Fajir by 8 wickets with exactly 2 overs to spare. That means 12 balls to spare. They reached the target of 49 for losing just 2 wickets in exactly 5 overs. And a comprehensive victory for Ranipura defeating Fajir, and with that victory they are through to the next round of this competition. So the next match, Saint Sebastian will take over Bundel. One more good match is now coming up.
And because of that, I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for the toss procedure. Saint Sebastian ಹಾಗೂ Bundel ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. This match award goes to the man who scored a valuable 15 runs, came as opener and played a sensible knock including 1 6 and a 4. He scored valuable 15 runs in just 70 levels with a strike rate of 214.5. Sachit adjudged man of the match. I request Sachit of Ranipura please come to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests, and also I request the captains of Saint Sebastian as well as Bundel please report in front of the stage for the toss procedure. Sachit of Ranipura adjudged the man of the match for his fantastic knock of 15 in just 70 deliveries with a strike rate of 214.25 including 1 6 and a 4. I request once again Sachit please come to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. So that's it for the match number 2. Match number 3 is now coming up live and exclusively right in front of you between Saint Sebastian versus Bundel. और वो मैच शुरू हो गया पर छोटे से वाले हमें ब्रेक के बाद तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ एक बार फिर से तब जब यहाँ पर मैच नंबर 3 की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. Bundel ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. I will check. I just want to check.
match number 3 of day number 2 of the prestigious Planet Air Trophy 2026 Season 1, which is proudly presented by Planet Air Travels in this beautiful Swaraj Maidan here in Moodubidire. Everything is set here for the big match between Sebastian versus Bundel. Welcome back once again, and signal came from umpire Sriraj at square leg umpire Suresh Moodubidire, and in our commentary box umpire Satish Moodubidire as the third umpire. And commentary box as always myself Fajir Salian in English, Mr. Gopi in Hindi, and as a scorer we have Kiran Joyce and scorer come commentator, and in the online scoring department we have one more gentleman from Bedra Media, Maruf, and of course, in technical department, we have the proprietor of Bedra Media, Irfan, and all are ready here for the cameraman of Bedra Media to capture this the fantastic match, the high voltage match between these two, and Bundel versus Saint Sebastian Peramannuru. Winning the toss, captain of Bundel, they elected to ball first. So here comes the first over, long off and deep long on, wideish for Conwell, the field set, and Avil will going to start the proceedings. First ball. This time Conwell just wanted to go for the drive, wicketkeeper behind the stump, misses the ball completely from his hand, and by call by umpire, so that first run in the form of extra. And for the team Saint Sebastian, and that brings Vishwas into strike. Now two very good batters are in the middle. Both are very experienced campaigner. Vishwas one who played for the team Friends Kuthar. Next time appeal for a leg before wicket, but just an excitement. We can see that the ball, which is maybe the ball contact with the bat of the batter Vishwas, is while trying for the reverse sweep, and no run scored. Good start here from Avil, and it's not so easy to come and bowl in the power play. You have to be very, very accurate in the line and length is concerned. This time loose stroke, chance for the fielder at cow point region. Vishwas departs. Just try to reach the pitch of the delivery, which is wide outside the line of off temp, away from his body. Just pays the penalty for that. Just have a look at it in a replay, how wide that ball is. Just try to reach to the delivery. Didn't got that much of balance he's looking for. And this is what happening when you are not really moved your front foot for the pitch of the delivery, away from the body. And mistimed, and it is a huge fish in the net. The team St. Lawrence Bundel picked up their first wicket. Avil got a vital breakthrough for his team, winning the toss. Elected to ball first, how to get some good start, and this is a really great start. 1 for 1. The new batter in with a lot of what you call responsibility in his shoulder. Is the number 3 position is always the one of the most unique batting order for any team, and Daniel being the owner of the team,
know exactly what to do in the situation like this. They lost the first wicket very quickly. They needed some consolidation. Along with that, they have to look for some runs as well. Avil bowls, lovely delivery, beautifully bowled. Appeal for run out. Umpire says not out. Good work done by the bowler Avil on his follow through. Quickly done the work as Daniel played it back to bowler. Very lucky indeed there from Conwell. The right moment he's got to bat into the crease. Otherwise, definitely is in trouble in the non-strikers end. And here is the fifth time in this over. Avil bowls to Daniel. Daniel this time a lovely delivery just around his legs, and this is turning out to be a great over. Just a one run and one wicket so far in this over. The runs which is hard to combine. Avil to ball to Daniel. Swept that one very nicely, and slog sweeps it comes into play down to deep square leg region boundary for 4 runs. Just breaking the shackle in the right time. The last delivery of the over, and Daniel played an exquisite slog sweep shot. Quite deliberately played, exactly where the protection has been given in the deep. The square leg, fine leg inside the ring, and played it lovely shot to get into the start. So even though 4 runs in the last delivery, only 5 runs came from this first over from Avil. It's not a bad over, considering that it's a power play over. But he's definitely disappointed. It might be a more better over if he managed to get one good delivery here. But nothing wrong with the line of the delivery. But batter has played an exquisite slog sweep shot. And 5 runs on the board. And the new bowler in is Gilchrist. It's not Adam Gilchrist, just a Gilchrist. He's from the Bundel. The Gilchrist from Bundel, not from Australia. Gilchrist is one of the dominated batter from Australia. Adam Gilchrist, wicket-keeper batter. Fantastic opening, destructive batter. Played it down to mid-out range, and chance of run. Conwell is in trouble. Conwell is in trouble and looks like is safe in the non-strikers end. Really, the risky run taken by Conwell after he hit the ball hard into that fielder at mid-on, going for the quick single, responded by his partner Daniel. But lucky for him that last moment he managed to drag his bat, and rightly so. Umpire Suresh Moodubidire says that the batter is safe. It's 6 for 1. Conwell got his first run from the bat. Experienced campaigner. Excellent striker of the ball. Along with Daniel, wait and see how these two batters will going to build the partnership here. Gilchrist. Bowles wanted to go for the expansive drive. Daniel going for the quick single. Once again, the same man in the picture. In the mid-on. We can see that the fielder is standing in the edge of the circle, so that both the batters are enjoy that rotating the strike. 2 balls, 2 singles, 7 for 1. Gilchrist. Balls far outside the line of off-stump. Warm-up delivery. Warm up for the umpire Suresh Moodubidire. And time is exactly 11 past 30 in the morning. It's a bright and sunny morning. Absolutely very hot condition. This is a better line. Just kept that one inside the frame line. And Daniel was just trying to play where he was standing. Tried to reach that delivery. And after he's standing well outside the line of leg stump, it's not so easy to reach that delivery, the line of the ball. Outside the line of off stump. Dries that one again. Lovely delivery there from Gilchrist. Fantastic. One more over which is coming from the hands of Gilchrist has been fantastic so far. 8 for 1. Looks like Daniel Conwell has got a little bit problem while he tried to hit the ball pretty hard. He hit the bat hard into the ground. It might be a little bit problem for this wrist. Sometimes it's happening when the ball is almost targeting in the midland leg stump.
into the batter. Whenever is an aggressive frame of mind, try to hit the ball, but ball which is almost in that block hold. So here comes Gilchrist again. Balls played it down gently down to mid-off region for a single. Gilchrist is not going to bother about the single. You know exactly this is a power play over. I have to restrict the boundaries, but he succeeded so far. Very hard to combine the boundaries. So far only one boundary. And scoreboard is 8 on the board, 9 on the board for the loss of 1 wicket. The wicket of Vishwas back in the pavilion. Down the leg side, Daryl couldn't manage to take the advantage of the delivery. The pretty loosener delivery leg by call by umpire. So one more better over from the point of view of team Bundel, which is comes to an end. Gilchrist ball, very good one. After completion of over number 2, 10 on the board for the loss of 1 wicket. They're going exactly 5 runs per over. First over is a 5 runs, second over is also 5. So Sustan Bondel from Dubai announcing rupees 1000 for hat-trick wicket. This is only for the bowlers of team Bondel. And wait and see. Will the bowlers will going to grab this opportunity? Yesterday, joy of 90 Warriors, the winning 3000 cash prize for his match winning innings in the quarter final. Ten for 1 after the power play, and start up the over number third over, which is start with a wide. It's a Joel of Bondel brought into attack to bowl 11 on the boat. Once again, one more wide, one more extra. And with the addition of that extra score, moves on to 12 for 1. They need to be very careful. St. Lawrence Bondel winning the toss, elected to ball first. Both the opening bowler did a very good job to restrict the runs in this first 2 overs. But Joel here is struggling to get his line and length, consecutive 2 wide deliveries. Right arm round the wicket, he balls. Once again, the hat-trick wide. 3 wides in a row. And this is not a good start there from Joel, because you need to be very careful. You need to see that how their opening bowler is bowled. They're given you 100% in that first 2 overs, and you cannot do this mistake, because their efforts will definitely going to be frustrated for the bowlers who bowled a very good over. This time he's changing his angle. It's a good one for him to coming round over the wicket, as he bowled once again a sharp incoming delivery. Cornwell is not really looked like he's been comfortable. After that, he got a little bit injury in his wrist in the previous over. Again, quicker one and faster one. And wide call by umpire. The ball is just missing the line. The 4th wide of this over without any effort from the bat. The team Saint Sebastian Peramannuru getting some runs. It's 14 for 1 in the over number 3rd is in progress. This time wide number 5. Can you believe this? Five wide deliveries. Of course, Sustan is announced rupees 1000 for the hat-trick wicket, not for the hat-trick wides. Please note that. 16, 15 for the loss of 1 wicket. Again, nicely played it down to mid-wicket region for a single. With that single, scoreboard moves on to 16 for the loss of 1 wicket. In the over number, the 3rd is in progress. And that brings Daniel into strike now. They know exactly they got 5 extra deliveries in this over. It's not a, it's a big over. It's a prolonged over.
Daniel across the line, swings it, catch it is the call, but ball will going to land it safely between mid wicket and the deep mid wicket, short mid wicket and the deep mid wicket. Plenty of time for the fielder to judge the catch, isn't it? I think it's a short mid wicket fielder or it's a mid on fielder. I have to look for the catch because the ball is there in the air for a long time, but there is no mid wicket in fact, and there is a mid wicket, but they're not trying for the catch. Down the leg side, going to be wide. One more exit. Scored moves on to 19 for the loss of 1 wicket. Announcement here for Conwell. If Conwell hits hat-trick 6, he will going to get 1,000 rupees from Joy Kuluru. And his wife is also announced. Tina announced rupees 1,000. Altogether 2,000 for Conwell for the hat-trick 6. But here is a nice looking extra cover drive from Conwell. And with that single score, the moves on to 21. This is turning out to be a big over, good over from the point of view of team Peramannuru, Saint Sebastian, Peramannuru. Very important runs are coming in the form of extras. Daniel Rice catches a call, and again the ball just falling short of the fielder at mid-off. He's tried his level best to take the catch. Good attempt. Not easy to take that one. Actually need to dive in front if you wanted to take the catch, but he's a tall man. At mid-off, it's not so easy to dive to your front, particularly in this cricket ground. Beautiful delivery. Absolutely clean him up by the lovely incoming delivery. Joel produced peach of the delivery, and after he's been struggled a lot to get his line and length, and he got produced one beautiful delivery. Absolutely disturbing the furniture. Wicket number 2 gone. Conwell back in the pavilion. Came as opening opener for the side. 22 for the loss of 2 wicket. The Wilfred, one more, the fantastic performer. Age is just a number, and one of the legend player for the side of Saint Sebastian. Wilfred walking towards the middle. A lot of experience behind him, Wilfred. 22 for the loss of 2 wicket over number 3rd, which is comes to an end as a prolonged over. 12 runs came from that over. No change in bowling. Gilchrist will going to continue. Bowled well in the second over of the power play. This time Daryl played it down to extra coverage and for a single with that single score, but numbers down to 23 for 2. Now Wilford. For Wilford, there is a fielder deep backward point between backward point and cover point in the deep. Wilford wanted to go for the reverse sweep but missed it completely. Wicketkeeper behind the 70 the rest. And bowler Gilchrist has been outstanding in his bowling. The line and length so good. Consistency. You can see that in the line and length. And once again he defeated the bat of Wilford. The back-to-back dot ball from Gilchrist will going to put more pressure for Wilford. He just wanted to play the unorthodox cricketing stroke, reverse sweep, but he fails to make a contact with the bat. Ball him, clean him up. What a delivery there from Gilchrist. You know exactly the ball batter is under pressure. You know exactly after bowling a 2 back-to-back dot deliveries, the batter will going to try for the different, and the right time for the bowler to just concentrate over the middle stump, and he just uprooted the middle stump of Wilford. It's 23 for 3. Wilford out for duck.
He couldn't manage to disturb the scoreboard, but Gilchrist absolutely disturbed the furniture. New batter in is Royston, walks towards the middle. Over number 4, which is in progress. Gilchrist, so far so good. 1 run and picked up a wicket. What a great over. Only the over of Joel has been expensive with the extra of 5 wide deliveries in this and that over. The 12 runs came from that over. Otherwise, team St. Lawrence Bundel, they really bowled well. Gilchrist to the left-hand batter. Royston. Good cricket there from Royston. Just shaping that one down to point region for a single. With that single scope, and moves on to 24. After a long time, the scoreboard is moving for the team Saint Sebastian. And even Daryl is also, after a long break, is back on strike. Daryl, so far, they batted well. He's batting on double figure with L for 1 boundary. Ooh, that might be the ball which is almost close to the off stump. It might be that opportunity. Looks like the ball is hitting the thumb of wicket keeper. It will going to hurt him a lot. Fantastic over from Gilchrist. What a over there from Gilchrist. Only 1 run came from that over. Couple of runs came from that over. Altogether 3 runs when the bell 1 by. And scoreboard is 24 after completion of 4 overs. And Saint Sebastian, they're going exactly 6 runs per over. And the projected score will going to be 42 in the same run rate if they manage to get runs. The wait and see and how well they will going to come back here. And the remaining 3 overs very crucial for the team Saint Sebastian to back in the game. And it's time to change in voice as well as language. I request my friend Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो 4 ओवर के बाद इस वक्त सेंट सेबेस्टियन इस वक्त जोड़ चुका है 24 रन और 5वें ओवर की पहली गेंद को इस वक्त खेल दिया ऑन साइड पर 1 रन के लिए बल्लेबाज ने और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 25 रनों पर। अविल गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं और क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज डेरिल और रॉयस्टन जो कि क्रीज पर मौजूद डेरिल सामना करने के लिए तैयार और अविल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कम से कम 50 के आंकड़े तक यहाँ पर पहुंचना होगा सेंट सेबेस्टियन को। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का तो अविल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए डेरिल के लिए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा। बेहतर गेंद थी इस वक्त, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಮೆರಲಪದ ತಂಡಗಳನ್ನುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಯಲಿದೆ। ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। अविल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार डेरिल जो कि सामना करते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर लॉन्ग ऑफ भी थोड़ा सा वाइडर डीप कवर पॉइंट मौजूद था डेरिल के लिए। इस वक्त गेंद को खेल दिया डेरिल ने सिलीमिटॉन पर जब तक गेंद फील्ड और बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 26 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. Good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Bundel और गेंदबाज अविल अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद स्टीयर कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद, लेकिन स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं और गेंद जब तक गली पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका है। स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ अब
पहुंच चुका है 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. It's 25 for the loss of 3 wickets in the 27 in fact for the loss of 3 wickets in the over number 5 in progress. 4 बेहतर गेंदे गेंदबाज अविल इस वक्त फेंक चुके हैं. डेरिल के लिए अगली गेंद इस बार स्लॉग स्वीप शॉट खेला डेरिल ने, लेकिन मिसफील्ड इस वक्त करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर. और जहां तक सवाल है इस वक्त चौके का, तो चौका इस वक्त वो प्रदान कर चुके हैं. बेहतर शॉट था इस वक्त, स्लॉग स्वीप शॉट इस वक्त डेरिल का, जहां पर सिर्फ 1 रन मिलना चाहिए था, वहां पर फील्डर की गलती की वजह से बल्लेबाज 4 रन प्राप्त कर चुके हैं. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर. 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. बेहतर स्ट्रोक इस वक्त डेरिल के बल्ले से लगता हुआ. और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज अविल. इस बीच डेरिल के लिए यह गेंद एक बार फिर से ऑन साइड पर गेंद को बोर्ड दिया. मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा और थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन दूसरा रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. जस्ट अ सिंगल दे गॉट, सिंगल टू एंड द ओवर. 8 runs came from this over from Avil and after completion of 5 overs 32 for the loss of 3 wicket for Saint Sebastian Permanur. Meantime, the next match I would like to once again call upon all the players of Japu as well as Malapad to please report to the stage immediately to make a signed official chart for the next match. दिन धीरे धीरे दोपहर की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ. सुबह के 11:45 यहाँ पर बज चुके हैं. 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स. और सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों की इस वक्त छूता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ. और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई. और इस बढ़ते हुए धूप की तीव्रता के साथ संघर्ष की तीव्रता भी बढ़ती हुई दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच. लगभग 30 से 31 डिग्री तापमान, 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान मुडुबिद्री का आज का दाखिल हो चुका है. इस बार गेंद को उछाला मिड विकेट के ऊपर से और गेंद सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है. 4 या 6 अंपायर के इंतजार है इशारे का. और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा स्क्वेरर इस वक्त गेंद को चला था. मिड विकेट पर फील्डर जरूर मौजूद है, लेकिन गेंद तक पहुंचने में असफल. और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है आफ्टर फर्स्ट पॉइंट पहले टिप्पे के बाद 4 रनों के लिए. बेहतर स्ट्रोक डेरिल के बल्ले से लगता हुआ एक बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए डेरिल. और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर 36. डेरिल इज नाउ बैटिंग ऑन 19 इंक्लूडिंग 3 मैसिव बाउंड्रीज. और निश्चित रूप से शीट एंकर्स रोल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मुख्य सूत्रधार की भूमिका यहां पर अदा करते हुए डेरिल. और सेंट सेबेस्टियन का स्कोर इस वक्त जा चुका है 36 रनों पर. 36 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5. 6 in fact, 6 started just short while ago. Gavin ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते, बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते. डेरिल के लिए गेंद को खेला इस वक्त फॉलो तो में मिसफील्ड रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन इस बीच बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल. 1 run added to the total. It's 37 for the loss of 3 wicket. Deril moving up to 20 now with that single. Is batting on 20. और रॉयस्टन जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा. गेंदबाज गेविन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रॉयस्टन के लिए बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाह रॉयस्टन ने. फील्डर थोड़े से पीछे तैनात, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, लेकिन ना और मिसफील्ड, लेकिन बल्लेबाज को दूसरा रन इस वक्त नहीं मिलेगा. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 38 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. सो इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर. डेरिल बैक ऑन स्ट्राइक, इज बैटिंग ऑन 20. और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज गेविन की गेंदों का. बाएं हाथ ऊपर द विकेट गेविन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथ के बल्लेबाज डेरिल के लिए यह गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद को खेला जरूर, लेकिन ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए. बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेल दिया और रन बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 38 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. गेविन फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट. रिवर्स शॉट अगेन बाउल्ड आउट. जस्ट वांटेड टू प्ले द रिवर्स शॉट, नॉट सक्सीडेड. The ball pitching almost in the block hole and flattered the mid off stump of Deril. So a fantastic innings of 20 runs came to an end from Deril and 4th wicket lost for Saint Sebastian in this situation. और जहाँ तक सवाल है डेरिल का एक बेहतर पारी 20 रनों की खेलने के बाद पेवलियन वापस लौटते हुए बोल्ड आउट के रूप में. और
स्कोर है इस वक्त 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर 4 डेली डिपार्ट्स। So fantastic innings came to run from Daryl of 20 runs. He scored including 3 boundaries. Is back to pavilion. New batsman is now comes out to the middle. नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ और वो इस वक्त सपना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेविन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। इस वक्त गेंद पहुंचे लॉन्ग ऑन पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। Just a single they got. Scoreboard moving up to 39 for the loss of 4 wicket after the completion of 6 overs. Last over now remaining in their innings. Next match will be played between Japu versus Malapad, and because of that I once again call upon all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Santosh, the bowler starts a fresh proceedings. Last over starts in St. Sebastian's Permarour's innings और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए काफी दूर दूर तक फैला क्षेत्र अक्षर हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। 5 फील्डर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात लंबे स्ट्रोक्स रोकने के प्रयत्न में पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट लेग स्पिन गेंदबाजी। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त बोलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। लेग बाय का इशारा और लेग बाय के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 40 रनों पर। 40 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 7th एंड फाइनल ओवर ऑफ देयर इनिंग्स। संतोष रॉयस्टन के लिए सपना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट संतोष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और रॉयस्टन के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 41 रनों पर। 41 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। स्टिल 5 balls left in overall calculation in their innings. संतोष अगली गेंद इस बार टॉपेज हो चुकी है। गेंदबाज और विकेट कीपर दोनों पहुंचते हुए, लेकिन इस वक्त कैच को लपकने में सफल हो चुके हैं गेंदबाज पहले और ये विकेट यहां पर गिर चुका है रॉयस्टन का। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट गॉट द लीडिंग एज at the last moment and the bowler himself collected the ball just going towards to his left side with a perfect judgment, going to his back side to collect the ball in fact perfectly. 41 for 5 and the man Royston departs. डेजिल नए बल्लेबाज और डेजिल के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया हर छक्के के लिए शॉन इनके द्वारा। देखते हैं यहाँ पर डेजिल छक्का लगा पाते हैं या नहीं। तो गेंदबाज संतोष लेग स्पिन शैली की गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार डेजिल के लिए। इस बार चिप किया स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में डीप एक्स्ट्रा कवर पर। प्लेसमेंट बिल्कुल गलत है और पहले ही गेंद पर डाइजिल का विकेट गिर चुका है गोल्डन डक के रूप में। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, हल्के से गेंद किस वक्त स्कूप किया था लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं और डीप एक्स्ट्रा कवर पर इस कैच को लपक लिया गया फील्डर द्वारा। तो अंपायर ने इशारा किया कि देयर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। और कुल मिलाकर गेंदें बाकी हैं इस वक्त सिर्फ 3 सेंट सेबेस्टियन पेरबनूर की पारी में। 41 for the loss of 6 wickets now. सुनील नंबर 8 बल्लेबाज का आगमन होता हुआ और गेंदबाज संतोष गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इज ऑन अ हैट्रिक इन फैक्ट संतोष और ये गेंद ड्राइव कर दिया। इस वक्त 1 रन मिलेगा, नॉट क्वाइट मिडली गेट बट ही गॉट अ सिंगल
With that single run, the scoreboard moving up to 42 for the loss of 6 wickets. 2 balls left in the overall calculation in their innings. और संतोष अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑन के दिशा में गेंद जाती, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। क्लीन पिकअप पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं अंतिम क्षण में। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट बिटवीन दीस टू बैट्समैन, एडिंग अ कपल ऑफ रन्स टू देयर टोटल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 44 रन पर। 44 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड नाउ जस्ट अ लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। अंतिम गेंद बाकी और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम गेंद पर बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। 6.5 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है सेंट सेबेस्टियन की पारी में और अंतिम गेंद बाकी। अंपायर विकेटों को सही करने के बाद इस वक्त तैयार और अंतिम गेंद लेकर संतोष तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। This time, driven that one, down to long on. They completed one, looking for the second. Clean pickup, in comes the throw. This could be in trouble. No, throw came so wider. And because of that, the batsman completed a second run very safely in the end. So, couple of runs to end their innings. And they finished with 46 for the loss of 6 wickets in the stipulated 7 overs for St. Sebastian's Mangalore. And now it's going to be a third umpire for the run out at the non-striker end. तो अब तीसरे अंपायर के लिए थोड़ी देरी से मांग की गई है और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धारण देते हैं। No doubt is the call from the third umpire. The batsman perfectly saved and they finished with 46 for the loss of 6 wicket in the stipulated 7 overs for St. Sebastian. And now the target for St. Lawrence Bundel is 47. They have to score for victory in the stipulated 42 below. That means in the stipulated 7 overs. The requirement is now for just under 7 runs per over. They have to score for victory. This is 47 लक्ष्य तक क्या सेंट लॉरेंस बोतल के बल्लेबाज पहुंच पाता है या नहीं। फिलहाल सेंट लॉरेंस बोतल की पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने जब यहाँ पर सेंट लॉरेंस बोतल की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಮೆರ್ಲಬಾದ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಮೆರ್ಲಬಾದ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ।
So thank you very much, Gopi, and welcome to the innings of team the Bundel. And the signal came from umpire. The opening batters already made their way to the middle of the pitch. The striker Avil and non-striker Gilchrist and Daryl will going to start the proceedings from the commentary box. And 47 to win this match, and wait and see how well this opening batter will going to get the start here. The power play number 1 will going to start, and Daryl. Daryl will going to start the proceedings. Here comes the first ball. Right arm over the gate. Avil just wanted to go for the extra cover drive. Misfield dive by the fielder at short third man, so that grabbing the opportunity. And they are completed a couple of runs. So they started their innings with a couple of runs. Avil is off the mark and their team is also off the mark. It's 2 without loss of any wicket. The 47 is required from 42 deliveries. And wait and see how well the team of Bundel will going to get this total. Oh, opportunity here for the cotton ball. Daryl just got hand onto that, but fails to hold that catch. And the bowler's back drive maybe a little bit powerfully struck by the batter. Back to bowler. Couldn't manage to react to that catch quickly. The ball just slipped out of his hand and Avil got alive. The wonderful cricket tournament is in progress. Planet Air Trophy 2026 Season 1. Planet Air will organizing this cricket tournament for the men's Inter Paris Underarm cricket players, with the slogan of filling our mission to help the needies. And a good comeback, a very good comeback here from Daryl. Again, just tempting delivery outside the line of off stump, which is offered, and for the batter to go for the drive. Wicket keeper Wilford did the rest back to bowler. So once again, have a look at the wicket keeping there from Wilford, and this is what the experience is all about. And the very good technique you can see from Wilford behind the stump. It's 2 without loss of any wicket. One more lovely delivery, equally well batted. Conwell is there in the deep long on. They wanted to come back for the second. In comes the throw from the field, and ample time for the batter to complete the couple of runs. Good placement. Avil didn't try to hit it too hard. Exactly played that stroke against the direction of the wind. And Conwell is standing at long off, which is a little bit wide-ish. So enough time, ample time for the batter to complete the couple of runs. 4 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Up and over, lovely shot. This is the speciality of Avil. No chance for the Conwell. One of his favorite and signature shot of Avil. Loves to play that shot. Up and over, and quite effectively played. And whenever you are bowling in the power play, if you are not having ample pace in the bowling, and even he didn't got an adequate field for that, he kept one long off, and which is a straight long off, and is choosing the extra cover. Good finish for the first over for Avil, and for the team has got a very good start. 8 without loss of any wicket, team Bundel. Royston brought in to attack the ball the second over, then last over of the power play. 8 from the first. The Royston to continue from the scouts and guides the building end. First ball, appeal for leg before wicket. Umpire not interested. That ball is almost shaping and missing the leg stumper because of that huge turn in the ball, and the leg by call by umpire Suresh Moodubidire. With that leg by score, but moves on to 9 on the board without loss of any wicket. That brings Avil into strike. The man who played an exquisite extra cover drive in the previous over will go into face next delivery. Left arm, beautiful delivery, lovely one. But Wilford fails to gather that one. It's got the bat onto that.
Ball is just deflected from the bat of the batter. And lovely delivery that from Royston. Almost defeating the bat of Avil. The double figure comes off 10 without loss of any wicket. Nice looking drive and towards extra cover point region. Just a single with the addition of that single score, but moves on to 11 on the board without loss of any wicket. The runs are coming in the form of singles in this over. For the team of Bundel, the target which is 47. They're going as for the run rate required for the team. The Sam lofted and fielder there in extra cover and is absolutely right in the position. This is a lovely field set here by the Saint Sebastian. They know exactly that what is the strong point of the batter. Will just loves to play the stroke that lofted extra cover drive, and by knowingly the captain of the position kept one fielder in the deep extra cover and got the reward for that. Will departs, good wicket, big wicket for team Saint Sebastian. The first wicket gone, it's 11 for 1. So new batter in coming to the middle, Prashant as the number 3 batter for the side. Royston bowls, lofted opportunity for the fielder. Back to back 2 wickets. This time the fielder just have to run to his right to complete the catch. Wicket number 2 gone and consecutive 2 wickets here for the Royston. And Saint Sebastian are strongly back in the game. Vishwas, the name itself, I can say that is confidence. And he got that catch very confidently in the deep extra cover region. Second catch for him. Safest pair of hands in the deep. And Royston strikes with the 2 wickets here for Team Saint Sebastian, and Bundel are looking in trouble. Of course, no power is implemented in that stroke from the batter Prashant. That's why he fails to get the distance. Vikash is a new batter in with the just number 1111. Now he's on hat-trick. Royston is on hat-trick. No hat-trick so far in this tournament. Oh, almost bright on the block hold. Negotiated very well by the new batter. Vikas is off the mark with a single, lovely over. Great over there from Royston. Just 3 runs came from this, 4 runs came from this over after completion of over number 2. It's 12 for 2. 3 from the bat, 1 from the leg by. Altogether 4 runs came from that over. And just coming back to the equation, the target is 47, 12 which is deducted. That means they have to get another 35 runs to win this match. .30 balls remaining and 35 runs required for the victory. The run rate remains the same, the 7 runs per over. The required run rate for the team Bundel. It's an absolutely bright and sunny afternoon. Time is exactly 12 past 10 in the afternoon. We are watching this prestigious cricket tournament. Planet Air Trophy 2026. The last and final day of this cricket tournament, and we are just expecting some great battle for the title. Planet Air Trophy 2026. Team 90 Warriors yesterday did a lovely job. They played a good game of cricket, and they must reserve the team in the finals.
They defeated Team Takode in the semi-final and got the place in the finals. Looking for second, a lovely running beat in the wicket before the fielder Vishwas will go into charge to the ball from the deep long on. Just a soft hand this comes into play as Vikas once again picked up a couple of runs, valuable couple of runs, and with that couple of runs Kobanda moves on to 14 for the loss of 2 wicket. And the over number 3 is in progress. Conwell is in attack. One more experienced bowler. Loves to give some flight in the delivery. Can surprise the batter with the flight and the turn. It's not a easy end to ball, and because we can see that the wind is blowing in this direction where it is the batter, left, right, and batsman can enjoy some big shots. Here comes Conwell balls. Beautiful delivery, light flighted one. Try to bring that incoming delivery off cutter into the batter. Negotiated very well by Vikash. Played it upishly but safely down to cover point region for a single. With the addition of that single, Skobanda moves on to 16 for the loss of 2 wicket. 15 correction. Gilchrist is on strike. What a delivery. This is what I'm talking about. Conwell can surprise. If he bowled into the spot, it's absolutely sometime unplayable. Beautiful off-cutter coming into the batter. Just have a look in the replay. Beautiful and through the gate. Sometimes it's very difficult to deal with such kind of deliveries with the turn. And again, Conwell strikes with a beautiful delivery. 15 for 3. All of a sudden, they're in trouble. Still, they got a deficit of 32 runs required for the victory. 32 needed. 27 deliveries remaining. Is over number 3 is in progress. Correction. 27. Yes, the ball remaining. Conwell just wanted to come round the wicket because left-hand batter is on strike. Gavin is the new batter in, and dot ball again there from Conwell. Is turning out to be a good over so far from Conwell. Once again with his offered outside the line of stump and slashed it away down to deep cover point region for a single. With that single, Skobanda moves on to 16 for 3. Conwell will not going to bother about these singles. You know exactly. This is the over. You need to restrict the runs. So far is a wonderful over is in progress. 4 runs and a wicket. And last delivery of this over. 31 still required from 25 deliveries. Nicely played it down to point region by Vikash. He's so good in that shot. He will going to return the strike. Wonderful over there from Conwell. 5 runs and a wicket. After completion of over number 3, chasing 47 to win this match. Bundel still searching for the right track. It's a 17 for 3. That means 30 runs required for the victory in the remaining 4 overs. 24 deliveries, 30 needed for the victory. And before the next over will going to start here, the time to change in voice as well as in language. I would like to invite my friend Mr. Gopi to take over the microphone in the language. Thank you. धन्यवाद सतीश. सो द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर. 24 बॉल्स लेफ्ट, 30 रन्स रिक्वायर्ड. और जहां तक अगले मैच का सवाल है, टॉस के लिए जप्पू और मरलापद के कप्तानों को मैं दावत देता हूं, कृपया स्टेज को संपर्क करें टॉस प्रक्रिया के लिए. रॉयस्टन गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार. लेग स्टंप पर आती हुई गेंद रन के लिए दौड़ पड़े. थ्रो पहुंचा इस वक्त, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. और 22 के रूप में ये रन उनके खाते में जुड़ चुका है. चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है. और जहां तक सवाल है इस वक्त
बुंदेल का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक साझेदारी। विकास और गेविन उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं इस वक्त रॉयसन, और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर और उनके अत्यंत अनुभवी खिलाड़ी विल्फ्रेड, जो कि इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो रॉयसन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सपना इस वक्त करने के लिए तैयार। गेविन और इस बीच रॉयसन बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाल दिया, गेंद पहुंची मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े। एक रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल हो चुके हैं। जोखिम भरा रन, लेकिन बल्लेबाज एक रन पूर्ण करने में सफल। 19 on the board, 19 for the loss of 3 wicket. Japu ಹಾಗೂ ಮೆರ್ಲಪದು ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕು. और रॉयस्टन जो कि गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अंपायर विकेटों को सही करते हुए। दोपहर का वक्त 12:15 इस वक्त बचते हुए, और धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है। गर्मी की तीव्रता इसे बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई, और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। और इस भीषण गर्मी तले एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट प्लैनेट एयर ट्रॉफी 2026 सीजन 1 की शानदार प्रगति होती हुई, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है प्लैनेट एयर ट्रैवल्स ने। और इस बीच गेंदबाज रॉयस्टन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज ऑफ स्टंप से काफी बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े। इस बीच एक रन प्राप्त करने में सफल। 1+1, 2 runs now added to their total. Couple of runs added to their total in the face of wide, and with that couple run the scoreboard moving up to 21 on the board. 21 for the loss of 3 wicket. और 2 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ। Still 26 more runs now they have to score for victory in remaining 22 deliveries. Still the match is now equally balanced. और सब इस वक्त करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज गेविन इस वक्त सपना करते हुए। रॉयस्टन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद लेग से बाहर क्यों निकलती हुई, वाइड का इशारा एक बार फिर से। अपनी सही लेंथ और लाइन को तलाशते हुए इस वक्त रॉयस्टन 2 लगातार वाइड फेंक चुके, 3 रन उपहार के रूप में, तोहफे के रूप में प्रदान कर चुके हैं। अब बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ राउंड ओवर द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, बट ही गॉट अ सिंगल, एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 23 on the board following 3 wickets in the over number 4 in progress. बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी, और स्ट्राइक पर आ चुके हैं विकास इस वक्त सामना करते हुए रॉयस्टन की गेंदों का। और इस बीच ये गेंद लेग स्टंप, बेहतर गेंद, क्विकर गेंद थी, लेग स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलती हुई। गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराता हुआ। He's got an inside edge on that. Single run added, inside edge on that, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर। 24 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. रॉयस्टन कुछ बातचीत करते हुए विकेट कीपर उनके अनुभवी खिलाड़ी विल्फ्रेड, दूसरे खिलाड़ी से फील्डिंग की जमावट के बारे में। और रॉयस्टन Japu after won the toss they elected to field first in the next match against Malapad। और गेंदबाज इस वक्त तैयार रॉयस्टन बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद गेविन के लिए, गेंद को स्वीप करना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर। 25 for the loss of 3 wickets now. Still 22 runs more now they have to score for victory in remaining 19 deliveries. और इस ओवर में अंतिम बार रॉयस्टन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन प्राप्त करने में सफल। ओवर की समाप्ति, 4 overs completed, 26. The game is on, and now 21 to get from 18 deliveries. Still I must say the match is now still in balance.
निहाल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 5वां ओवर शुरू होता हुआ और 18 गेंदें बाकी, 21 रन इस वक्त चाहिए विजय के लिए बुंदेल को सेंट सेबेस्टियन के खिलाफ। और जहां तक सवाल है विकेट कीपर विल्फ्रेड जो कि इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। और निहाल इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज विकास के लिए। 21 टू गेट फ्रॉम 18 डिलीवरीज। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार निहाल। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। फर्स्ट बॉल कम्स निहाल टू विकास। ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद डॉट गेंद के साथ इस वक्त शुरुआत कर चुके हैं गेंदबाज निहाल। और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। 17 गेंदें बाकी, 21 रन चाहिए। और गेंदबाज इस वक्त निहाल अगली गेंद लेकर तैयार विकास के लिए। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज विकास सामना करते हुए ये गेंद इस बार चूके प्लम्ब इन फ्रंट की वन। विकास की पारी इस वक्त समाप्त हो चुकी है। Just wanted to work it away on the onside at the last minute after shuffling across the line. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को ऑनसाइड पर मुड़ना चाहता, स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद उनके पैर पर टकराई, उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई उन्हें एब्सोल्युटली प्लम्ब इन फ्रंट घोषित करने में। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में निहाल फेंक चुके हैं और विकास की सेंसिबल पारी पर पर्दा गिर चुका है। विकास आउट फॉर 7 including 5 singles and 1 couple. He scored 7 runs and a sensible innings came to an end from Vikas and a 4th wicket gone for Bundel. It's 26 for 4. Joel, the number 6 batsman, is now comes out to the middle. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार निहाल की गेंदों का। इक्वेशन 16 गेंदें और 21 रन चाहिए। 21 to get from 16 deliveries. What a fantastic match is now progressing here. और गेंदबाज निहाल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंद पहुंची शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर। 1 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 1 रन प्राप्त करने में सफल। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। निहाल इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज गेविन जो कि सामना करने के लिए तैयार। 4 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए गेविन इस वक्त सामना करते हुए निहाल की गेंदों का। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए निहाल। बाएं हाथ के बल्लेबाज गेविन के लिए अगली गेंद। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके और 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल। वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद इस वक्त फेंकी थी लेग स्टंप से बाहर। विकेट कीपर भी ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और 2 रन एक्स्ट्रास के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ। 29 द स्कोर नाउ, दैट मींस 18 मोर रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री आउट ऑफ 15 डिलीवरीज ऑफ देयर इनिंग्स। गेंदबाज इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा। 1 मोर वाइड और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 30 रनों पर। कुछ हद तक दबाव इस वक्त महसूस करते हुए, हालांकि 3 बेहतरीन गेंदों के साथ गेंदबाजी शुरू की थी निहाल ने, लेकिन उसके बाद अपने रिदम को खोते हुए, लय को खोते हुए और इस बीच अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। हाथों पर था विकेट। ये गया, दिस इज स्लॉपी, दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी। विकेट कीपर ने डाइविंग स्टॉप किया, हाफ स्टॉप, और फिर से 2 रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 32 on the board. Now equation seems to be much easier now with that 5 wides bowled by the bowler in this over. Nihal 3 wides he bowled, conceded 5 runs. 32 for the loss of 4 wicket. Now 15 runs to get in remaining 15 deliveries. 15 balls to get, 15 balls remaining and 15 runs to get. The match is now equally balanced still. और निहाल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेविन के लिए ये गेंद
better get fantastic delivery in the air for a while but fell in the wicket area at mid on. Just a single. Now 14 balls left, 14 runs required. 15 गेंदों पर 20 रन बनाने थे, तब 3 वाइड गेंदबाज निहाल ने फेंके, 5 रन वाइड के रूप में प्रदान किया और 15 गेंदों पर 15 रन इक्वेशन आकर रुक चुका था पिछले गेंद पर। अब 14 गेंदों पर 14 रन चाहिए विजय के लिए और निहाल दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती है, गेंद को खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट पंच कर दिया। इस वक्त डीप कवर पॉइंट पर 1 रन ओवर थ्रो, लेकिन बल्लेबाज इस वक्त 1 रन के साथ संतुष्ट। 13 गेंदें बाकी और 13 रन चाहिए। व्हाट अ मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। बराबर का टक्कर इस वक्त जारी और इस बीच इस ओवर में अंतिम बार निहाल तैयार। काफी लंबा ओवर उनका प्रगति पर रहा, तो अंतिम बार इस ओवर में दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज गेविन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। गेंद को जमीन पर 5 से 6 बार टिप्पा खिलाने के बाद ये गेंद अच्छी गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में, चूके इस वक्त फॉलो थ्रू में मिसफील्ड, शायद कैच आउट का मौका भी था लेकिन इस मौके को गवाते हुए 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 35 द स्कोर, दैट मींस 12 balls left, 12 runs required, 9 runs came from the last over from निहाल। अगर उन 5 रन जो वाइड के रूप में निहाल ने प्रदान किए हैं उसे अगर एक्सक्लूड करके देखा जाए तो इस ओवर में बेहतर गेंदबाजी की है निहाल ने, लेकिन रन्स तो मिल चुके हैं और समीकरण काफी हद तक आसान बन चुका है इस वक्त सेंट लॉरेंस बूंदेल के लिए। 12 गेंदें बाकी, 12 रन चाहिए। So a tidy contest is now progressing here. The bowler starts the fresh proceedings from that side and from the far end is डेरिल और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप मिड विकेट मौजूद, कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग नहीं और मिड ऑन पर एक फील्डर तैनात, जबकि लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर डीप एक्स्ट्रा कवर और कोई डीप बैकवर्ड थर्ड मैन इस वक्त मौजूद नहीं। बाएं हाथ के बल्लेबाज गेविन के लिए और इस बीच गेंदबाज डेरिल फील्डिंग में जमावट करते हुए। डेरिल, जहां तक डेरिल का सवाल, एक बेहतरीन पारी उन्होंने बल्लेबाजी में खेली थी, 20 रन उन्होंने बनाए थे। अब गेंदबाजी में देखते हैं क्या जादू वो करते हैं अपने इस ओवर में। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, रन अपने कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। गेविन सामना करते हुए डेरिल की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट पहली गेंद, ये गेंद को खेल दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन के दिशा में, गेंद जाते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल दे गॉट एंड विद दैट सिंगल रन the scoreboard moving up to 36 on the board, that means 11 to get from 11 deliveries। और इस बीच डेरिल गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जोयल के लिए। हर गेंद के बाद फील्डिंग में बदलाव लाते हुए इस वक्त उनके अनुभवी खिलाड़ी विकेट कीपर विल्फ्रेड और गेंदबाज डेरिल अब कुछ हद तक फील्डिंग में तब्दीली करते हुए कवर पॉइंट पर जो फीडर खड़े हुए थे उन्हें गली पर इस वक्त तैनात किया गया है। कोई कवर पॉइंट नहीं, कोई एक्स्ट्रा कवर नहीं, कोई मिड ऑफ नहीं। इस बीच ये गेंद हल्के से गेंद को खेलना चाहा, अंतिम क्षण में गेंद को टैप कर दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन के लिए। क्रीज पर मौजूद डेरिल और गेविन, माफ कीजिए, क्रीज पर मौजूद जोयल और गेविन, ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त जानते हैं सेंसिबल क्रिकेट अपनानी है। हर गेंद पर रन इस वक्त उन्हें बटोरने हैं और अपने योजना के अनुसार, अपने प्लानिंग के अनुसार इस वक्त तो बल्लेबाजी करते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त सेंट सेबेस्टियन के गेंदबाज डेरिल का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक घातक गेंदबाजी बल्लेबाजों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का और इस वाइड के रन के साथ समीकरण और भी आसान होता हुआ। अब गेंदे बाकी है ज्यादा, रन्स बनाने हैं कम, यानी 10 गेंदे बाकी, 9 रन चाहिए। स्लॉपी, दिस इज एब्सोल्युटली स्लॉपी। 1+1 नाउ 40 द स्कोर, दैट मींस 7 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 10 balls। पेस को वृद्धि करने के प्रयास में, पेस को एक्सेलरेशन देने के प्रयास में लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंदबाजी की थी इस वक्त डेरिल ने और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट सामना करते हुए जोयल, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, इस बार वाइड का इशारा। नाउ 41 द स्कोर,
तो 4 विकेट गिर चुके हैं, 6 रन न सिर्फ चाहिए विजय के लिए, 10 गेंदें बाकी। अब समीकरण काफी हद तक आसान बन चुका है, तो अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही यहाँ पर सेबेस्टियन को इस मैच में वापस ला सकती है, लेकिन मुमकिन जरूर है बाउंस बैक करने के लिए इस वक्त गेंदबाजों को। डेरिल इस वक्त तैयार, फील्डिंग में एक बार फिर से जमावट करते हुए विकेट कीपर विल्फ्रेड। लॉन्ग ऑन फील्डर को इस वक्त मिड ऑन पर तैनात किया गया है। और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो डेरिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 6 to get from 10 balls। डेरिल जोएल के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को टैप कर दिया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 42 रनों पर। 42 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। नाउ 9 balls left, 5 runs to get। और गेंदबाज यह गेंद ड्राइव कर दिया मिड विकेट पर, फील्डर थोड़ी सी स्क्वायर आता है, नाते 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरा रन इस वक्त नहीं लेना चाहते हैं, शायद विश्वास फील्डर थे डीप मिड विकेट पर, दौड़कर आए गेंद को उन्होंने फील्ड किया अपने दूसरे प्रयत्न में, और विश्वास का थ्रो पहुंच चुका है नॉन स्ट्राइकर एंड पर। 1 रन का इजाफा, 43 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट। नाउ जस्ट 4 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 8 balls। एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया गया है, और डेरिल दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद इस बार गेंद को उछाला एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर के सिर के ऊपर सर, गेंद सीमा रेखा के अंदर इस वक्त फील्ड की जा चुकी है। बेहतरीन फील्डिंग इस वक्त, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया था इस वक्त। तो तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है, ये देखने के लिए कि सही तरीके से अंपायर, सही तरीके से खिलाड़ी जो है फील्डर गेंद को रोकने में सफल रहे थे सीमा रेखा के अंदर या नहीं। तो तीसरे अंपायर इसका परिशीलन न करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। जप्पू और मरलापदों के बीच अगला मैच खेला जाएगा। तो जप्पू ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है मरलापदों के खिलाफ अगले मैच में। तो तीसरे अंपायर इसका परिशीलन यहाँ पर करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। मैच नंबर 3 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट प्लैनेट एट ट्रॉफी 2026 सीजन 1 के तहत यहाँ पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुत किया प्लैनेट एयर ट्रैवल्स ने। It's a 4 declared by the third umpire. So that's it for this match. St. Lawrence Bundel won the match against St. Sebastian with more than 1 over to spare, and they won the match by 6 wickets. And with that victory, they are through to the next round of this competition. So match number 3 of this prestigious cricket tournament has been came to an end. And match number 4 is now going to start between Japu versus Malapad. So the match of this match award goes to Kevin, who contributed very well from the bat, remained unbeaten on 8. Sensible knock came from him, and in the bowling department he also bowled very well, conceding just 7 runs in his 1 over quarter and captured one wicket. And because of his all-rounding performance, Kevin of St. Lawrence Bundel adjudged the man of the match. I request Kevin please come to the stage and receive the one of the match award from one of our chief guests, Mr. Presley. Mr. Presley to please receive the man of the match award for Gavin for his all-rounding performance in this match. Gavin of St. Lawrence Bundel adjudged the man of the match. So that's it for this match, and match number 4 is now coming up now. The exclusive delighted in front of you between Japu and Malapad. और एक छोटा सा ब्रेक लेते छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर से अंग्रेजी में हम आपके सामने उपस्थित होंगे सतीश के साथ जब अगला मैच यहाँ पर शुरू होगा। तो अब वक्त है फिर बताओ थैंक यू, धन्यवाद।
Here comes the presentation of the Man of the Match award. Kevin Butcher, the Man of the Match award. Chief guest. Congratulations, Kevin. All the best for the remaining matches of this prestigious Planet Trophy 2026. We are into the match number 4. Japu takes on Malapad. Winning the toss, captain of Japu. They elected to ball first, so that opening batters already made their way to the middle of the pitch. Came from umpire Moodubidire, yes, our scorer Joyce, and everything is ready for the first over. The bowler got the attack about the first over. Beyond to Western, the power play number 1 is going to start. Long on, and while this long off, the fielders are in the deep. The first ball defensively played back to bowler. No run scored. Western, the watch pull in the beginning. Exactly, this is 1 over. They have to get some runs in the power play, especially the power play is knowing for scoring. And here comes the next delivery, second ball. Driven that one just wide of that mid-off fielder. And before the fielder will go into field the ball, up stop by the fielder. Ample time for Royston to complete his first run and first run for his team as well. One without loss of any wickets. Time is exactly 12 past 40 in the afternoon. It's an absolutely bright and sunny afternoon here in this Swaraj Maidan. Again, played it nicely into fine leg region. The fielder is behind the ball, and they're looking for second. They made it quite comfortable in the end. The couple of runs which is completed, and with that couple of runs, Kabadna moves on to 3 on the board. Anil will going to take the strike. Dion again turns that one down to short mid wicket region. Quickly they're going for the single run. Anil is a tall man, so that's so easy for him to complete the single. With the addition of that single, Kabadna moves on to 4 on the board for no loss. So both the batters are dealing with the singles. Steady start from these two batters. And 4 runs in 4 deliveries. Dion to Royston. Royston just a lovely shot. Beautiful touch. Not really try to hit it too hard, but just getting that line and length so quickly. And getting that bat into the line of the ball. Helping the ball into the disc. Like just have a look at it in replay. It was a wrong line to ball when you are bowling in the power play. Little margin for error. It's not having adequate field for that line. And punishment which is came from the bat of the batter Royston. Scoreboard moves on to 8 on the board. Once again, good cricket, intelligent cricket there from Royston. After that boundary, the very next ball, you know exactly that ball is on the middle stump. Played it gently for a single. He will going to retains the strikes. So retains the strike, and after completion of first over, good start from the opening batters. It's 9 for 1, 9 for no loss. Malapad, even they lost the toss, asked by the team Japu to bat first. The 9 without loss of any wicket in this very hot sunlight. The temperature almost recorded to 29 to 30 degrees Celsius. Very hot condition here in Moodubidire. The match number 4 is in progress, and as for the schedule for the day, I have to complete 8 matches, so that needed some quick work from the fielding team. And the Wilson
Brought into attack from the far end. Right arm over the wicket, he bowls towards Royston. The very good start there from the bowler, just angling the ball away from the right-hander batsman, but well within the reach of the bat. Starts with a dot ball. 9 without loss of any wicket. One more lovely delivery, beautifully bowled there by Wilson. Once again, this time he's tried to bowl that one incoming delivery. The Royston almost tried to play that inside out cricketing stroke, but the line is so good into the block hold. No run scored. Back to back 2 dot balls, third time in this over. Up and over, played it nicely into the deep extra cover region. And will they come back for the second? No, they're not looking for second. They're asking for trouble. And the that single scope and moves on to double figure 10 on the board for no loss. Both the batters got a very good start, steady start from this to batter. Once again, try to walk the ball on the onside region, and looks like Anil is a little bit struggling here. He's hit the bat hard into this left foot, even though he's having a shoes, but it sometimes is a very hard thing, and it's happening whenever the batsman try to hit the ball pretty hard, miss the ball, but hits the left leg of Anil, and I think they needed some quick relief spray to get some quick relief. Looks like Anil now is comfortable. Definitely it's going to hurt a lot. It's the experience of each and every batters, and those who are playing cricket definitely in a lifetime once they got that experience of but some players more experience, and scoreboard remains on 10 on the board without loss of any wicket. Wilson balled him, cleaned him up. That's all happening when and you are almost you lost your concentration, and that's all happening in cricket, isn't it? When you are get injuries, you need to regain your concentration, and if the ball is going to be on the middle and off stamp, and he'll just try to hit the ball against the line, pays the penalty for that. Wicket number first gone. Anil departs. It's 10 for 1. Malapad lost their first wicket. The experienced batter Anil back in the pavilion. So new batter in is Rajesh, and walks towards the middle. The 10 for 1. The vital breakthrough from Wilson. So far it's a good over, tidy over. The wicket taking over as well. This time played it settled and a chance of run out, and umpire of course nothing has happened there in the non-striker, and the ball is missed by the wicket bowler, and wherever tried to gather the throw from the fielder, he missed it completely. No damage done. Quick run taken. 11 after completion of over number 2. Excellent over which is comes in and here from Wilson after completion of over number 2. Searching for the right track. Malapad 11 for the loss of 1 wicket.
So experienced bowler Arun brought into attack. A lot of experience behind him. Lovely all-rounder, fantastic all-rounder for the side. Starts with the warm-up delivery of the afternoon and warm-up for umpire Satish Moodubidire as well. Oh, beautiful, beautiful delivery. Just have a look at the turn in the ball. Arun giving some flight in the delivery. And ball almost going to kiss the off stump, very close to the off stump of the batter. Very lucky that Rajesh, this time once again on the middle stump. Last moment Rajesh got a bat onto that, otherwise the ball going to hit the middle and leg stump of the batter. And one more single, 12 for 1. Arun, good comeback after that wide delivery. He bowled two very good deliveries after that. Oh, this time played it nice in the mid-wicket region, but protection there in the deep. In comes the throw, but not good enough to stop the couple of runs from this batter. Lovely drive there from the batter Royston. And the scoreboard moves on to 15 on the board. In the quarter-final, we're going to start between Paneer and team Ranipura. So that I request all the players of both the teams, please complete the signatures as soon as possible. This is going to be a quarter-final number 3 of the Planet Air Trophy 2026 Season 1. Sings it hard and he got the distance. Nice pick there from Royston. Nothing much wrong with the delivery, but ball is absolutely in the slot. Just have a look at the replay. The ball is in the slot and he picked it on beautifully across the line. Swings it away and the instrumental sound came from the batter and just suggesting that he's mid that one right from the middle of the bat. Again deflected from his leg, so that leg by call by umpire. This turning out to be a productive over of the bowler. Arun completes its expensive over. 3 overs gone after completion of over number 3. The total score is 22 for the loss of 1 wicket. Malapad. Nikhil brought into attack the bowl, the 4th over from the far end. This starts with a big wide. The wide plus 1 added to total the couple of bonus runs are started to flow here for the team Malapad. And the scoreboard is 25 comes up. 24 correction. Nikhil to Rajesh. Again, this time ball wide outside the line of off time. Second wide of this over. Runs are coming in the form of extras in this over. 26-25. Quarter century for the Malapad in the over number 4. Wants to go for the expansive drive. Doesn't get hold up that and properly. Outside edge of the bat. Fielder in that short admin region will go into field the ball. Ample time for the batter to complete the single. 26 for 1. From the scouts and guides end. This time, misjudgment. What the fielder is doing there in the mid wicket. It's absolutely poor judgment from the mid wicket fielder. Almost is charging to the ball, but ball almost came into him. No need to rush to the ball, but ball almost coming into him. And a total misjudgment costing the runs here. Boundary comes up here for Royston and for this team. A lucky boundary.
The scoreboard moves on to 30 on the board. Nikhil to Royston. Royston wanted to go for the reverse sweep. He's got a bat onto that, little bit bat onto that, so that he could manage to defeat the infield. Single offered, single takes a total score into 31 in the over number 4. It is in progress. Appeal going on for the caught behind is gone. It's a healthy nick. Sharp catch taken by the wicket keeper behind the stump. Nikhil strikes. Rajesh back in the pavilion. Just looking for the square cut. Healthy nick, healthy nick. You can see the body language suggests everything. That the batter definitely has got a bat onto that. Even the wicket keeper and the umpire very much sure about that. .31 for the loss of 2 wicket, and Rajesh replacing another Rajesh. Rajesh replacing another Rajesh. That means Fernandes, which is replaced by D'Souza. The name is the same, the surname is different. So 31 on the board, lost 2 wickets, looking in a good position still. The team Malapad, the over number 4 is in progress. Nikhil to continue from the far end. Appeal for leg before Flum in front of wicket. It's going to be an easy decision there for the umpire. That was a beautiful leg cutter, almost in the middle stump, and Rajesh absolutely Flum in front of wicket. No doubt at all. Just have a look at it in the replay. Is exactly right in front of stump. That's why very important. The batter should know that where he was standing. It's very important whenever coming to bat. You have to take the guard from the umpire. Where the middle stump, where the leg stump, when so you are realizing some conversation going on here between wicketkeeper and the batter. It's a 31 for the loss of 3 wicket, and we can see again and again it is absolutely Flum in front of wicket. You can see in the replay the batsman is shuffled across the line of the delivery. That's why the problem starts for the batters. You know exactly, there is no idea where he was coming across the line. Wide outside the line of off temp. One more extra. With that extra scoreboard moves on to 32 for the 3. The first he has moved towards the leg stump. Then he came across the line. That's what the problem for the batter. He no idea where he was when he was trying to hit the ball. Catch, it is gone. Lovely catch. He drops the catch. Once looks like he'd taken the catch, but he's dropped the catch. Very lucky escape here for the batter. Just have a look at the replay. Tried to hit the ball. And almost he got that one, but tried to roll in the ground. He just lost the grip over the ball, and the ball which is landed into the ground. Drop catch, Nikhil. Very unlucky that what could be the wicket taking delivery, and drop catch by the fielder. Over number 4 completed. It's 33 for 3.
outside line of off stump and completely missed out by the bowler, by the batter. Styrus, right arm over the wicket. A very popular name, Styrus. A couple of runs completed, good running between the wicket, and placement is good from the batter Prajwal. A couple of runs which is completed. With that couple of runs, Coburn moves on to 35 for 3. Scott Styrus is one of the former cricketer of New Zealand. Scott Styrus, one of the greatest all-rounder. Lovely delivery coming into the batter. Prajwal has got a bat onto that in the last moment. And the one more addition to total addition of that single score moves on to 36 on the board for the loss of 3 wicket. Over number 5 in progress. Styrus again. Third time in this over. Down the leg side, going to be punishable from the umpire. Little more margin for error when you try to get the ball around the legs of the batter. It's going further away. The addition of that single score moves on to 37. Royston, so far looking good, came as an opener for the side, playing a very good innings here. Playing a shit ankle roll this time again across the line. He's got a bat onto that again. Very dangerously played by Royston across the line, against the line. But lucky for him, he got a bat onto that in the last moment. And got a single for that, 38 for loss of 2 wicket. That brings Prajwal into strike. Styrus balls lofted down to deep long on. Fielder underneath it. But he drops the catch. Lovely attempt, but even though from the young man, is charging from the widest long on almost towards a deep long on, straight long on. He's got a hand onto that in the last moment, but unfortunately the ball just slipped out of his hand. The great attempt there from the fielder, and they got a couple of runs for that, and 40 on the board. Over number 5 in progress. Flum, absolutely flum, no doubt at all. Even in the closed eye, you can raise your because that much of flum in front of wicket. Ball is almost targeting a middle stump. Just have a look at the replay and hitting him onto the back foot and right in front of stump. Umpire Satish Moodubidire has got no hesitation to call that leg before wicket. 5 gone after completion of 5 overs. Is 40 for the loss of 3 wicket team Malapad. Umpire, there's a 1 ball remaining in this over. 1 ball remaining. One dot ball which is missed out here in our scorer. Thank you very much, Satish Moodubidire, for noticing everything. And he's also got a 1 score book in his hand. He will go into notice. And Junior Roland Pinto. Reverse sweep comes into play. Very good placement as well. Fielder behind the ball and ample time for the batter to complete 3 valuable runs. Excellent and intelligent cricket from the batter Royston. What a innings is playing, and definitely it's a marathon innings from him. The innings which is not included in a big shot of 162 boundaries. Once again, couldn't manage to defeat that fielder at Gully Region. Just a single for Robin. And with that single score, moves on to 44
The over number 6 is in progress. Lovely delivery. The much required dot ball. Fourth time in this over. Wilson. The Royston tries that one down to long off. The double is a call, but very difficult to get that couple. Just a single. With that single, Skobanda moves on to 45 on the board. Over number 6 is in progress. The penultimate over is in progress. Drives that one down to extra coverage and good placement as well. Will they come back for the second? Definitely the good placement there from Robin. Playing a very good role in the other end as well. 47 is the score. They're cruising towards the 50 plus runs. Malapad are looking in a good position. Once again, placement is made down to cow point region. They're looking for second. And excellent. Absolutely great running between the wicket. And 50, which is one shot of 50. 49. Malapad 49 for 2 wickets, 4 wickets back in the pavilion. Last over remaining in the innings. Royston looks like he's very much tired. Quite understandable. Look, very hot sun, and it's not so easy. He run very well between the wicket. A lot of runs which is taken by running between the wickets, and it's always going to be a big challenge to maintain your level of fitness. The last over remaining. Quite understand Royston is came as opener for the side and still is batting hard in the middle. Retained the strike for the last over. No, he is a non-striker and Robin will going to take the strike. Last over of their innings is coming up. Dion in his second over. One who bowled the power play over will go into bowl the last over. One who bowled the first over will go into bowl the last over. 9 runs in the first over, and wait and see how will go into bowl the last over. One shot of 50 for Malapad. Balled him, clean him up right on the target. Absolutely, that ball is pitched on the spot into the midline leg stump and uprooted the leg stump. .49 for the loss of 5 wickets are back in the pavilion. The new batter into the middle. The Royston's a very good innings which is comes and Royston played an absolutely good innings for his team. 25 runs he scored in just 17 deliveries, including 2 delightful boundaries and 1 6. And a very good hand there from Royston for his team. Rivan will go into face Dion. Wide call by umpire. 1+1, a couple of runs added to total. Extra runs, bonus run. 50 comes up for the new Malapad. They got a 50, now 51 on the board. To 51 for loss of 5 wickets. Looking for reverse sweep and we're going to get the single for that. He's got a bat onto that in the last moment. And with that single score, moves on to 52 on the board. Last 4 deliveries left. Robin back on strike. Rivan right in the gap towards the wideish long on. One bounce into the fence for 4 runs with the direction of the wind. Lovely placement. Even they're having a 2 fielders very close together. One at mid wicket and one at wideish long on, but he's just choosing that cow corner to get the placement right. Lovely placement and good runs. And with that bound, Skobanda moves on to 56 on the board for 5 wickets. Once again lofted, but fielder underneath it. Long on fielder now making no mistake at all.
This time it couldn't manage to get the placement right. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. He got the elevation, fails to get the distance. Wicket number 6 back in the pavilion of Malapad. New batter towards the middle, Prashant. Just in number 32. Couple of deliveries left in their innings, and wait and see how many runs they will going to score. The good score on the board, 56 in 6.4 overs. 2 balls remaining. Prashant to take the strike. Dion. Balls this time again passed around the legs of the batter. Umpire, it's from the bat. 57. Just last ball remaining. Came down the track. Umpire says is out, stumped out. And wicket is back in the pavilion. Ball is just passing the pressing his leg and just wanted to take the review for the wide. Just wanted to take the review for the wide. So wait and see what could be the review here from. Will it going to be a good review or not? Later wait and see. But batsmen have to come to the pavilion because of automatically done. I think so. This is automatically done. Umpires are checking the wide line. The batsmen need to come because the review which is taken for the wide, not for the stump out. Suresh Moodubidire as a third umpire will going to watch whether it's going to be good enough to call the wide or not. So wide to call from the third umpire, and wide has been come forward. There's a good review there from the batting team, the batters, and Satish Moodubidire thought it might. The ball is brushed the something of the batter. The Roshan is the batter. 7 wicket back in the pavilion. Driven down to deep square leg region. Will they come back for the second? They need to be. This is last over, last delivery, and looks like the batter is going to be in trouble. Umpire asking for third umpire to give the decision. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪಾನೀರ್ ಹಾಗೂ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾನೀರ್ as well as ರಾಣಿಪುರ to be reported here immediately to sign the official chart. The decision which is pending. If the batsman is safe, then it's couple of runs. If a batsman is out, then only single. Just wait and see. And then only we can tell you the target set for team Japu. So out is a call. That means only one run and run out. And means the scoreboard is 58 and 59 is the target for the team Japu. 59 ರನ್ನಿನ ಗುರಿಯನ್ನು 60 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. 59 is the score. 60 exactly the 60 in the afternoon. Japu has got a target against Malapad. Wait and see how well Japu will going to get his total. We take a short break in commentary box. And after a short break, my friend Gopi will go to take over the microphone in Hindi language. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So exactly 60 the target for Japu, set by Malapad, who had batted first. Malapad had to score. They scored, in fact, 60 in the stipulated 59 in the stipulated 7 overs, and they set a victory target of exactly 60 for Japu, and the innings now going to start. First ball. पहली गेंद उजाला खूबसूरती के साथ अरुण ने इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाते हुए और एक रन दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल. बेहतरीन स्ट्रोक था इस वक्त. स्क्वायर ऑफ द विकेट. गेंद को खूबसूरती के साथ उछाला था अरुण ने और 2 रन प्राप्त करने में सफल. निश्चित रूप से जहां तक 60 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त एक बेहतर शुरुआत की जरूरत है एसटीसी जप को. खासकर 2 पावर प्ले ओवर का फायदा इस वक्त उन्हें उठाना होगा. ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. गेंदबाज राजेश अगली गेंद लेकर तैयार. स्क्वायर ऑफ द विकेट. अगेन ही लॉफ्टेड दैट वन एंड अगेन फाइंड्स द गैप एज वेल. Again a couple of runs for his team and for him, and with that couple runs the scoreboard moving up to 4 on the board, yet to lose any wicket. 4 रन बन चुके हैं, 5 रन बन चुके हैं, माफ कीजिए, बिना किसी नुकसान के. 5 on the board. पहली गेंद वाइड थी तो 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज राजेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अरुण के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. Off cutter again, Dekbar again. This time he lofted that one down to deep cover point. This time little bit of a squarer comparing to the previous shot. And once again he's got a couple for that. Fantastic batting performance continuing here from Arun in the first over. 3 off cutter गेंदों को ऑफ साइड पर पंच कर दिया इस वक्त, स्कूप कर दिया था. स्क्वायर ऑफ द विकेट 3 कपल के लिए और 2 स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. अरुण फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ा सामना करते हुए इस वक्त. और गणेश माफ कीजिए, इस वक्त राजेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 1 रन जरूर मिलेगा. इस बीच पैरों पर गेंद टकराई अंतिम क्षण में. It's got a bat onto that at the last moment, and with that single run the scoreboard moving up to 8 on the board in the over number first in progress. Couple of balls left in this over और 5वीं बार इस ओवर में राजेश इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार. नेल्सन सामना करते हुए and this time is gone. Just called for a mighty heave, not succeeded, and the ball stuck to his leg stump and the belts disturbed. First wicket gone. Golden duck dismissal for Nelson and first wicket loss for SJC Japu. It's 8 for 1. Alvin, the new batsman is now comes out to the middle और गेंदबाज राजेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड विकेट पर गैप चुनते हुए और गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त ऑलविन के बल्ले से लगता हुआ और ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज के पास वक्त था कि गेंद स्ट्रोक्स को खेले और इस बार स्ट्रोक्स को खेला गैप पर कवर और मिड विकेट के बीच, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच गेंद को इस वक्त निकालने में सफल. डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए. पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बन चुके. pretty good start for STC Japu chasing the victory target of 16 7 overs. They scored 12 runs after completion of first over. 48 more runs now they have to score for victory in remaining 6 overs. That means in remaining 36 deliveries. Still they got 9 wickets kept intact. 9 wickets they got in their hand. और गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए
तो इस बीच गेंदबाज रोशन गेंदबाजी प्रारंभ करते हैं। पहली गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर का, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर, 13 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। और रोशन फिर से एक बार तैयार, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा, वन मोर वाइड, and with that single run the scoreboard moving up to 14 on the board. Starts with consecutive wides for the bowler Roshan, और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। इस बार चिप किया लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे तैनात, मिड ऑन पर एक रन का इजाफा, नॉट क्वाइट कंट्रोल्ड स्ट्रोक फ्रॉम अरुण, but the ball fell in the vacant area and between just in front of the mid on fielder, और बल्लेबाज के पास मौका था एक रन के साथ अपना छोड़ बदलने का। स्कोर एक रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर, 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और रोशन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप पर आते हुए चिप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाते हुए गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, और गेंद को फील्ड करके थ्रो जब तक करे अरुण कुछ हद तक धीमी गति से दौड़े थे, लेकिन आखिरकार अंतिम क्षण में दूसरा रन प्राप्त करने में सफल। 2 रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा। 17 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। जस्ट 2 राइट डिलीवरी बॉल बाय द बॉलर रोशन इन दिस ओवर, और अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर, कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हुए सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा, सही निर्णय, और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 17 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाज रोशन एक बार फिर से तैयार ऑलविन के लिए, दाहिने हाथों पर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 18 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। निश्चित रूप से एसटीएसी जप्पू को इस वक्त एक बेहतर शुरुआत की सख्त जरूरत है अगर 60 रनों के स्पर्धात्मक लक्ष्य तक पहुंचना है तो। और गेंदबाज यह गेंद उछाला, जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाती हुई, लेकिन एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, फील्डर वहां पर मौजूद है। स्वीपर गेंद को फील्ड करते हुए और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट in the over number second in progress. 2 balls left in this over, और अरुण के लिए ऑफ द टॉस मोड़ दिया इस वक्त, स्क्वायर लेग पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दोनों बल्लेबाज अब कुछ हद तक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतर साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए 20 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। रोशन इस ओवर में अंतिम बार ऑलविन के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन की दिशा में 1 रन मिलेगा। 1 run added, 9 runs came from this over, 2 overs gone, and SSC Japu looking in a good situation. It's 21 for 1 after completion of 2 overs. So bowler starts the fresh proceedings. राजेश अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका, फील्डर मैदान पर छा चुके हैं। गेंदबाज इस वक्त तैयार राजेश, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए चिप किया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर खूबसूरती के साथ अरुण ने, लेकिन माफ कीजिए ऑलविन ने, लेकिन 1 रन मात्र उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब
22 रनों पर 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। और गेंदबाज इस वक्त राजेश गेंदबाजी करते हुए, अरुण जो कि सामना करने के लिए तैयार रहा। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त उछाला, गेंद जाते हुए विकेट एरिया पर 1 रन मिलेगा। दूसरा रन नहीं लेना चाहते दोनों बल्लेबाज। दूसरा रन की संभावना हो सकती थी लेकिन आखिरकार दे डिसाइडेड अगेंस्ट इट और सिर्फ एकमात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 23 रनों पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। राजेश एक बार फिर से इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त ऑप्शन से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद का पीछा करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन एडेड टू द टोटल रन्स इस वक्त चाहिए एसटीसी जप्पू के लिए। वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है इस वक्त। और जहाँ तक मलपद का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतरीन गेंदबाजी इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। अंपायर विकेट को सही करने के बाद अपने स्थान पर लौटते हुए और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, अगली गेंद इस बार गेंद को उछाला एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर नहीं, गेंद को नहीं लपक पाया। इस वक्त मौका जरूर था पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद को लपकने का, लेकिन आखिरकार इस कैच को कन्वर्ट नहीं कर पाए। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 2 गेंदें इस ओवर में बाकी, बेहतर और अब तक साबित हो चुका है गेंदबाज राजेश का। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, काफ़ी तेज़ हवा मैदान की दाई से बाई और इस वक्त गुजरती, मैदान की बाई से दाई और इस वक्त गुजरती हुई, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस वक्त गुजरती हुई, जिस तरीके से मैदान से धूल इस वक्त उड़ रहा है उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख मैदान की बाई से दाई हो रहा है। इस बार गेंद को उछाला मिड विकेट पर, इनटू द गैप एज वेल, और गेंद को इस वक्त रोकने में सफल फील्डर, सीमा रेखा से बाहर, गेंद 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त अरुण के बल्ले से लगता हुआ, और ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट पिक द गैप एट द लास्ट मोमेंट बिटवीन वाइडिश लॉन्ग ऑन एंड डीप मिड विकेट एंड हिट दैट वन pretty hard. Scoreboard moving up to 29 now for the loss of 1 wicket. और अगली गेंद लेकर राजेश इस वक्त तैयार अरुण के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट, रिवर्स शॉट फैंटास्टिकली स्ट्रक बट स्ट्रेट टू फील्ड बैक ऑन द थर्ड मैन, हैज गॉट ओनली ए सिंगल। 30 ऑन द बोर्ड, 30 रन बन चुके हैं, 30 रन और बनाने हैं और 8 रन इस ओवर में बने। 8 runs came from this over and after 3 overs STC Japu looking in a good situation. In fact 30 runs they managed to score for losing 1 wicket in the face of Nelson. Exactly 30 runs more required in remaining 24 deliveries. That means in remaining 4 overs with a required run rate of exactly 7.50 runs per over, they have to score 30 in the stipulated 30 in the remaining 4 overs. So 4th over starts, 4th over प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, रिवन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ऊपर की पहली गेंद लेकर तैयार रहा अरुण इस वक्त सामना करते हुए, cut away this time but not so power in that stroke, because of that he's just got a single. 31 on the board, 29 to get from 23 deliveries now. Match is now equally balanced. और विकेट कीपर इस वक्त कुछ कहते हुए गेंदबाज रिवन से कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए। और रिवन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज ऑलबिन के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल। तो इस वक्त
अरुण के लिए एक इनाम घोषित किया गया है। अगर वो छक्का इस ओवर में लगाते हैं तो उन्हें 1000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। वाइड का इशारा 34 on the board. Arun back on strike. 1000 rupees cash prize declared for Arun if he hit a 6 in this over. Reverse shot, fantastically struck but straight to fielder and back on the third man. Not finds the gap as well this time by Arun. और एक रन मात्र प्राप्त करते हुए 35 for the loss of 1 wicket. Fourth over of their innings is now progressing here. Riven 2 गेंदें इस ओवर में बाकी, 2 गेंदें फेंके जा चुके हैं, 4 गेंदें बाकी और इस बीच गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 36 रन। ये दोनों बल्लेबाज ऑलबिन और अरुण एक बेहतर साझेदार यहाँ पर निभाते हुए अपनी टीम को धीरे धीरे मंजिल की ओर अग्रसर करते हुए। और रिवर की गेंद इस बार अरुण के लिए ड्राइव कर दिया मिड विकेट पर, रन नहीं मिलेगा। स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 36 रन। पहला डॉट गेंद अरुण इस वक्त खेल चुके हैं और स्कोर इस वक्त 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 37 रनों पर। एक गेंद इस ओवर में अभी भी बाकी, स्टिल 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। 10-11 गेंदों के बाद पहली डॉट गेंद अरुण खेल चुके हैं 2 गेंद पहले। इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, वाइड का इशारा। 1 more run added to the total. Runs coming quite freely now for SSC Japu. 37 on the board. Prolonged over progressing here so far from Riven. Alvin सपना करने के लिए तैयार रिवन की गेंदों का। Good one, fantastic delivery from Riven and a dot delivered to end the over. 4 overs completed, 7 runs came from the last over, 8 runs came from the last over in fact. And after 4 overs still I must say SSC Japu looking in a good situation. It's 38 for 1, 22 to get in remaining 18 deliveries. 18 balls, 22 runs required. I request the captains of Paneer as well as Ranipura to please report to the stage immediately for the toss procedure. Eighteen balls left, 22 runs required. प्रज्वल गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए 5वां ओवर शुरू होता हुआ एसजेसी जप्पू की पारी में अरुण सामना करते हुए। पहली गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिट, नॉट सक्सीडेड, डॉट डिलीवरी बॉल। गुड स्टार्ट फॉर प्रज्वल इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, बॉल्ड अ डॉट डिलीवरी, स्टार्ट्स ऑफ विद द राइट डिलीवरी इन फैक्ट। और अगली गेंद अरुण के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को स्कूप किया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर गेंद जब तक लपक ली जाए, फील्ड की जाए, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को लॉफ्ट किया था इस वक्त अरुण ने और 2 रन प्राप्त करने में सफल। 40 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ। प्रज्वल की गेंद, रिवर्स शॉट, delicately played, improvisation, finds the gap as well. Once again he's got a couple and they come back for the second run. This time इस बार निशाना स्टंप्स पर टकरा था तो निश्चित रूप से अरुण की पारी समाप्त हो सकती थी। काफी थके मांदे इस वक्त नजर आते हुए अरुण ना, और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 42 रनों पर। पानी रागो रानीपुरा तनद नायकರು ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। इस बार स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को खेलना चाहा चूंकि इस वक्त और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंच चुकी है। डॉट डिलीवरी बोल्ड, अगली गेंद लेकर प्रज्वल तैयार अरुण के लिए। इस बार स्ट्राइक टच द ग्राउंड, गेंद को उछाला है और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर जब तक रोक ली जाए
थोड़ी सी मिसफील्ड के बाद गेंद को थ्रो किया जाए, डायरेक्ट हिट इस वक्त लग चुका है और अरुण की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। तो अरुण एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद काफी थके मांदे लगते हुए इस वक्त और अपना विकेट तक होने के बाद दुर्भाग्यवशात रन आउट के रूप में पेविलियन वापस लौटते हुए एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद 23 runs scored by Arun, including 1 4 and a fantastic knock came to an end from him. And a vital wicket lost for SSC Japu. Now they are 43 for 2. So new batsman is now comes out to the middle, Sanjay. और गेंदबाज प्रज्वल अगली गेंद लेकर तैयार रहा। इस बार बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, डॉट डिलीवरी टू एंड द ओवर. And good over came to an end from Prajwal, who conceded 5 runs in this over. And after completion of over number 5, 5 overs completed, 43. That means 17 runs to get from remaining last 12 deliveries. So 12 balls left, 17 runs required. Rivan, the bowler, is now brought into the attack. कुछ बातचीत इस वक्त चलते हुए विकेट कीपर और गेंदबाज द्वारा फील्डिंग के जमावट के बारे में, और सपना इस वक्त करते हुए ऑलविन भी इस वक्त काफ़ी थके हुए दिखाई देते हुए मैदान पर बैठे हुए, और इस वक्त सपना करने के लिए तैयार। 17 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी, 2 overs left, 17 runs required, 16 for tie, 17 for win. The first ball of the 6th over of the innings is now coming up from the hands of Rivan. His second over. First ball, driven that one, straight down the ground, down to long on. In fact, they completed one clean pick up, not more than a single. Just a single they got, 44 on the board. Now, 16 to get from 11 balls. निश्चित रूप से यहाँ पर रनों की सख्त जरूरत हर गेंद पर बल्लेबाजों को SSC जप्पू के, और रिवन इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त बैकवर्ड स्कोर लेग पर, लेकिन फीडर मौजूद। जस्ट अ सिंगल दे गॉट, सिर्फ एक मात्र रन मिलेगा। 45 फॉर द लॉस ऑफ बोथ ओपनर्स। डॉट गेंदे और विकेटों के सख्त दरकार SSC मिर्लापदों के गेंदबाजों को इस वक्त 10 गेंदे बाकी, 15 रन चाहिए विजय के लिए, और रिवन अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। इस बार गेंद को चिप कर दिया, मौका एक्स्ट्रा कवर, फील्डर के हाथों में गेंद, और इसी के साथ ऑलविन की सपोर्टिंग पारी पर पर्दा गिर चुका है। गेंद को उछाला था लेकिन प्लेसमेंट गलत, और डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। ऑलविन का एक सेंसिबल पारी का अंत यहां पर हो चुका है। ऑलविन स्कोर्ड 11 runs इंक्लूडिंग 1 बाउंड्री, एंड इज बैकिंग टू पेविलियन आफ्टर बीइंग स्कोरिंग 11 runs. A sensible knock came to an end from him, and a third wicket lost for SSC Japu. Now it's 45 for 3. 15 to get from 9 balls now. तो विल्सन इस वक्त सपना करते हुए, और इस बीच गेंदबाज इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ। बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 46 रनों पर। अब नए बल्लेबाज संजय इस वक्त सपना करते हुए, संजय जो कि
दिवंगत खिलाड़ी अजय केरेरा जो कि एसएनजीटी का प्रतिनिधित्व किया करते थे, उनके छोटे भाई इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए कवर पॉइंट पर गेंद को खेला संजय ने और एक रन दौड़कर पूर्ण कर चुके अजय केरेरा जो कि एसएनजीटी टीम के भूतपूर्व खिलाड़ी थे। दिवंगत अजय केरेरा, उनके छोटे भाई संजय इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इस बीच लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा। One more run added to the total. 48 on the board now. 8 balls left. 12 runs required. 8 गेंदे 12 रन चाहिए और इस बीच रिवन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लास्ट बॉल लेफ्ट इन फाइट। Just a misses. Quick piece of work made by wicket keeper. And now ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम क्षण में अंपायर द्वारा कोई इशारा नहीं और इसी के साथ ओवर नंबर 6 की समाप्ति हो चुकी है। Now it's going to be a third umpire given by the field umpire. So fantastic over came to an end from the bowler Rivan, who conceded just 5 runs in this over. And the last over now remaining 12 runs to get on. देखते हैं यहाँ पर बल्लेबाज इस गेंद पर बचते हैं या नहीं। तीसरे अंपायर का निर्धार का इस वक्त इंतजार है। Not out is the call and the batsman survived. Now 12 to get from last over. और देखते हैं कौन से गेंदबाज इस अंतिम ओवर को शुरू करते हैं। एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्लैनेट एड ट्रॉफी फ्यूलिंग अवर मिशन टू हेल्प द न्यूडी, इस ध्येय वाक्य के साथ ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए प्लैनेट एड ट्रैवल्स की बेहतरीन पेशकश है। ये क्रिकेट श्रृंखला प्लैनेट एड ट्रॉफी 2026 सीजन 1 का अंतिम ओवर शुरू होता है। द लास्ट ओवर स्टार्ट्स रोविन 12 to get from last over for SJC Japu. The first ball of the last over is now coming up. रिवर्स शॉट खेलना चाह, डॉट गेंद और इसी के साथ अब चाहिए 12 रन, गेंदे बाकी है सिर्फ 5 और निश्चित रूप से पहली गेंद बेहतर फेंक चुके इस वक्त रोविन। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई और पिछले गेंद पर बल्लेबाज ने रिवर्स शॉट कोशिश की थी। इसे देखते हुए इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर एक फील्डर को तैनात किया गया है ठीक सीमा रेखा के पास और रोविन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस वक्त गेंद को उछाल दिया मिड विकेट पर, जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, इस बीच 2 रन प्राप्त करने में सफल। बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त फील्ड क्लियर करते हुए डीप मिड विकेट पर। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल। 50 कम्स अप फॉर SJC Japu, 50 for the loss of 3 wickets. Now 10 runs to get from remaining 4 deliveries. What a match is now progressing here. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो रोविन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद बाउंड जस्ट कॉल फुल ऑफ नॉट सक्सीडेड, लेग स्टंप पर जाकर के टकराई, बेल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका। इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा लक्ष्य समीकरण और भी कठिन हो चुका है SJC Japu के लिए। 10 रन अब चाहिए, 3 गेंदें बाकी सिर्फ।
10 runs to get from 3 deliveries for SJC Japu. अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके और छक्के यहाँ पर SJC Japu को इस मैच में विजय दिला सकते हैं बचे हुए 3 गेंदों में. 9 for tie, 10 for win, 3 balls left. और नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ Pradeep. The new batsman is now comes out to the middle. Boundary and sixes badly required in this remaining 3 deliveries for SJC Japu to get back into this match. This time misses, wide declared by umpire, and 1 run added in the face of extras. Now equation stands 9 to get from 3 balls, 8 for tie, 9 for win, 3 balls left. 51 for the loss of 4 wicket. The scoreboard says Robin इस वक्त प्रदीप के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिना तो बर्दा विकेट. ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक डिलीवरी, एंड दिस टाइम इज गॉन. इन फैक्ट प्रदीप इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन और एक और विकेट गिर चुका. अब अंतिम अवकाश, द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन. 2 balls left, 9 runs required. A 6 and a 4 can made all the work in this last 2 delivery for the batting side. 6 and a 4 will make all the work for the batting side in the last 2 deliveries. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, new batsman is now comes out to the middle to face the second last ball of their innings. I request Japu, I request Paneer and Ranipura, the players, please get ready for the next match. So 2 balls left, 9 runs to get. The second last ball of the match is now coming up. Robin bowls, Nikhil the striker. और ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछाला, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद जाती है, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े इस वक्त. दूसरा रन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी नहीं मिलेगा, और रन आउट यहां पर हो चुका है. Just a single run added. Now 52 the score. That means 8 to get from last ball. अंतिम गेंद बाकी 8 रन चाहिए. अगर छक्का भी लगाते तो मैच को टाई नहीं करा सकते, लेकिन अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड इस अंतिम गेंद पर फेंकते तो शायद यहां पर एसजेसी जप्पू के लिए मौका पैदा हो सकता है. To get from last ball, number 8 batsman is now comes out to the middle. He's at the long striker end. और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त निखिल. 8 to get from last ball. Here we go. Last ball, 8 runs. Robin comes to Nikhil. The match deciding ball comes. Right arm round the wicket. Driven down to long on. That's it. 7 runs. Thrilling victory for SJC Malapad against SJC Japu. And with that 7 runs thrilling victory against SJC Japu, SJC Malapad are through to the next round of this competition. So the match number 4 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, and also a last match of the first round in a Pool B has been came to an end, which won by SJC Japu against SJC, which won by SJC Malapad against SJC Japu. And with that victory, SJC Malapad are through to the next round of this competition to face Bundel in the next match of second round. Now, the third quarterfinal and first quarterfinal match in Pool B will be played between Paneer versus Ranipura. Paneer won the toss, and that match starts within just a short while. We are just taking a short break. और इस break के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मैं काफी दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब यहाँ पर अगला मैच शुरू होगा. तो अब वक्त है कि धन्यवाद. So man of the match, Royston did man of the match for his fantastic knock of 25 runs he scored from the match. Request Royston to please come to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. So that's it for this match. Royston of SJC Malapad enjoyed the man of the match. Thank you. Dhanyavad.
1. Winning the toss, captain of Paneer, they elected to ball first, and opening batters of team Ranipura, they are already there. Opening batsmen occupying the crease. The batter Roshan and Sachit, opening batters, are in the middle. Arun will going to bowl the first over of the power play. Signal came from umpire. Here comes the first ball. Drives that one down to long off region. The first run for the team. Roshan is off the mark as well. And team Ranipura is off the mark with a single. This is a quarter final. If we wanted to get the place in the semi-final, this is a must-win match for both the team. Second time in this over. Arun. Balls to Sachit. Sachit went for the reverse sweep and played it down to extra coverage for each single. So both the batters are off the mark with the singles. It's 2 without loss of any wicket in the over number first is in progress. The strong breeze is passing in the middle of the ground towards the right of our commentary box from the west to east. There is a long line almost outside the line of leg stump, and the ball is defeated by the bat and leg by call by umpire. With that leg by Skobad Namozan to 3 on the board without loss of any wicket in the over number the first is in progress. The power play number 1, deep mid wicket and long off wideish. The fielders are in the deep. Roshan will going to take the strike. Arun balls. Top edge, catch it is a call, and the third man fielder making no mistake at all. It's a wide third man. The batter just wanted to go for the reverse sweep, but just try to use the pace of the ball. Nothing wrong with that attempt, but the ball is got a leading edge of the bat, a top edge of the bat. Just have a look at the replay. Not really, keep it down, and the ball went straight to the hands of shortcut, making no mistake at all. Wicket number first gone. Roshan departs, and Sachit departs, in fact, and wicket number first is back in the pavilion. So Sachit replaced by Sanil. Elder brother is replaced by the smaller brother Sanil. Walked towards the middle with a lot of responsibility in his shoulder. One of the great all-rounder for the side. The left-hand batsman and right-hand bowler. Arun got a vital breakthrough in this over. The wicket number first is back in the pavilion. 2 for 1. The Sanil will going to take the strike. This time very good delivery just outside the line of off stump, and the Sanil just steers the ball down the third man region. He's up the mark with a single. Scope and moves on to 3 for 1. And the over number first is in progress. This time again, that ball is just going down the leg side, so leg by call by umpire Satish Moodubidire, and with that leg by Skobad moves on to 5 for 1. And a very good start given by Arun. Wicket taking over and quiet over, and the team Ranipura off to a very slow start. Is 5 for 1. The Planet Hair Travels, one of the most reputed organization organizing this cricket tournament, Planet Air Trophy 2026 Season 1, and with the slogan of fueling our mission to help the needy. It is very important for each and every organization to deal with some social work along with the sports and games. And the Planet Air Travel, it's providing the very good opportunity and a perfect platform for the young community players, anyone young, even for the masters,
senior citizens, everyone is participating in this tournament and taking part in this prestigious Planet Air Trophy 2026. Rentexon will be the new bowler to bowl the second over of the power play for the team of Paneer. Roshan will going to take the strike. A lovely connection, but lack of placement, chance of run out. But throw, which is the end what he is looking for, and not a right hand. Definitely the opportunity for the run out in a non-striker's hand. But they just wanted to concentrate over the wicket of Sunil is very important for them. And the bowler came right in front of umpire, so umpire just giving a warning for the bowler not to come to the front. How to avoid that protected zone. The 6 for 1. Rendixon will going to continue second time in this over round the wicket, and umpire just wanted to take a time to make the stumps in a proper position. This is of a quarter line final number 3 in progress. Yesterday, the day number 1, 7th March, the very successful day number 1 for the Planet Air Trophy 2026 season 1. The 90 Warriors are through to the finals and waiting for the one more finalist of this day number 2. The battle is on here, and altogether 4 teams are qualified for quarter final. This is the third quarter final and first quarter final of the day number 2, and it's altogether is the third quarter final of the Planet Air Trophy 2026. Round the wicket right arm to Sunil. This time quite interesting kind of steer there from Sunil. He wanted to go for the reverse sweep, quickly changing his mind, seeing the batter is trying to ball around the legs and outside the line of leg stump. Just went with the strokes, picked up a single. With that single, Skubanda moves on to 7 for 1 in the over number. The second is in progress. It's a very hot sunny afternoon. Time is exactly 2 o'clock. And very difficult condition, but a strong breeze is passing in the middle of the ground and making a slight bit of relax for the ball players. White call by umpire. That ball is going down the leg side too far. Renningston wanted to get that line which is on the midland leg stump, but he misses the line completely. 8 on the board. Wanted to go for the sweep shot and well within the reach of the bat. Now umpire saying that the bowler came right in front of umpire, so umpire asking for the third umpire for that wide review. So how to avoid that follow through when he is coming right in front of umpire. You just need to take a left, not to take a right. After delivering the ball, every bowler have to keep left, not to keep right. And decision which is how to see third umpire.
So ball is wide. The wide decision came from umpire. With that extra score, moves on to 8 on the board. 9 on the board. 9 for 1. Texan balls. Lovely shot. Beautiful improvisation. Sweep shot down to deep square leg boundary for 4 runs. Much required boundary for the team. Ranipura. Just ball is dipping down the leg side. The lovely powerful sweep shot there from Roshan. You know exactly this is the last over of the power play. At least I wanted to get some boundaries in this over. And scoreboard moves on to 13 for a loss of 1 wicket. Last time in this over, right arm over the kitty balls. Oh, this is going to be a no ball, and surely the way he tried to ball, I don't really understand. Renixton bowls a big no ball outside the pitch. Free hit delivery for the batter. The 14 for 1. Suddenly he's got opportunity to take that free hit delivery. Suddenly we're going to try to get one big shot here. Renixton are looking in trouble now. They need to avoid the big shot in this power play, in this free hit delivery. Deep square leg and the long off the fielder in the deep. Round the wicket he balls. Balled him, but nothing much worried about that. And free hit delivery. And the bowler is still appealing for umpire. It's a free hit delivery, isn't it? And just an absence of mind here from the bowler. There's a 14 for 1. Good comeback here by the bowler. Just got that delivery right on the spot. The batter Saril. $15 for 1. Texan searching for the right track, and this is over. Reverse shape, played it straight to the hands of fielder, but quickly going for the single. Overthrow, they grabbing the opportunity and they cannot do the mistake. Both are a very good runner between the wicket. A small mistake they will go into grab. It's 17 for 1. It's not a good piece of fielding there from Paneer. $17 for 1. Round the wicket, right arm. Reverse shape once again. Misjudgment. Once again, the fielding which is not up to the mark. The fielding which is not up to the mark there from Ranipura. Over number 2, which comes to end the big over from the point of view of team Ranipura. After completion of over number 2, it's 19 for 1. Going exactly 9.5 runs per over. 14 runs came from this over. It's a big over from the point of view of team Ranipura. For the next match, I request the players of Bundel as well as team Malapad to be reported here immediately for the signatures. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೊಂದೇಲ್ ಮತ್ತು ಮೇರ್ಲಪದ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. The bowler brought into attack to bowl the third over. Nicely plays it down to long off region for a walkable single. With that single score moves on to 20 for 1.
Arun. Again, very good delivery around the legs of the batter. Sunil just tried to go for the big shot. Now asking for the third umpire for the wide. The second time the umpires going for the third umpire, the field umpire going for the third umpire to give the decision whether it is going to be a wide or not. It's a fair delivery, no wide. 20 on the board, 20 for 1 in the over number. Third is in progress. Arun to continue. Absolutely strong breeze is passing in the middle of the ground. The dust is coming out of the wind. This time appeal for leg before. Chance of run out is gone. And direct hit. Wicket keeper. Absolutely good presence of mind. Unfortunately, Roshan back in the pavilion. The huge wicket. You can see that the wicket keeper did a great job here. Looking for the run out in the cycles and direct hit. No chance for Roshan to survive from that throw. It's 24-2. Arun departs. Roshan departs. Correction. Roshan back in the pavilion. Leston. White call by umpire. The Leston starts with a white. So with that extra score, moves on to 21 for 2. Again, one more single. They're looking for second, and they made it quite easily in the end. And once again, the fielding which is not up to the mark of team Paneer. They're making some extra runs in the form of misfield. Couple of runs, 23. Last time is over. Last 2 minutes left. Arun to continue. Wide outside the line of off time. So many wide deliveries. So many wide deliveries from the bowlers. So this is our on the main stage. Gopi is very, very busy with the watching the today's news, not today's news, yesterday's news. And maybe he's watching what could be the in our sports page. It's very interesting to watch the sports page about today's final, India versus New Zealand.
the World Cup final. Lovely delivery. Appeal for caught behind, but just an excitement rather than the confidence. Over number 3 gone. It's 25 for 2. The still Ranipura is looking in good position. They're going exactly 8.33 runs per over. It's 25 for 2 after completion of over number 3. ಟ್ವೆಂಟಿ 25ಕ್ಕೆ 2 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. Austin brought it attack to bowl the last 4th over of the innings. Outside the line of off stump and wide call by umpire. 1+1, the couple of runs added to total 27 for loss of 2 wicket. Austin 27 for 2, wide +1, the couple of runs. Austin to Sunil. Wanted to go for the reverse sweep, missed it completely. The quicker and faster one there from Austin. Sunil tried to play the reverse sweep but not really get the success. Once again steers the ball down to third man region for a walkable single. So 28 for 2 in the over number 4 is in progress. Straight to the answer field, misfield again for the more short mid wicket. Both the batters completed a quick single, 29 for 2. Lofted over the head of the bowler, good placement, at least a couple of runs. And a good placement and good running way to the wicket. And once again, the runs are coming very freely. And with that couple of runs, Kobana moves on to 31 for loss of 2 wicket. Again, the placement is so good from Sunil. Again, there are couple of runs. Clever cricket from Sunil. He's not a kind of batter who loves to go for the big shot, but he's a kind of batter with a very busy customer. Placing the ball here and there in the gaps and converting single into 2 and 2 into 3. (33) on the board for the loss of 2 wicket. Reverse sweep, lovely shot. Oh, good stop by the fielder. He saved certain boundary. Because Sunil hit that one pretty well right from the middle of the bat. But he will definitely going to frustrate the batter. Good piece of fielding there by the fielder. 4 gone after completion of 4 overs. 34 for 2. Ranipura are still looking good in the middle. 3 overs remaining in their innings, and wait and see how many runs the team Ranipura will going to get. The time to change in voice as well as the language. I request Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो 4 ओवर की समाप्ति, 34 रन बन चुके हैं। पैचवेयर के पहले गेंद को पुल कर दिया खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीम मारेगा बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ
सनील के बल्ले से। और जहां तक सनील का सवाल है, इस वक्त एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए, इस बैटिंग ऑन 18 विद दैट 6 और स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर। 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर शुरू हो चुका है। गेंदबाज विनीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार स्टीयर करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद, चूंकि और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 40 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अगली गेंद इस बार just gone for a mighty heave, not succeeded. Fantastic delivery from the bowler and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज इस वक्त विनीत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को मिड विकेट की दिशा में, इनटू द गैप एज वेल। और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त, और ऐसा कहना पड़ेगा मिड लेग स्टंप पर गेंद थी, थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को साइड पर इस वक्त मोड़ दिया था। खूबसूरती के साथ खाली क्षेत्र चुनते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 44 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 44 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया, लेकिन फील्डर मौजूद डीप मिड विकेट पर। साइड बीट फंबल और बल्लेबाज इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका इन 2 रनों के साथ 46 रनों पर। 46 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर प्रगति यहां पर करता हुआ रानीपुरा, और विनीत अगली गेंद लेकर तैयार। लफ्ट एज टॉप एज, नो वन इन दैट एरिया। और गेंद इस वक्त खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। रुकने में असफल फील्डर लॉन्ग ऑन के, और इस चौके के साथ 50 कम्स अप फॉर रानीपुरा। 50 रन पूर्ण हो चुके हैं। सो 5 overs of their innings is now completed, and after 5 overs they are looking in a commanding situation. It's 52 after 5. सो 6th ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स। 6वां ओवर शुरू होता हुआ पहली गेंद स्वीप करना चाहा इस वक्त, लेकिन गेंद को इस वक्त मोड़ नहीं पाया और गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। डॉट गेंद के साथ गेंदबाज अपनी शुरुआत कर चुके हैं, गेंदबाजी की शुरुआत कर चुके हैं गेंदबाज ऑस्टिन, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। लफ्ट एज फर्मली स्ट्राइक बट स्ट्राइक टू फील्डर एट लॉन्ग ऑन, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 51 रनों पर। 51 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ऑस्टिन गेंदबाजी इस वक्त करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज सुनील के लिए, जो कि एक बेहतरीन पारी यहां पर खेलते हुए सुनील। और ऑस्टिन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट फैंटास्टिकली स्ट्रक, इंप्रोवाइजेशन एंड फाइंड्स द गैप एज वेल। डीप बैक ऑन थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेजने में सफल बल्लेबाज सुनील रिवर्स शॉट के जरिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 55 रनों पर। निश्चित रूप से एक लंबे स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ रानीपुरा, और एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए बल्लेबाज सुनील। 5.2 ओवर का खेल यहां पर पूर्ण हो चुका है, और ऑस्टिन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। Again, reverse shot, fantastically struck. It's gone over the fence at wall of the deep back of the third man for a maximum. What a fantastic batting display continuing here from the batsman Sunil. And the side total is now moving up to 61 with that 6. Fantastically struck came from the bat of the batsman Sunil. Austin. एक बार फिर से टॉप एज इस वक्त है, लेकिन गेंद बिल्कुल फाइन जा चुकी है। बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर, गेंद को नहीं रोकने में असफल। सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 65 on the board. They're heading towards to a huge total now.
He is batting on 41. Sunil batting on 41. That is an absolutely magnificent innings continuing here from him, from Sunil. और इस बीच ऑस्टिन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. Again wanted to play a reverse shot, not succeeded. Not connected that one right from the middle of the bat. दूसरे रन के लिए यहाँ पर दौड़ पड़े. स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और अपने पास स्ट्राइक रखने में सफल. और नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज यहाँ पर रनपुरा यहाँ पर आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हैं. नो बॉल का इशारा. तो जहां तक सवाल है इस वक्त नो बॉल का इशारा इस वक्त हो चुका है. और जहां तक सवाल है रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर. तो नो बॉल को इस वक्त विड्रॉ किया गया है. No ball. So runs added to the total. 66 the score now. और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का 66 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका. निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ. और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज सनिल का, तो सनिल इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 42 रनों पर 8 रन मात्र अपने अर्धशतक से दूर. एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी. सनिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और अंपायर इस वक्त इशारा कर चुके हैं कि दे आर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट. तो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा. ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 6 ओवर की समाप्ति. 6 गॉन एंड आफ्टर 6 ओवर्स इट्स 66. Now just the last over beginning of their innings. और देखना है कि इस बच्चे अंतिम ओवर में बल्लेबाज सनील अपना अर्धशतक पूर्ण कर पाते हैं या नहीं. सनत गेंदबाजी शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए. और इस वक्त पॉइंट पर जो खड़े हुए अंपायर कुछ कहते हुए यहाँ पर खिलाड़ियों से. तो ओवर के पहले गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. सनत गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार. हैरिक्सन जो कि सामना करने के लिए तैयार. 66 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ. फर्स्ट बॉल ऑफ कटर की डिलीवरी. गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर फॉर अ सिंगल. 67 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ एट द स्टार्ट ऑफ द 7th and लास्ट ओवर ऑफ देयर इनिंग्स. 5 balls left in overall calculation in the innings. Sunil back on strike is batting on 42. Can he reach his 50 mark? Just wait and see. 8 runs far from his 50s magical figure. और इस बीच अगले गेंद misses. Good one from the bowler. Beaten और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. अपने दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करने में सफल. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 67 रनों पर. 67 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. गेंदबाज फिर से तैयार. सनील के लिए नो बॉल का इशारा अंपायर का इस वक्त. और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के पक्ष में. गेंद को उछालने के प्रयास में चूके थे और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 68 रनों पर. फ्री हिट डिलीवरी फॉर द बैट्समैन. और देखना है कि सनील इस फ्री हिट डिलीवरी का किस तरह फायदा उठा पाते हैं. सनत अगली गेंद लेकर तैयार. This time misses. Good one from the bowler. Just a single the batsman got. In fact, he wanted to keep the strike and this time is gone. So Sunil keeps the strike. The scoreboard is now moving up to 68 on the board. 69 in fact the score.
69 the score, 43. Sunil is now batting. थर्ड अंपायर के लिए मौका इस वक्त कहा गया है कि बल्लेबाज क्रॉस कर चुके थे या नहीं जब विकेट उखाड़े गए थे, यह देखने के लिए। तो इस बीच गेंदबाज सनत गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए सनील सामना करते हुए lost it. No, in fact it beaten. He remained on 43 now. Now just 2 balls left in their innings. और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज सनत 2 balls left. 2 balls left in this over. और सनील इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सनील के लिए इस वक्त स्क्वायर लेग फील्डर को पीछे भेज दिया गया, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और सनत इस वक्त तैयार। Misses again. Fantastic piece of bowling performance continuing here from Sanat in this over. The scoreboard stays at 69 for the loss of 4 wickets. Last ball of the innings is now coming up. Sanat to Sanil. Misses again. Fantastic delivery and a fantastic over came to an end. Exactly 70 runs scored by Ranipura. Leg bye declared by umpire and Sanil remains on 43, not out at last. 70 exactly scored by Ranipura, and now they set a huge target of 71 in front of Paneer. 71 रन बनाने हैं 7 ओवर में, 7 ओवर्स में पानीर के बल्लेबाजों को 10.14.5 रन प्रति ओवर की औसत से 10 विकेटों की मदद से प्रेजेंट इक्वेशन उनके सामने इस वक्त दिखाई देता हुआ। और देखते हैं इस 71 रन 71 के लक्ष्य तक पानी के बल्लेबाज पहुंच पाते हैं या नहीं। उनकी पारी की शुरुआत हो गया पर एक छोटे सा फिर से अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब पानी की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है ब्रेक का।
Thank you very much, Gopi. And the huge target which is set for the team Paneer. For the team Paneer by the team Ranipura. Thanks to the innings of Sanil, one of the highest individual score of the tournament, which is recorded by Sanil in the big quarter final. 43 runs he scored, unbeaten. And because of his contribution, they are dipping a big total. Nice looking drive, lofted into the deep mid wicket region, but not more than a single. Arun is off the mark with a single. Still long way to go. They have to climb the mountain of runs. And the 71 is always going to be a big ask. And the run rate is always more than 10 runs per over, the required run rate. They have to get some runs in the power play. At least 25 to 30 runs will going to open the gate for the chasing team to win this match. Down the leg side, but couldn't manage to get that one cleanly from the bat. He's got just a little bit bat onto that. And with that single scored Namozan to 2 on the board. Opening batters Avinash and Arun, left and right combination. And wait and see how quickly they are going to get runs in the power play. Lovely delivery, shaping away from the right-hand batsman. An opportunity for the caught behind the wicket. Leston, the bowler, just shaping away from the right-hand batter. And Sanil, the wicket keeper. And just dislodge the blades from the stumps. No damage done, but a very important dot ball. Leston has got a very good start so far from the scouts and guides, and wide outside the line of off-stump. And umpire Satish Moodubidire has got no hesitation to call that wide. With that wide, scope moves on to 3 on the board for no loss. Down the leg side, going to be a delivery which is the batsman completely missed out. Hittable delivery, finishable delivery. When you're chasing a total of 71 to win this match, you're missing this opportunity means no excuse. 3 without loss of any wicket. Leston to continue. Lofted and over the head of the mid-on fielder. Long on fielder will not going to get that one. That was a huge 6. What a shot. This is what needed in the beginning. And the last delivery of the over. The Leston, correction, the batter Arun lofted that one into the deep long on of the bowling of Leston. The high end and some. And with that 6 scored now moves on to 9 after completion of first over. That was a really clean hit there from Arun. Even though he missed out that full toss delivery, but he finished a very good delivery. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಮೇರ್ಲಪದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಬೋಂದೇಲ್, ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಮೇರ್ಲಪದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡೌನ್ ದ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೈಡ್ ದ ಬೋನಸ್ ರನ್. Sanil himself came into attack after he's contributed huge runs from his bat. 43 unbeaten. Now he's coming to ball right hand around the wicket, deflected from the leg of the batter. Appeal for run out. Umpire says not out. Leg by call by umpire. With the Texas Coburn moves on to 11 without loss of any wicket.
Sunil to continue dot delivery, and Arun, the very important player for the side of team Paneer, have to get some big shot. Again, lovely delivery from Sunil. Oh, that defeats everyone. That's defeat everyone by call by umpire. Defeats a fine wicket keeper, and the third man is in a position not in the fine leg, and it's too late for the fielder to cut it off. The by 4, the bonus run for the team Paneer. They're not really bothered about how the runs are coming, but they desperately required some runs in the power play over. 15 on the board for no loss. Frustration for the bowler, even though he defeats the bat of the batter, but a boundary which is conceded in the form of by Sunil. Right arm over the wicket, he balls far away outside the line of off stump, and white call by umpire with that extra score. But moves on to 16 on the board for no loss. Sunil. This time lofted, a chance for the long feed of field. Oh my goodness, a total misjudgment. And a couple of runs completed before the fielder will go into run back. It's not an easy catch to come to the position quickly. Last couple of deliveries left in this over. 18 without loss of any wicket. Arun know exactly this is the last over of the power play. They have to get at least 25 to 30 runs. Change of pace, slower one, lovely, intelligent bowling there from Sunil. Last ball remaining. I told a couple of deliveries left in the previous over, and 2 wides. Last ball remaining. (18 on the board). Last ball remaining in this over. Bowled him, cleaned him up around the legs, exposed the stumps. Arun pays the penalty for that. Sunil, absolutely what we are talking about. The last ball is become the lucky delivery for Sunil as he uprooted the leg stump of Arun. The wicket number 2 gone. It's a big wicket. The back in the hut. 17 for 2 after completion of over number 2. Rentexon as the new batter in. Change in bowling after the power play. The power play, I think both the teams has got the start in the power play. 17 in 2 and a wicket for Sunil in the second over. The bowler brought into attack to bowl the third over. Sam. The starts with the dot 1, but line is just outside the line of leg stump. Always handy for left-hand batters. The condition very suitable for the left-hand batters. They can get some runs in their favorite area, the onside region. The wind which is flowing in the same direction. That's why I told it's the big missing that line, which is a finishable delivery, finishable line. Sam second time is over. Left arm over the wicket, swept it nicely into the short mid wicket region. Fumble from the fielder, grabbing the opportunity to come back for the second with that couple of runs. But the moves on to 20 on the board for the loss of 1 wicket.
Beautifully balled. Perfect one. And he just wanted to go for the expansive drive. And you miss high it. Avinash departs. Wicket number 2 gone. It's 24-20 for the loss of 2 wickets. The team are looking in trouble now, Paneer. Still long way to go. 51 more runs required for the victory. 51 needed from 33 deliveries. 27 deliveries, in fact, 7 overs match. G1. Sam to continue. Left arm over the wicket. Balls outside the line of off stump and going to be a one more wide. Extras was really helping the team to get in, moving, get moving. 21 for 2. Outside the line of off stump. Lovely delivery. The G1. Balls down the leg side, going to be a punishable from the umpire. They're looking for the couple again. This has been a definitely the bonus run. Wide plus couple of runs, 3 wides and 3 valuable runs. Score moves on to 24 on the board. 24. Again outside the line of off stump and good comeback by Sam. Dot delivery. Last time in this over, Sam continues to G1. Our ball is almost close to the leg stump. Looking for the run and Sunil looking for the direct hit. Over number 3 gone after completion of over number 3. Chasing 71 to win this match is 24 for loss of 2 wicket. 24 for the loss of 2 wicket. Another 4 overs remaining. They needed another 47 runs to win this match. 47 needed in remaining 4 overs. Almost 12 runs per over are required under the big ask. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೇರ್ಲಪದವು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇರ್ಲಪದವು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬೊಂದೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೇರ್ಲಪದವು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. So meantime, change in voice. I request Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. धन्यवाद सतीश. तो इस वक्त 47 रनों का स्कोर और चाहिए बचे हुए 4 ओवर में और इस बीच 1 रन का इजाफा. निशाना चूका इस वक्त. निश्चित रूप से आक्रामक बल्लेबाज यहाँ पर अपनानी ही होगी. यहाँ पर पानीर के बल्लेबाजों को 24 गेंदे 23 गेंदे अब बाकी 46 रन चाहिए. 12 रन पर ओवर. दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री और 2 बॉल 2 रन पर बॉल. इन फैक्ट दे नीडेड फॉर विक्ट्री. और गेंदबाज इस बार पैरों पर गेंद टकराई. रन बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे. डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. हैरिक्सन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जीवन सपना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. इस बार बेहतर गेंद इस वक्त शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में. थ्रो पहुंचा. विकेट भी जरूर चटका लेकिन बल्लेबाज इससे पहले क्रीज पर वापस लौट चुके थे और सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए. चौके और छक्के इस वक्त लगाने ही होंगे बल्लेबाजों को पानीर के इस मैच में कमबैक करने के लिए.
और गेंदबाज हरिक्सन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार। यह गेंद उछालना चाहा, गेंद स्लिप पॉइंट पर पहुंची, रन बल्लेबाज को मिलेंगे एक। 1 run added to the total. 26 on the board for losing 2 wicket. Runs are coming still in singles now for Paneer. They need a couple of boundary or 6 at this stage to get back into this match. और हरिक्सन अगली गेंद लेकर तैयार रन टेक्शन के लिए। Of that chipped away off the toes down to a deep mid wicket, but protection out there, just a single he got. और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका, कुल मिलाकर 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। बोथ ओपनर्स ऑलरेडी बैक इनटू द पवेलियन, बोथ विकेट वेंट इनटू द अकाउंट ऑफ सनिल। और हरिक्सन जीवन के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ऑफ सबसे बाहर की ओर गेंद निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड किस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। हरिक्सन अगली गेंद लेकर तैयार। Just gone for a loft, not succeeded. In fact, he's got a single for that stroke, mid-on fielder after it. And with that single run, the scoreboard moving up to 29 for the loss of 2 wicket in the over number 5. 4 has been kept in. 4 gone, 29 for 2. Still the batsmen of Paneer searching for the right track. फिफ्थ स्टार्ट्स इन पानीर इनिंग्स, और पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। 18 गेंदें बाकी, और इस बार गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंचती हुई, लेकिन गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार नहीं कर चुकी है। गेंद को दोबारा रोका गया है इस वक्त दूसरे फील्डर द्वारा, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। नाउ एग्जैक्टली 40 रन रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 17 deliveries. Just gone for a mighty him, not succeeded. Gone for a quick single, direct hit, लेकिन बल्लेबाज यहाँ पर क्रीज पर पहुंच चुके। 1 रन का इजाफा, 1 run added to their total. Scoreboard moving up to 32 for the loss of 2 wickets now in the over number 5 in progress. 16 balls left, 39 runs more required. दोपहर का वक्त लगभग दोपहर के 3 बजते हुए 2:50 अगर सही तरह से कहा जाए अब वक्त है। और इस वक्त ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, प्लम्ब इन फ्रंट गोजित, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। पगबाधा यानी लेग बिफोर विकेट इस वक्त घोषित किए गए, और निर्णायक मौके पर पानीर एक और विकेट खो चुका। 1 more wicket fallen, they are looking deep in trouble now. It's 32 for 3. इस बार शॉट थर्ड मैन पर डायरेक्ट हिट, 1 more wicket fallen in the face of run out.
धीरे नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ इस वक्त पनीर के बल्लेबाजों के सामने। चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त कमबैक करने के लिए उनके बल्लेबाजों को। फिलहाल तख्ता इस वक्त रानीपुरा का भारी दिखाई देता हुआ और गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए धीरेन के लिए। इस बार उछाला लॉन्ग ऑफ पर सिर्फ एकमात्र रन मिलेगा। 1 run added to the total. 33 on the board. In fact, they come back for the second and they get it comfortably at last. 35 now the score. 36 more now they have to score for victory. 34 in fact. 13 balls left and 37 runs required. इस बीच गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट पर into the gap as well. 1 run completed. Come back for the second. Good throw and this time I think is gone. Straight over the stumps throw आया था, हालांकि थोड़ा सा ऊंचा जरूर है लेकिन अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को गैदर करने में सफल इस वक्त विकेट कीपर और तेजी के साथ विकेटों पर गेंद लगाते हुए बिल से उड़ाते हुए और रन आउट के रूप में एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. 1 more wicket fallen. 5th wicket down. It's 35 for 6. 35 for 5 in fact. So 5 overs completed, 2 overs left and 36 to get from remaining last 2 overs. That means in remaining 12 deliveries. 18 रन प्रति ओवर के औसत से रन इस वक्त बनाने 36 बचे हुए 2 ओवर में, यानी 12 गेंदों पर पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका इस एक रन के साथ 36 रनों पर. 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. और गेंदबाज दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद उछालना चाहा, शॉट थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ लेग बाय का इशारा. स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 37 रनों पर. 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. 11 balls left. 34 runs required. सिर्फ चौके और छक्के इस मैच में अब पनीर को वापस ला सकते हैं. इस बार just gone for a mighty heave, not succeeded. Collected by wicketkeeper behind the stumps. 1 more dot delivery. 10 balls left. 34 runs required. धीरे धीरे ये मैच पनीर के हाथों से फिसलता नजर आता हुआ. इस बार गेंद को खेल दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में और ये विकेट यहाँ पर बच चुका है. 1 रन का इजाफा. जोखिम भरा रन दोनों बल्लेबाज पूर्ण करते हुए और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 द स्कोर. अगली गेंद 1 रन का इजाफा. 39. 1 more delivery bowled. बाई का इशारा और गेंदबाज सनील लेग स्टंप पर आती हुई गेंद यहाँ पर फिसल कर गिर पड़े अंतिम क्षण में, लेकिन 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल. 1 more run added to the total. 40 on the board. 1 ball left. 7 balls left. 31 runs required. Just gone for a mighty, not succeeded. Good spell came through in from Sanil. 6 overs completed. 40 on the board. 4 wickets lost and now last over remaining. 31 runs to get from last over. That means in remaining 6 deliveries.
जस्मिन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं. द फर्स्ट बॉल ऑफ हिज फ्रेश ओवर इज नाउ कमिंग अप. फर्स्ट बॉल. I request the captains of Malapad as well as Bundel, please report in front of the stage immediately for the toss procedure. Ball too high at delivery, and also a wicket lost. No ball called by umpire, and one more wicket fallen. 1 run added. 42 now. 41 in fact. Exactly 30 runs required. New batsman Sanat is now is at the crease. 5 sixes required in the five remaining deliveries. Free hit delivery of Sabse Bahar, and this time is gone. One more wicket fallen. Now 5 balls left, 29 runs required. St. Lawrence Bundel, after one toss, they elected to field first in the next match against Malapad. So 6 balls left, 29 runs to get. Free hit continue for the batsman. Six balls, 29 runs required. Praveen, the new man, is now comes out in the middle. The score is 42 for the loss of 7 wickets. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರೋ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಆಟಗಾರರು. Lofted mid wicket into the gap. 1 run completed. Come back for the second and get it comfortably. 2 runs added now. 27 to get from 5 balls. 44 the score now. Five balls left, 27 runs required. और गेंदबाज जसविन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाह. Not connected that one properly. In fact, they completed a single and come back for the second run. 46 leg by declared by umpire, and now 4 balls left, 25 runs required. Last chance in front of the batsmen. 4 sixes required for tie in remaining last 4 deliveries. Driven down to mid wicket just for a single. 47. 3 balls, 24 runs required. जसविन अगली गेंद लेकर तैयार. लेग स्टंप से बाहर. Wide. 48 now. In fact, they gone through for a single and get it comfortably. 49 the score. Wide declared by umpire. 3 balls remaining, 22 runs required. Joswin comes. Wanted to play reverse shot, not succeeded. और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. डॉट गेंद, 2 गेंदें बाकी. 22 रन चाहिए. सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गया. Only formalities now remaining in this match. Driven down to Langon for a single. 50 comes up for Paneer, but there is no celebration. Now just 1 ball left. 21 to get from last ball, and the last ball of the match is now coming up. That's it. 20 runs, exactly 20 runs victory for Ranipura against Paneer, and with that 20 runs, a comprehensive big margin victory. Ranipura are through to the semi-final of this competition, defeating Paneer in the third quarter-final
And now the fourth and the last quarter final is now going to play between Bundel versus Malapad. That match is available exclusively right after the short break. Now the match sudden again winner match because of the fantastic number of 43 also he bowled very well in his 2 overs quota economically because of this already performance. Sunil of Ranipura again winner the match. शॉट पे करेक्शन करने के बाद हिंदी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब अगला मैच नंबर 6 शुरू होगा बुंदेल और मलपद के दरमियान. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, Kobe, and welcome to the last quarter final of the prestigious Planet Air Trophy 2026 Season 1, which is proudly presented by Planet Air Travels with the slogan of fueling our mission to help the needy. And Bundel captain winning the toss, elected to ball first. Opening batters are ready. The opening bowler is also ready. Umpires ready. Suresh Moodubidire and umpire Shriraj Kumpala. And here everything is ready for the first ball. Winning toss, selected to ball first. The first ball. Right arm over the kitty balls. This time up and over, down to deep extra cover region, deep cover point region in fact, and before the fielder from deep extra cover region to run across his left to field the ball. And ample time for the batter to complete the couple of runs. So good start, a positive start there from Royston. Royston is up the mark with a couple of runs, 2 without loss of any wicket.
Avil and outside the line of leg stump. Avil just try to get the ball around the midland leg stump, but he misses the line. Umpire will not going to miss the opportunity to call that wide. 3 without loss of any wicket in the over number. First is in progress. And he bounced the stump outside the bat away from the hands of a wicket keeper, but there is a fielder at short. Third man is very fine, so no chance of any run. And score remains on 3 without loss of any wicket. 2 correction. 3 on the board, and one more lovely delivery there from the bowler Avil, and the score remains on 3 on the board without loss of any wicket. Avil to Royston, again edging it down to third man region. This time they're going to get a single for that, and with that single Skubanda moves on to 4 on the board without loss of any wicket. Anil facing his first delivery of this power play over. Avil, 5th time in this over. Avil to Anil. The power play number 1 is in progress. Try to get the ball on the onside region. They're going for the run. Chance of run out. It's a slider. Now. Umpire will going to look out what really happened here. It's from the hands. The wicket keeper missing this golden opportunity. Absolutely missing the golden opportunity. Royston is really lucky indeed. What could be a certain run out because of wicket keepers a little bit shown this urgency, and the pays the penalty for that wonderful opportunity for the team Bundel to get the big wicket of Royston, which is gone in vain. Five without loss of any wicket. Royston already given up after saying that is very difficult for him to survive from that run out, but luck is favouring him. Avil to Royston. Appeal for leg before wicket, but the ball almost missing leg stump. No strokes offered. Misjudgment from Royston. Excellent start there from Avil. And after completion of first over, searching for the right track, team Malapad are 5 without loss of any wicket. A good start there from opening bowler Avil, justifying the addition of their captain to come and bowl, and winning the toss, selected to bowl first. Gilchrist brought into attack to bowl the second over. Anil to face Gilchrist, setting a field set. 2 fielders outside the circle in the deep in the onside region. Long on and mid wicket. Short mid wicket, short square leg, short fine leg. There is a cover point and extra cover and mid off. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Starts with a big wide. It takes its own time to set a field, but he bowled the wide. 6 on the board without loss of any wicket. The last quarter final of Planet Air Trophy. Lovely shot, but protection is there in the deep in the mid wicket. Looking for second. Royston very quick between the wicket, but for Anil it's so easy for him to come back for the second, and with that couple of runs, Kobanda moves on to 8 for no loss. The over number second is in progress. Oh, lovely delivery, beautifully bowled there by Gilchrist, again shaping away from the right-handed batsman. They could come back here by the bowler. Gilchrist away from us, balls to Anil.
Lofted into the extra cover region. Fielder won't get that one. Just running back. And looking for second but asking for trouble. Just a single. Good running. A good fielding, in fact, from the fielder at extra cover. Quickly running to his back. Saving the runs for his team. And 9 without loss of any wicket in the over. Number second is in progress. Drives that one down to backup point region. One more single. With that single, Scoberta moves on to double figure 10 without loss of any wicket. Both the teams played a very good game of cricket in the first match. Malapad defeated Team Japu. Sebastian defeated, of course, Bundel defeated Saint Sebastian in their first round match. Again, outside of the bat. Direct hit and it's gone. Royston. This time he is not lucky. The first time he is lucky, but this time the fielder is just thinking about hit the stump, not to look for anything else, but it's a direct hit. And he's not in the picture. Royston gone. The big wicket for the team Bondel. It's 10 for 1. Not a good running with the wicket. There will be a single if you run quickly for that. Two deliveries left. Last ball remaining in this over. Rajesh Fernandez, the new batter, with the jersey number 55. Gilchrist, final time in this over. Balls down the leg side. Wide call by umpire. One more extra. It's 11 for 1. Going for on drive. Leg by call by umpire. With that leg by Scoberta moves on to 12 for 1. Over number 2 gone. The Malapad are searching for the right track. Going exactly 6 runs per over. It's 12 for 1. So power play over which is comes to an end, and after the power play the spread out field set, and 5 fielders outside the circle, deep bucket point, deep cover point, no one there in the long off, and extra cover. There's a fielder down at deep long on in mid wicket and deep square leg. The first ball starts with the warm up delivery of the afternoon. Bowler brought into attack to bowl the third over. Joel. Again, the second wide of this over is really struggling. It starts with a couple of wide deliveries, 14 on the board. Very important runs are coming here for the team. Malapad not really able to get the runs in the power play. But in this particular over, they've already got 2 extra runs. Joel had to concentrate to the line. This time deflected from the leg of the batter. So that leg by call by umpire. With that leg by Scoberta moves on to 15 for 1.
Anil to continue. Outside the line of off temper, well within the reach of the batter. Missed it dive by the wicket keeper behind the stump. No run scored. Good comeback here from Joel after that. Two wide deliveries in the beginning. Short pitch delivery, played it across the line down to long on region for a single. With that single, scored Namuzan to 16 on the board for 1 in the over. Number 3rd is in progress. Fourth time in this over. Wide outside the line of off temper. 3rd wide of this over. All we can see that runs are coming in the form of extras in this over. 17 on the board for the loss of 1 wicket. Lofted nicely into the deep extra cover, and a lovely piece of fielding there by the fielder in the deep in the extra cover region. The couple of runs completed. Good work done by the fielder in the deep. And the batter Rajesh played it with the direction of the wind in the gap. Couple of runs with that couple of runs. Koban moves on to 19 for 1. Outside the line of off stump, and appeal for stumped out is gone. Rajesh back in the pavilion. Good work done by the wicketkeeper behind the stump. Just waiting for the opportunity when the batter will go into out of the crease. Just have a look at the replay. He collected in the first attempt. Second attempt. That time I think the back foot is absolutely out of the crease. Good work done by the wicketkeeper behind the stump. Over number 3. This is a prolonged over. Runs which came, but even 1 wicket is also back in the pavilion. It's 19 for 2. So new batter Prajwal walking towards the middle. Team Malapad really struggled to get the partnership what they're really looking for in this over. They got so many wide deliveries, 3 wides in this over already, but nothing much worried about that. Wide, they bowled well after that. Prajwal to face. Beautifully bowled, perfect one in the relegation to finish the over number 3, excluding 3 wides in this over. But still, Joel managed to put some break on the run rate. 7 runs came from this over. After completion of over number 3, it's 19 for 2. Three gone, it's 19 for 2. Last over remaining. Last 4 overs remaining in the innings. Anil will going to take the strike. Anil to face. Went for the big one, missed it completely. Oh, that might be the absolutely one of the blow which is for the wicket keeper. It was absolutely bad blow. Nasty one for the wicket keeper. And it's 19 for 2. Catch it is a call, and again landed it safely. And the mid-off fielder couldn't manage to reach the catch. Mistimed lofted drive there from Anil. Just a single. With that single, score moves on to 20 for the loss of 2 wicket in the over. Number 4 is in progress. Gilchrist has been outstanding in his bowling in the so far in this tournament. We are talking about he's been outstanding in the bowling, but this time he's bowled far outside the line of leg stump. 1+1. The couple of bonus runs. So many extras conceded by Bundel. The bowlers need to be very, very disciplined. The runs we can see there 22, but in that 22 the big contribution from the extra 24 on the board, correction. In that 24 runs, a lot of extras they conceded.
Big contribution from the extra. Swings and miss. Lovely delivery. Just outside the line of off stump. Good enough to defeat the bat of the batter. Good comeback from Gilchrist. After that wide, he just concentrated over the line. This time catch it is called. This time mid fielder will go. Oh my goodness, he drops it. And the wicket is back in the form of run out. Drop catch. But Prajwal is very unlucky. Anil is lucky, but Prajwal is unlucky. So really, it's a big wicket for the team Bundel. Even they lost the wicket of Anil in the catch, but drop catch which is made Prajwal to back in the pavilion. It's 25 for 3. New batter in. One more Rajesh. Rajesh D'Souza. Couple of deliveries remaining in this over. 25 is the score of team Malapad. Gilchrist to Anil. This time a little bit shuffled across the line after delivery. By call by umpire. One more extra. With that extra score, but moves on to 26 for the loss of 3 wicket. The batsman shuffled a little bit outside the line of off stump, and Gilchrist quite deliberately bowled that one away from the batter. The last time in this over. Nicely played down to mid-wicket vision. They wanted to come back for the second, but Anil is not interested. And Rajesh will going to take of course retains the strikes. 4 gone after completion of 4 overs. It's 27 for loss of 3 wicket team Malapad, and they needed another 3 overs remaining in their innings. And wait and see how many runs they will going to score in the remaining 3 overs. And before the next over will going to start here, it's a time to change in voice. The time for Gopi to take over the microphone. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद एसटीएसी मरलापद इस वक्त जोड़ चुका है 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और 5वां ओवर लेकर गेविन इस वक्त तैयार। पहली गेंद इस बार टप एज गेंद होती हुई गेंद पहुंच चुके वाइड स्लॉन्ग ऑन पर मिस जजमेंट, और गेंद सी मारेगा जब बाहर 4 रनों के लिए। एब्सोल्युटली मिस जजमेंट मेड बाय द लॉन्ग ऑन फील्डर, और अंतिम क्षण में गेंद उनके आगे टिप्पा खाई और उनके सिर के ऊपर से गुजरते हुए काफी ज्यादा उछाल बाउंस लेते हुए सीमा रेखा को पार कर गए 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर। गेविन पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त कर चुके हैं ऑलराउंडिंग प्रदर्शन के लिए, और इस वक्त अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार था। यहाँ तो उभरता विकेट, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए राजेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को उछालना चाहा, वाइड का इशारा, और वाइड के इस वक्त जहाँ तक सवाल है तो रिव्यू इस वक्त लिया गया है, और फिर गेंदबाज द्वारा इस वक्त रिव्यू लिया गया है। देखते हैं यहाँ पर इस बॉलर्स रिव्यू का क्या नतीजा निकलता है, तीसरे अंपायर क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। तो बॉलर्स रिव्यू इस वक्त लिया गया है, और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट प्लैनेट एंड ट्रॉफी 2026 सीजन 1 के तहत यहाँ पर खेला जाता हुआ प्लैनेट एंड ट्रैवल्स की शानदार प्रस्तुति है। ये प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला फ्यूलिंग अवर मिशन टू हेल्प द न्यूडी इस
ध्येय वाक्य के साथ, इस स्लोगन के साथ ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए फ्यूलिंग अवर मिशन टू हेल्प द नीडी, इस ध्येय वाक्य के साथ ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो इस वक्त रिव्यू हुआ रंग लाता हुआ गेंदबाज का और कोई भी रन उनके खाते में जोड़ा नहीं जाएगा। इसको बोस्टर इज 31 नाउ। अगली गेंद हल्के से गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड विकेट पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर, 32 रनों पर 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो जैसे कि मैं फरमा रहा था इस वक्त एक बेहतर साझेदारी की जरूरत है लेग स्टंप से बाहर। इस बार वाइड का इशारा अंपायर का और रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर। अगली गेंद ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन पर, मिड ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। अगली गेंद इस बार जस्ट गॉन फॉर अ माइटी, ही हैव नॉट सक्सीडेड एट द लास्ट मोमेंट, द बॉल मिसिंग जस्ट साथ ही ऑफ स्टंप और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा तो गेविन धीरे धीरे अपने सही लय रिदम को यहां पर प्राप्त करते हुए और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट। अंतिम गेंद इस ओवर की, यह गेंद बेहतर गेंद थी, एक बार फिर से चूके परिवर्तन के तौर पर धीमी ऑफ कटर गेंद थी और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति हो चुकी है। 5 overs completed and after completion of 5 overs still struggling time continuing here for the batsmen of Malapad, 34 for the loss of 3 wicket and now just 2 overs left in overall calculation in their innings. प्लैनेटरी ट्रॉफी 2026 सीजन का प्लैनेटरी ट्रैवल्स की शानदार प्रस्तुति है, जैसे कि मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं। फ्यूलिंग अवर मिशन टू हेल्प द नीडी, इस ध्येय वाक्य के साथ ये श्रृंखला टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति करते हुए और छठा ओवर शुरू होता हुआ। 6th ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स। अविल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, बेहतर फील्डिंग इस वक्त, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्टॉप मेड बाय द शॉट फाइन लेग फील्डर, जस्ट डाइविंग टुवर्ड्स टू हिज लेफ्ट साइड टू स्टॉप द बॉल just inside the 20-yard circle and this is an absolutely fantastic fielding made by the short fine leg fielder. 1 रन का इजाफा, 1 run added to the total. Scoreboard moving up to 35 for the loss of 3 wicket. अविल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा, दाहिने हाथों पर द विकेट, स्वीप कर दिया इस वक्त, डीप स्क्वायर की दिशा में गेंद जाते हुए खूबसूरती के साथ गेंद का पीछा करते फील्डर गेंद को रोकने में सफल, सीमा रेखा के अंदर रहा और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और जहां तक सवाल है बल्लेबाज का, राजेश के बल्ले से 2 रन इस वक्त जुड़ चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर, 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। अविल अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद लेग स्टंप से बाहर रहा और इस बार विकेट कीपर अपील करते हुए यहां पर 1 रन यहां पर पूर्ण जरूर कर चुके हैं बल्लेबाज और अंपायर के लिए इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है कि ये स्टंप है या नहीं, ये परखने के लिए। तो स्टंप आउट किया है विकेट कीपर ने या नहीं, ये देखने के लिए इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग को सौंपी गई है और देखते हैं इस वक्त तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं। तो वाइड के लिए भी तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग किया गया है। बॉलर्स रिव्यू, बैट्समैन रिव्यू।
No doubt is the call and the fair delivery from द बॉलर। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त बल्लेबाज का रिव्यू इस वक्त व्यर्थ हो चुका है, तो एक रन उनके खाते में जुड़ चुका है और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 38 रनों पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ, द लास्ट क्वार्टर फाइनल, फोर्थ लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच, and the sixth match of the pool B is now progressing here between Bundel versus Malapad। और गेंदबाज अविल, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार। यह गेंद उछाला इस वक्त, जस्ट क्लियरिंग द मिड ऑफ फील्डर। ही हैज गॉट अ हैंड आउट टू दैट एट द लास्ट मोमेंट, बट द बॉल वाज फ्लिक्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स। और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। थोड़ा सा मुश्किल मौका जरूर था, लेकिन आखिरकार गेंद उनके हाथों को चीरती हुई निकल गई इस वक्त मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ पर। 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 40 रन, 40 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। अविल फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Lofted down to long on, but not more than a single. In fact, they're looking for the second and they come back for the second. इस बार रनआउट का खतरा, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचा, विकेट उखाड़े गए, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज तेज बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 42 रनों पर। इट्स 42 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। सो गुड फोर्थ विकेट पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप हियर बिटवीन अनिल एंड राजेश। और राजेश नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, अनिल एक बेहतरीन बल्लेबाज अपनी टीम के लिए खेलते हुए। अनिल इज नाउ बैटिंग ऑन 13, सेंसिबल नॉक कमिंग फ्रॉम हिम। और उनका अच्छा साथ निभाते हुए राजेश 6 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाज, 8 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए राजेश इज बैटिंग ऑन 8। और इस बीच गेंद डिफ्लेक्ट होकर निकल चुकी है फाइन लेग की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट सिंगल ही गॉट, लेग बाय का इशारा। लेग बाय के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 43 रनों पर। इट्स 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 हैज बीन केम्स टू एन एंड। Six overs completed and it's 43 for the loss of 3 wickets and now just a last over remaining in the innings. ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೈನ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So the last over starts from the far end. संतोष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, अंतिम ओवर शुरू होता हुआ। Lofted this time I think is taken inside the fence brilliantly by the fielder प्रशांत। और जो फील्डर खड़े हुए थे प्रशांत, जिन्होंने बेहतरीन जजमेंट के साथ इस कैच को लपका, हालांकि उन्हें अपने बाईं ओर दौड़ना जरूर पड़ा, लेकिन एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकते हुए प्रशांत। और प्रशांत की इस बेहतरीन कैच की बदौलत एक और विकेट गिर चुकी है। लंबी पारी समाप्त हो चुकी है अनिल की। इज आउट फॉर 13 एंड 5th विकेट लॉस्ट। इनफैक्ट इट्स 4th विकेट लॉस्ट। इनफैक्ट इट्स 43 for 4। 5 balls left in overall calculation in the innings। और गेंदबाज इस वक्त तैयार। रोबिन नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त सामना करते हुए संतोष की गेंदों का। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी। ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क, दिस इज एन एब्सोल्यूट आउटस्टैंडिंग वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। और इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। रोबिन अपनी पहली गेंद पर गोल्डन टक के रूप में आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए एक बेहतरीन स्टंपिंग विकेट के पर विकेटों के पीछे करते हुए एक और विकेट गिर चुका है। 5th विकेट डाउन एंड नाउ द स्कोर स्टेज एट 43 for 5। तो 2 गेंदों पर 2 विकेटें संतोष प्राप्त कर चुके हैं। हैट्रिक का सुनहरा मौका कर रहा है संतोष
अपना हैट्रिक परिपूर्ण करते हैं तो 1000 रुपये का नगद पुरस्कार सुल्तान इनकी ओर से घोषित किया गया है गेंदबाज संतोष के लिए, और देख रहे हैं कि वो अपना हैट्रिक पूरा कर पाते हैं या नहीं। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट बल्लेबाज ऑस्टिन जो कि सामना करते हुए। हैट्रिक बॉल कम्स फ्रॉम संतोष, दाहिने हाथ round the wicket, drifting down the leg side, wide declared by umpire. A couple of runs added to the total in the face of wides, wide, and with a couple run the scoreboard moving up to 45 for the loss of 5 wickets. तो इस वक्त संतोष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, और सामना करने के लिए इस वक्त राजेश। लफ्ट इट डाउन टू लॉन्ग ऑन बट जस्ट अ सिंगल ही गॉट, सिर्फ एक मात्र रन मिलेगा यहां पर। बेहतर रिटर्न इस वक्त लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा। 46 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 3 balls left now in overall calculation in the innings। 3 गेंदें सिर्फ बाकी, और संतोष गेंदबाजी करेंगे इस वक्त ऑस्टिन के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। Lost at this time, deep mid wicket. Now in fact it's gone over the fence after beating the fielder. This is an outstanding strike. जरूर मौका था इस वक्त डीप मिड विकेट फील्डर के पास, लेकिन छलांग लगाने के बावजूद गेंद को लपक नहीं पाया। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, रिप्ले पर दिखाया गया, और इस छक्के के साथ 50 comes up for Malapad. 52 now the score. Now just 2 balls left in overall calculation in their innings. What a fantastic struck in from the bat of Austin. संतोष इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, और यह विकेट यहां पर गिर चुका है। 1 more wicket fall on, 6th wicket down, and now just a last ball remaining in their innings. So Austin has to go, and the 6th wicket down. It's 52 for 6 with just 1 ball left in their innings. So the last ball of the innings is now coming up. प्रशांत सामना करते हुए उनकी पारी के अंतिम गेंद का। संतोष की गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को उछाला मिड विकेट फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन पर प्रशांत का थ्रो पहुंचता हुआ, लेकिन इससे पहले की थ्रो पहुंचे बल्लेबाज 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं, 2 रन पूर्ण कर चुके हैं, और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप एंड HJC Malapad finished with the 54 for the loss of 6 wickets in the stipulated 7 overs. And now the target for Bundel is 55. They have to score just under 8 runs per hour. They have to score for victory. That means in exactly calculation, it's going to be 7.87.5 runs per hour. They have to score for victory. 55 out of their 7 overs. That means they stipulated 42 deliveries. They have to score with the required run rate of exactly 7.87.5 runs per hour. And the innings now going to start within just short while. तो बुंदेल की पारी की शुरुआत होगी। 55 रनों का लक्ष्य निर्धारित 7 ओवर्स में इस वक्त बनाने 10 विकेटों की मदद से बुंदेल के सामने, और देखना है कि बुंदेल के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं। फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर बुंदेल की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. So the 55 is a target for the team Bundel to qualify for the semi-final. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Rajesh Fernandez will going to start the proceedings from the far end. The first ball and the power play number 1. Avil will going to take the strike, and here comes the first ball. Right above the wicket, along the carpet, the good line there from Avil to start with, and Avil correction got his first run, and Rajesh starts with a good delivery just around outside the line of off stump, and target which is 55. It's a very good target which is set by Malapad for the team Bundel St. Lawrence. Second time in this over. Nice looking drive, driven down to deep, extra coverage and protection there in the deep, so that batter have to settle for a single. With that single, both the batters are off the mark with the singles respectively. Gilchrist is off the mark, 2 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Third time in this over. Lovely reverse save, played it very nicely in the deep third man region. Fielder behind the ball, 2 fielder behind the ball, and one of the fielder has got footwork to stop the ball, and before the throw will going to come to the hands of a bowler, wicketkeeper. In fact, 3 valuable runs they completed. A lovely reverse sweep there from Avil, and with that 3 valuable runs covered, moves on to 5 on the board for no loss. And this is what required in the beginning for the team Bundel if they wanted to get that 55 to win this match. Needed some runs in the power play overs. Down the leg side, reaching for the delivery wide outside the leg stump, and the Gilchrist will going to come back for the second, and a chance of run out, but he made it. Even though Gilchrist is not really looks like he's fit enough, but still he managed to complete that couple of runs. With that couple of runs covered, moves on to 7 for no loss. Rajesh, beautiful ball from Rajesh coming into the batter, nip back, and Gilchrist, the technique is not good enough for him to get the ball into his bat. Lovely delivery, just have a look at the replay, coming into the batter, and he misses a line and drags it into the stump, uprooted the leg stump of Gilchrist. Wicket number first gone. It's 7 for 1 Bundel. Rajesh has got a vital breakthrough for his team. The new batter walking towards the middle, Prashant. Slight a bit of changes in the field. That short extra of fielder been replaced by the fielder from the shortman wicket. Rajesh bowls. Lofted, lovely shot into the mid wicket region. One bounce into the fence for 4 runs. It's a 6 on the boundary. Just wait for the umpire decision whether the ball is landed inside the line or outside the line. An umpire have to check. The umpire will go into ask for the third umpire. He's been asked to check the boundary.
whether it's a 6 or a boundary. The umpire Satish Moodubidire in our commentary box will going to watch whether it's going to be a 6 or boundary. Line will go in checked by the third umpire. It's a boundary. 4 runs for Prashant. And very good beginning here from Prashant as he played confidently. It's 11 came from the first over and a good start, positive start from Bundel St. Lawrence batters. Prashant has got an important boundary in the last delivery of the over of the previous over. The second over going to start. Roshan brought into attack to bowl the second over. And Avil will going to take the strike. 11 for 1. Roshan to Avil. This time nicely bowled. Beautiful delivery. Along the carpet coming into the batter. Avil tries that one down to extra cover region for a single. With that single score, moves on to 12 on the board. Nice looking drive, and it just split the fielder, extra cover and cover. And before Anil will go and run back to extra coverage and couple of runs, which is completed with a couple of runs. But moves on to 14 for the loss of 1 wicket. Here comes next bowler, Prashant Baul. Prashant this time wanted to go for the big one. Appeal for leg before wicket, hitting him outside the line of off stump. In fact, leg by call by umpire with that leg by score, but moves on to 15 for 1. Good bowling so far there from Roshan, keeping that very good line and length. Another 40 more runs required for the victory. The 33 deliveries remaining. The 40 more runs required for the victory. The match is evenly poised. It's going to be anybody's game. I will to face. Again, over the end of the cow point field. This time they will going to come back for the second. In comes the throw. They complete a couple of runs. So very good placement here from both Prashant as well as Avil, now getting a couple of runs here for his team. With that couple of runs scored, but moves on to 17 on the board. So very good exploiting the condition of the power play overs. A fielding condition which is has been nicely used by the batters. Once again up and over, but this time the fielder is in the deep long off, and mid-off fielder will go and run back and quickly to the ball and picked up a single for that. With that single score, but moves on to 18 for 1. A very good start for team Bundel St. Lawrence. Roshan. To Prashant. Lovely shot. Magnificently struck. Ball went like a tracer bullet down to deep square leg boundary for 4 runs. They picked that line very so quickly. Almost in the midland leg stump. Just little bit shuffled across. Just have a look at the replay. Nicely hit that one down to square leg boundary for 4 runs. The first over last delivery boundary. The second over last delivery boundary. The both boundaries hit by Prashant. And 11 in the first over, 11 in the second over. Altogether 22 in 2 overs. So very, very interesting statistics in these 2 overs. 2-2 for 1 after completion of over number 2. 33 more runs required for the victory in the remaining 30 balls. 5 overs, 33 required. There's a good reply coming from team of St. Lawrence Bundel. Especially the Prashant is a man is picking up that very important runs in the important time.
And good striker of the ball. .22 for 1. 33 needed from 30 balls. They needed some comeback here for the team of Malapad. The great reply coming from the batters, opening batters. Bowler brought into attack. Prajwal from the scouts and guides end. What a shot, beautiful. That was absolutely glorious. Glorious extra cover drive, up and over, lovely shot. There is a cover point, there is a long off, but he's just choosing extra cover. Magnificently struck. Fantastic stroke there from Abil with that boundary score, but now moves on to 26 on the board. Another 29 more runs required for the victory. The equation, they're looking so easy now. Lofted down the track, and he goes over the long on fielder for a maximum. What a great shot. Absolutely, it was a mesmerizing cricketing stroke came from the bat of Avil. What a great shot. Stand and deliver. Transferred his weight onto the back foot. Just clearing that long on fielder. And then boundary and a 6 in the first couple of deliveries. 32 and 23 more runs required for the victory. The Avil absolutely looking on fire. Outside the line of off stamp and white call by umpire. Pressure is building up now for the bowler Prajwal after that punishment which came from the bat of Avil in 2 deliveries. He started to feel the pressure. 33 on the board. Again, lovely shot. Once again, the placement is so superb. And again, they're coming back for the second. Good running between the wicket. Positive cricket there from Avil. With that couple of runs, the score moves on to 35 for 1. Just 20 needed for the victory. Cruising towards the victory. What a batting performance here from Avil and Prashant. Prajwal, the expensive over. This time lofted off the toes, down to mid wicket, straight to the hands of fielder. Avil just couldn't manage to control his emotion. After that, he getting boundary 6 and couple of runs. Just try to hit one more big shot, but that's this time he's choosing mid wicket, and that's really not good enough for him to get the distance. But he played a role. He played a role what he need to be done in the previous over, especially is going after the bowler, and scored a very important runs for his team and getting the team in the right position, into the right track. But good comeback here by Prajwal. It picked up a wicket. 20 runs scored in just 9 deliveries. 20 in 9 deliveries. 225 is a strike rate. 6 and a boundary. That 20 which is included. Vikas, the new batter in. Very good strike, rotated up the ball. Nicely played it round to wide of that short mid wicket fielder. Anil, the fielder will be at short mid wicket. Missed it completely. 36 for 2. 19 needed for the victory. The over number 3 is in progress. Oh, this time lovely switch it. And he got the distance. Just see the Prashant, how he is played his innings. Is absolutely right on top in that switch it. Fantastic switch it. He's just got the distance. The Bundel absolutely looking on top. 20 runs came from this over, and the scoreboard is 42 on the board, means 13 more runs required for the victory in remaining 3 overs. And before the next over going to start here, the time for Gopi to take over the microphone. Thank you. Dhanyawad Satish. So what a commanding position progressing here for the Bundel. Just 13 to get in remaining 4 overs, and the straight away required run rate is now coming down to exactly 2.7
3.25 runs per over. In fact, first ball of the fourth over of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए प्रशांत और एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए इस वक्त प्रशांत अविल भी बेहतर 20 रनों की पारी खेलकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं. पहली गेंद जस्ट विद एक्स्ट्रा कवर फील्डर सेट. मुश्किल सा मौका जरूर लेकिन यहाँ पर एक रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल. प्रशांत बैक ऑन स्ट्राइक इज बैटिंग ऑन 16 विद 2 4s and 1 6. इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और प्रशांत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तो बल्लेबाज प्रशांत गेंदबाज भी प्रशांत ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 44 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 44 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. नाउ the target is 55. That means 11 more runs now they have to score for victory. The last quarter-final match of this prestigious cricket tournament, Planet Ed Trophy 2026 Season 1, which is proudly presented by Planet Ed Travels, is now progressing here, fueling our mission to help the needy with a perfect slogan. This tournament is now progressing along nicely. And प्रशांत इस बार तैयार. दाहिने हाथ ऑन द विकेट प्रशांत के लिए यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया. इस वक्त डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाते हुए एक रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल. couple of runs added to the total and with that couple run the scoreboard moving up to 46. Now just 9 to get for victory. प्रशांत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऑन द विकेट लेग स्टंप से बाहर और विकेट फाइन लेग फील्ड आ चुके हैं इस वक्त और गेंद फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर जा चुकी है. 4 रनों के लिए 5 वाइड्स एडेड टू द टोटल. और अब ऐसा लग रहा है सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है इस मैच में. 51 द स्कोर. नाउ जस्ट 4 टू गेट फॉर विक्ट्री. और इस वक्त गेंदबाज प्रशांत तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. Just gone for a loft, turns it over on the corner, down to deep backward square leg, just a single has got. In fact, they come back for the second and they made it comfortably. They made it quite comfortably. 53 on the board. Now just 2 runs to get for victory. सिर्फ 2 रन चाहिए अब विजय के लिए. और प्रशांत इस वक्त सामना करने के लिए था. What a fantastic batting display continuing here from प्रशांत. और गेंदबाज full toss, not connected that one properly. Gone through for a quick single. And leg bye declared by umpire, and with that leg bye run the scores are now levelled. Now just a single run required for Bundel to qualify for the semi-final of this competition. Lofted and just fell short of a fielder. That's it. Bundel are through to the semi-final of this competition, defeating Malapad handsomely by 8 wickets with more than 3 overs to spare, and with that victory they are through to the semi-final of this competition. Now the second semi-final match of this competition will be played between Ranipura and Bundel, and that one more good match is now coming up. Ranipura will take over Bundel. 2 talented teams are clashing each other in the second semi-final. That second semi-final match is now going to start within just a short while between Bundel versus Ranipura. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅನಿಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ. Avil enjoy the man of the match for his fantastic knock of 20 runs. I request Anil please come to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. Thank you, and we'll be back after a short break. Thank you.
I request the players of Bundel please report to the stage for the signing procedure. After that, we will take 5 minutes break. Request one of our chief guests please distribute the man of the match for Avil for his fantastic knock of 20 runs. Ranipura ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಿಕ್ St. Lawrence, Bundel are won the toss and won the decision. They will take the seat. We have to wait and see. And the decision is now still pending. They elected to field first, in fact. So right after the break of 5 minutes, the match will start. I request Avil, please come to the stage and receive the Man of the Match award from one of our chief guests. I request Mohammed Irfan, the proprietor of Bedra Media, now distributing the Man of the Match award for Avil for his fantastic knock of 20 runs.
which he scored in this match. We just Irfan distributing the award for Avil, a medal. And congratulations for Avil and best of luck for the semi-final match. The previous match, another match, winner Sanil. I request Sanil please come to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. Also I request Royston of Malapad, ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಮೆರ್ಲಪದ ತಂಡದ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಆಫ್ ಮೆರ್ಲಪದ. So second semi-final match is now going to start between Ranipura versus Bundel, and the Bundel after one to toss they elected to feed first, and I request the players to start the match immediately.
for the second semifinal match is now going to start. But the first ball is now coming up, and news is here from the center that the captain of St. Lawrence Bundel, after one the toss, elected to field first against Ranipura, and because of that, the openers are comes out to the middle. So umpire have signaled to start off their match, and the first ball of the match is now coming up. Roshan Pinto and Sachit, the opener, and the bowler starts the fresh proceedings is Avil. First ball comes. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त यार पावर प्ले इस वक्त प्रगति पर रहा, और जहां तक सवाल है इस वक्त ये पहले ओवर का, तो कुछ हद तक इस वक्त समस्याओं का सामना करते हुए गेंदबाज शायद डिहाइड्रेशन का शिकार यहां पर होते हुए मैदान पर इस वक्त बैठे हुए हैं, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है. Now it seems to be okay, and the first ball of the match is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार था, इन हाथों पर the wicket. This time turns it away. This time finds the gap as well, but not so power in that stroke, and because of that the batsman just got a single for that stroke, and with that single runs the count begin for them. One without loss for Ranipura, और दोनों संतुलित टीम है इस द्वितीय सेमीफाइनल मैच में यहाँ पर भिड़ रहे हैं, और इस बीच गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, इन हाथों पर द विकेट. यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में. फील्डर मौजूद, जस्ट अ सिंगल ही गॉट, एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 2 ऑन द बोर्ड, या 2 लूज एंड विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज अविल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था, इन हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद lofted that one this time, finds the gap as well, and it's crossed over the fence for a boundary. Fantastically played by the right-handed batsman, just inside out cricket he played, and just clearing the outfield, just taking the advantage of the power play, and he just scooped it away fine down to a deep extra cover fence for a boundary. Fantastic struck came from the bat of Roshan Pinto, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर, 6 ऑन द बोर्ड, या 2 लूज एंड विकेट. और गेंदबाज इस वक्त तैयार अविल अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर स्ट्रेट अवे. द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर. विकेट इस वक्त उखाड़ दिए विकेट कीपर ने, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. द वाइड का इशारा अंपायर का हो चुका है, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर, 7 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस फॉर रानीपुरा. और जहाँ तक सवाल एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का, तो कम से कम 50 के आंकड़े को पार करना होगा यहाँ पर रानीपुरा के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो. क्योंकि सेंट लॉरेंस बुंदेल के पास सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है. पिछले मैच में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है मलपदों के खिलाफ, उससे ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका बल्लेबाजी का लाइनअप काफ़ी सशक्त है, और उससे सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर गेंदबाजी करनी है तो उनके बल्लेबाजों को ज़्यादा से ज़्यादा रन इस वक्त बटोरने होंगे. इस बीच खेल दिया गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर पर, एक रन दूसरे रन के लिए दौड़ पर, दिस कुड बी इन ट्रबल. आई थिंक इट माइट बी नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर. तो क्वाइट लेटली इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग करते हुए, और देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं. और एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को ढकेलता इस वक्त, और नॉट आउट इज द कॉल फ्रॉम द अंपायर एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड. तो बल्लेबाज बच चुके हैं, 2 रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर, 9 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. 4 गेंदे इस ओवर में फेंके जा चुके हैं, 4 डिलीवरीज ऑलरेडी बोल्ड इन दिस ओवर, और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर. दाहिने हाथ ओवर द विकेट फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज अविल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार बाउल्ड हिम, जस्ट गॉन फॉर अ लॉफ, नॉट सक्सीडेड. ही जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन विद द रॉन्ग लाइन एंड जस्ट पेड द पेनल्टी फॉर दैट. ऑफ स्टंप अप्रूटेड. और यहाँ पर देखिए रिप्ले पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से गेंद को उछालना चाहता, गलत लाइन पर खेल गए, और बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे स्टंप्सों पर जा टकराए, और लेग स्टंप उखड़ कर गिरता हुआ बिल्स डिस्टर्ब होते हुए. तो पहला विकेट गिर चुका है. द मैन डिसमिस्ड इज रोशन पिंटो,
and his departs for 7 and first wicket gone. It's 9 for 1. Number 3 batsman Sunil is now comes out to the middle और वो इस वक्त सपना करने के लिए तैयार रहा. केवल 2 मात्र खिलाड़ी भी इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट. और सुनील जिन्होंने पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, नाबाद 43 रन उन्होंने बनाए थे. इस वक्त सपना करने के लिए तैयार. अवेल की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद इस बार उछाला गेंद को खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन फीडर मौजूद. वहां पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. इस वक्त 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल. बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, खासकर नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर पहला रन पूर्ण करने के बाद डेंजर रन की ओर दौड़ पड़े थे और यशस्वीतम 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल. सनील का खाता खुल चुका है. स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर. 11 on the board for losing 1 wicket after completion of first over. Except the loss there, 1 wicket. Ranipura made a perfect start. It's 11 for 1 after first over. After being losing the toss and put it to bat by Bundel in the second semi-final match of this prestigious cricket tournament, Planet Eye Trophy 2026 season 1, which is proudly presented by Planet Eye Travels. They made a good start, in fact. 11 for 1 after first over. तो इस वक्त मॉनिटर पर देखिए, इस वक्त ट्रॉफी जो अनावरण किया गया है, ट्रॉफियों को इस वक्त दिखाया जा रहा है. निश्चित रूप से बेहतरीन आकर्षक ट्रॉफियां हम यहां पर मॉनिटर पर देख रहे हैं. और जहां तक सवाल है, विशिष्ट शैली के ट्रॉफियां यहां पर मॉनिटर पर हमें देखने को मिला, जो विजेता और उपविजेता और वैयक्तिक विभागों में दिए जाएंगे. और 1 रन इस बीच मिला. और निश्चित रूप से ट्रॉफी का अनावरण किया गया इस वक्त. कुछ देर पहले मॉनिटर पर हमने देखा और विनर्स और रनर्स ट्रॉफी लगभग 25 किलो से भी ज़्यादा यहाँ पर है. और जहाँ तक सवाल है, ये जो आकर्षक ट्रॉफी है जो कि स्टेज की शोभा को और यहाँ पर बढ़ाते हुए, और निश्चित रूप से यहाँ पर आज शाम को पता लगेगा कि इन ट्रॉफी का हकदार कौन होगा. तो गेंदबाज गिलक्रिस्ट इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और इस बीच ओवर की पहली गेंद, अगली गेंद इस बार स्कूप किया जस्ट ओवर द कवर पॉइंट. फील्डर सेड चेस फॉर द फील्डर. द बैट्समैन गॉट कपल फॉर दैट स्ट्रोक. 2 रन इस वक्त जरूर मिलेगा. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को लॉफ्ट किया था अंतिम क्षण में और 2 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल. और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. और गेंदबाज इस वक्त गिलक्रिस्ट तैयार. सनील सामना करते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर. रिवर्स शॉट, टॉप एज, चांस फॉर द कवर पॉइंट. फील्डर नो, ही वोंट गेट दैट वन. और जी तोड़ कोशिश जरूर की थी इस वक्त 3 फील्डरों ने. डीप कवर पॉइंट क्षेत्र की ओर दौड़ते हुए गेंद को लपकना चाहा, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर रहा. और बल्लेबाज इस बीच सनील 2 रन इस स्ट्रोक पर प्राप्त कर चुके हैं. और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है. इन 2 रनों के साथ 16 रनों पर 16 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट in the over number 2 in progress. Sunil who scored a fantastic 43 unbeaten runs in the previous match, just continuing his form in this match also. और इस बीच इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाह, not connected that one properly, gone through for a quick single and get it comfortably at last. By declared by umpire. और बाई के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. दोनों बल्लेबाज इस वक्त सचित और सनील कुछ बातचीत करते हुए बल्लेबाजी बैटिंग के रणनीति के बारे में. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गिलक्रिस्ट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. शाम के 4:30 4:30 इस वक्त बज चुके हैं. धूप लगभग मैदान से गायब हो चुकी है. और इस बीच गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार. स्वीप कर दिया इस वक्त गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. मिसफील्ड वहां पर और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए इस वक्त दौड़ पड़े. नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन थ्रो को रिसीव करने में विकेट कीपर असफल. नॉट कनेक्टेड दैट वन परफेक्टली बाय द विकेट कीपर एट द लास्ट मोमेंट. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का.
कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। गिलक्रिस्ट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार। ये गेंद जब किया जस्ट क्लियरिंग द एनफील्ड, लेकिन फील्डर मौजूद वाइड इस लॉन्ग ऑन पर। नॉट मोर देन अ सिंगल एंड दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 20 on the board for losing 1 wicket in the over number 2 has been came to an end. So 2 power play over belongs to the batsmen of Ranipura. They got 20 runs in the first 2 overs, losing 1 wicket in the face of Roshan Pinto. एक बेहतर शुरुआत रानीपुरा के बल्लेबाज कर चुके हैं, 20 रन जोड़ चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 5 ओवर का खेल बाकी, 5 overs left in still in overall calculation in their innings। और देखते हैं इन बचे हुए 5 ओवर में किस तरीके से कमबैक कर पाते हैं सेंट लॉरेंस बुंदेल के गेंदबाज। शाम का वक्त 4:30 4:30 इस वक्त बज चुके हैं। धूप का प्रकोप काफी हद तक मैदान पर कम हो चुका है, लेकिन इस वक्त दूसरा सेमीफाइनल मैच इस वक्त प्रगति पर। और जहां तक सवाल है तीसरे ओवर का, 3rd ओवर स्टार्ट्स, जोएल द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम दैट साइड एंड। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। सचित और सनील दोनों भाई इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। और गेंदबाज जोएल अपनी ओर के पहले गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सचित के लिए यह गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को उछाला इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंचती हुई, गेंद को वहां पर जब तक फील्ड किया जाता 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त गेंद को उछाला था खूबसूरती के साथ और 2 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। जोएल अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार उछालना चाहा स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर, गॉड स्टॉप एज एंड विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स मेड नो मिस्टेक। विकेट यहां पर गिर चुका है। सचित की पारी समाप्त। गेंद को उछालना चाहा इस वक्त टॉप एज पर गेंद टकराई और आखिरकार आसान सा कैच इस वक्त विकेट कीपर लपकते हुए विकेटों के पीछे और सचित का विकेट गिर चुका है, दूसरा विकेट खो चुका है। इट्स 22 for 2। तो जोएल के लिए इस वक्त एक इनाम घोषित किया गया है। अगर जोएल सनील का विकेट उखाड़ते हैं तो 1000 रुपये का नगद पुरस्कार सुस्तान इनकी ओर से दिया जाएगा। और देखते हैं इस वक्त वो सनील का विकेट उखाड़ पाते हैं या नहीं। इस ओवर में नए बल्लेबाज विशाल का आगमन इस वक्त होता हुआ अपना करने के लिए तैयार और जोएल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार drifting down the leg side, gone through for a quick single, slight bit of fumble there. In fact, the batsman looking for the second but won't get it. Just a single there, 1+1 in fact. 2 wides added to the total. 24 on the board. तो अब सनील स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 1000 rupees cash prize declared by Sustan for Joel. If we get the wicket of Sunil, he'll get 1000 rupees cash prize from Sustan. और देखते हैं यहाँ पर सनील का विकेट उखाड़ पाते हैं या नहीं गेंदबाज जोएल। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद जस्ट वेंट वाइड ऑफ द लेग स्टंप, लकी एस्केप, डायरेक्ट हिट दिस टाइम। और इस बार ऐसा कहना पड़ेगा निशाना डायरेक्ट इस वक्त लग चुका है, लेकिन शायद बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। और जहां तक गेंद का सवाल है, लेग स्टंप से कुछ दूरी पर, लगभग 1 या 2 इंच दूरी पर निकलती हुई गेंद और बाई का इशारा अंपायर का। और जहां तक सवाल है इस वक्त इस गेंद पर सनील बच चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रन दोनों आरंभकार को खोने के बाद। दैट्स 25 for 2 now in the over number 3 in progress. So absolutely an equal battle is now continuing here in the second semi-final match. Winners of this second semi-final will meet 90 warriors in the grand finale. That mega final match will be played right after this match. Esbat just gone for a big one, chance for an out, and this time he survived. 2-3 कदम आगे जरूर बढ़ाए थे बल्लेबाज ने, लेकिन इन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे।
The scoreboard stays at 25 for the loss of 2 wickets. Joel अगली गेंद लेकर तैयार विशाल के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में. Oh, beat the fielder. It might be in a concern of just inside. Defense and the batsman come back for this second run safely in the end. एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर थे गेंद उनके हाथों से छूटी और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन चुराने का. Couple of runs added to the total. It's 27 for the loss of 2 wicket. Still a ball left in this over. Joel अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. Lost it. This time I think chance for the fielder at long on. In fact, it taken by the fielder at mid on. Not quite hold of that shot at the last moment by Vikas. The ball ballooned into the air and a well judged taken catch taken by the mid on fielder. Have a look at this in the replay. He just hit that one off the toes, but not quite controlled of the shot and collected perfectly just inside the 20-yard circle by the fielder at mid on. Third wicket gone. Vishal departs. It's 27 for 3. So good over as far as Bundel is concerned. Came to an end from Joel. 7 runs came from this over and he got the wicket of Vishal. 3 gone, it's 27 for 3. The equal battle still is now continuing here. So number 5 batsman is now comes out to the middle. Leston और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स की ओर से अविल अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार. पहले ओवर में 11 रन वो प्रदान कर चुके हैं और 1 विकेट प्राप्त करने में सफल. दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलती हुई. 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात. बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन सनील के लिए और काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ. डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑफ नहीं मिड ऑफ पर एक फील्डर तैनात. डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप बैकवर्ड थर्ड मैन इस वक्त मौजूद. पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर. क्विक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. डॉट डिलीवरी and he just starts with a dot delivery in this over. अविल और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 27 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. निश्चित रूप से इस वक्त कड़ा संघर्ष जारी है इस दूसरे सेमीफाइनल मैच में. इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए 90 वॉरियर्स का सामना करने के लिए. और इस बीच गेंदबाज अविल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में जमावट करते हुए डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर जो फील्डर है उन्हें इस वक्त थोड़ा सा स्क्वायर तैनात किया गया. ये जानते हुए कि सनील अच्छा खासा रिवर्स शॉट खेल लेते हैं और इस बीच 2 स्क्वायर गेंद को इस वक्त तैनात किया गया है. और अविल अगली गेंद लेकर तैयार. रिवर्स शॉट जस्ट वांटेड प्ले रिवर्स शॉट जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप. अपील को नकार दिया सही तरीके से पार ने. 1 रन मिलेगा जरूर और इट्स ऑफ द बैट इन फैक्ट. सो लेग बाय इन फैक्ट और एक लेग बाय रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. 2 बेहतर गेंद इस ओवर में गेंदबाज अविल फेंक चुके हैं. तीसरी गेंद लेकर तैयार लेस्टन इस वक्त सामना करते हुए. लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि क्रीज पर मौजूद और अगली गेंद लेकर इस वक्त अविल दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. Again, next time Bahar drifting down the leg side, gone through for a quick single, direct hit, but the batsman completed a second run, first run very safely in the end. 1+1, 2 wides added to their total. 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 30 रन. 2 रन तोहफे के रूप में उपहार के रूप में इस वक्त प्राप्त करता हुआ रानीपुरा. 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर. It's 30 for the loss of 3 wicket. 4th over of their innings is now progressing here. This is the second semi-final match of this prestigious cricket tournament. Planet Air Trophy 2026 Season 1 is now progressing here, which is proudly presented by Planet Air Travels. और मुकाबला इस वक्त जारी है रानीपुरा और बुंदेल के बीच. अंपायर विकेट को सही करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए गेंदबाज अविल इस वक्त तैयार. सनील के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. सनील सामना करते हुए यह गेंद उछाला ऑफ द टोज लेकिन फीडर मौजूद लॉन्ग ऑन पर. नॉट मोर देन अ सिंगल. सिर्फ एकमात्र रन मिलेगा और इस बार ओवर थ्रो लेकिन बैकअप होता हुआ
जस्ट सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 31 रनों पर 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 3 गेंदे फेंके जा चुके इस ओवर में, 3 गेंदे और फेंके जाने बाकी और गेंदबाज इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार अविल। हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट करते हुए गेंदबाज अविल, सपना करते हुए लेस्टन और अविल तैयार। स्वीप करना चाहा इस वक्त सनील दौड़ा है और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का तो रन मिलेंगे जरूर इस वक्त। एक शायद ऐसा कहना पड़ेगा बल्ले का डिफ्लेक्शन हुआ था अंतिम क्षण में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रन। सनील ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और इस बीच सामना करते हुए अविल की गेंदों का। अविल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, again drive किया straight past the ball down to a long on, in fact he completed one, they're looking for the second, come back for the second, in comes the throw, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, couple of runs added to the total और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 34 रनों पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी। अविल सनील के लिए इस ओवर में अंतिम बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए just drifting down the leg side at the last moment और 1 रन का इजाफा हो चुका है 35 for the loss of 3 wickets now. Last time in this over Avil bowls right arm over the wicket to the lefty batsman Sunil, left it this time, not quite meeting it, chance of a run out and he's gone at the non-striker end. काफी आगे निकल आया था इस वक्त बल्लेबाज लेस्टन और गेंद को इस वक्त खेला था बैक टू द बॉलर की दिशा में बल्लेबाज सनील ने और इससे पहले कि लेस्टन अपने क्रीज पर वापस लौटे गेंदबाज ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने के बाद तेजी के साथ विकेट चटका दिया। 1 more wicket gone and the score is now 35 for the loss of 4 wicket. So 4th over has been came to an end, 35 exactly 8.75 runs per over. The present run rate is now progressing here. 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं बचे हुए 3 ओवर में यहाँ पर रानीपुरा के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। और इससे पहले कि 5वां ओवर पर आगे का को देखा सुनाने के लिए एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much, Gopi, and good position for the team Ranipura, and even the lost toss asked by the opposition to bat first. Oh, beautifully ball, perfect delivery to deceive the wicket of the batter. Eriksson has got no answer for that particular delivery. Fantastic Yorker and delivery there from the bowler. The Gilchrist strike with the pitch of the delivery, unplayable Yorker and delivery, absolutely perfect one. And this is what the required here for the team Bundel if they wanted to back in the game. What a fantastic day for cricket. And this is the final and the champion decider day. And of course today we are going to celebrate International Women's Day. Happy International Women's Day to all the incredible women. Your strength, courage, love and sacrifice make the world brighter and more beautiful. Thank you for everything you do. And we can see in the picture, in the monitor, the women are in our main stage. They are absolutely busy in a deep discussion. And happy Women's Day for everyone. Thank you. Gilchrist again continues. Right arm over the kitty balls outside the line of off stump. And one more single added to total.
It's from the bat, outside edge of the bat of the batter. So one more single. With that single, Scoburn moves on to 36 for 5. 36 for the loss of 5 wickets. The over number 5 in progress, and again the batter Sunil is just taking the responsibility. What innings is played in the previous match? One of the best innings of the tournament, highest run in the individual, 43 runs in one match. Now we just wanted to take this innings to the good one, and again leg by call by umpire. Ball definitely going to miss the leg stump for a long way. No chance of leg before wicket. Gilchrist really bowling very well in this particular match, as he was got operated from Scouts Guides end. And so far he did a lovely job. It's a 38 for 5 in the over number 5 in progress. Outside the line of off stump, and one more dot ball. So Gilchrist is absolutely looking good in this over. The kind of restriction which is required from this over. And one more dot ball. Lovely over is in progress. And here in our commentary box, in front of commentary box, and bird eye, that means drone camera flying in front of our commentary box, and operation is in progress. So first time in today, and the commentary box in the monitor, and thanks to the Bedra Media, the proprietor, of course the owner of the Bedra Media, Irfan, operating this bird eyes, and fantastic overages comes in, and great over there from Gilchrist. A kind of overage is battle required for the team, the Bundel, and Gilchrist has been outstanding in this particular over. Just 3 runs I think so in this over. The great over which is completed by Gilchrist after completion of over number 4. Total score is 5, in fact 39 on the board, and still they have to get another 2 overs to go, 12 deliveries to go, and excluding wides and no balls, and wait and see how many runs they will going to score. And this is Bedra Media, one of the most popular YouTube channel we can find in South Kenda district. They're knowing for the innovative. They know exactly the what to do in cricket. That becomes the most popular nowadays. Now the bird eye is flying very high into the sky, covering some beautiful moment of this prestigious Planet Air Trophy 2026, which is proudly presented by Planet Air Travel, with the slogan of fueling over mission to help the needy. And one more couple of runs here. A chance of run out is gone. This is a one more wicket. The one more wicket is back in the pavilion in the form of run out. The Prakash, the batter, couldn't manage to complete the couple of runs. The Bundel, definitely they are strongly back in the game. At one stage, the team Ranipura cruising towards the 60 plus runs. But all in sudden, this Bundel bowlers are absolutely putting some break on the run rate. Even Sunil is there in the other end. But still, we can see that runs very hard to combine. 40 on the board. In the over number 6 is in progress. Santosh is in operation. The fielder, new batter, Riwan is a non-striker. Sunil will going to take the strike. Santosh the bowler. They wanted to go for the switch it. Wicket keeper missed it. And one more run leg by call by umpire. One more addition to total, with the addition of that single scope, and moves on to 41 on the board for the loss of 6 wickets back in the pavilion. Santosh start time in this over.
Nicely ball, lovely delivery in there from Santosh. A perfect delivery to ball to the fresh leg. Quite hardly Rivan managed to get the bat onto that. Lovely delivery there from Santosh with that single scope on the Mozan to 42 on the board. Time is exactly 4 past 50 and still one more match left after this. Winner of this match will go into battle for the title Planet Ad Trophy 2026 against 90 Warriors. This time wanted to go for the switch it. Both the batters are coming for completed single by call by umpire. Sunil is finding hard to get the big shots. This is what the Dawn camera is covering this beautiful cricket ground. Swaraj Maidan, one of the most beautiful and historical cricket ground here in Moodubidire, the city for the rich culture, even the sports and games. A lot of talent coming from this area. They played it nicely into the mid-wicket region for a walkable single. They're looking for the second as well. Chance of run out, but the throw which is not in the perfect end. It need to be in the strikers, but not so easy for the deep mid-wicket fielder to return the throw to the hands of a wicket keeper. But couple of runs is completed. With that couple of runs, Koban moves on to 45. And we can see that the drawn camera has gone very high. And now this is the market, the Moodubidire market, a very busy market we can see here. They went played it nicely into deep long on region for a single and looking for second. Now they're going to get a second. And chance of run out and missed out by the wicket keeper. The couple of runs completed with it. Couple of runs, Koban moves on to 47 on the board after completion of over number 6. So this is the one cricket ground besides Alwas College, one more very popular institution. So nowadays the Moodubidire becomes the educational hub. This is what we can see here in the monitor. The drone camera is flying high and covering some beautiful pic of this cricket ground. This is where you can see the two cricket ground. One is the cricket is going on, and then left it is athletic tracks and from some popular events which is arranged and at Alwas cricket ground, Alwas athletic ground. A lovely view of Bedra. 1,000 fielders, Jaina Basadis, one of the highlights of the Moodubidire. Wide outside the line of off stump and going to be one more extra, and Skobat moves on to 48 on the board. Again, Sunil is really struggling in the middle. Every time he's looking for across the line of the delivery, but fails to get a success so far. This is the last over is in progress, so that Sunil almost looking on for the big shots outside the line of off stump and wide call by umpire, rightly so. 49. Not a bad total for Ranipura. 49 in the semi-final is a high voltage game. The do or die situation for both the teams. They know exactly if they wanted to win the final, they have to win this match. Driven Apichley over the extra cover. And looking for second. Even they can look for third, but Sunil doesn't want to take third. He just wanted to retain the strike. 50 comes up for the Ranipura. It is psychological advantage once you get past the 50. ₹1,000 announced for Kevin if he picks the wicket of Sunil. Lovely shot, beautiful shot down to deep square leg region, but they're looking for second. Now the run out taken place, and his partner is need to sacrifice his wicket for Sunil. Just a single. With that single scope, and moves on to 52 on the board. Umpire saying there exceeds the time limits. The fielding team, they have to bring one fielder inside the ring, and because of their exceeds the time limits.
So 90 Warriors announcing rupees 1000 for Sunil. If he hits the 1-6, he will going to get 1000 rupees. Here comes next ball outside the line of off time, going to be a wide. One more extra. With that extra score, but moves on to 53. Batsman. A lovely shot, beautiful shot, and good placement as well. That will going to be bounding. So what a shot that just he wanted to finish the things off with some runs. Sunil is settled batsman in the middle. You know exactly what to need to do here. He did absolutely what exactly Doctor ordered. Played it across the line towards the mid-wicket boundary for 4 runs. With that boundary score, but moves on to 57 on the board. The good score on the board for the team Ranipura. And this is what Satish Moodubidire and Moodubidire, the umpire, the local hero. Satish Moodubidire is one of the most popular personality as far as umpiring is concerned. The very, very popular and demanded umpire in the present day. And knowing for his quality umpiring, following Roland Pinto, being the student of Roland Pinto, almost you can see that it's all decision stands, everything is looks like Roland Pinto, the junior Roland Pinto in the screen. Again wanted to go for a big on drive, missed it completely. And that's it. I think the team Ranipura will going to finish their innings of 7 overs with the total score of 57, and they set a target of 58 for the team Bundel St. Lawrence to get into the finals. And this is a good score and the very competitive total put down by team Ranipura against team Bundel St. Lawrence, and wait and see how Bundel St. Lawrence will going to get this total. And this is definitely going to be a huge total to chase down, but not impossible in cricket. It can possible. The Bundel has got some good batting department in the side. The way that they won the quarter final against the team Malapad, it looks like they will not going to give this match very cheaply for the opposition. And that's why the second session is going to be more interesting here. And wait and see which team will go into qualify for the mega final. 90 Warriors are already there in the finals. So that I request all the players of 90 Warriors, kindly request you to please complete the formalities of signatures as soon as possible. And please get ready for the mega final. The winner of this match will go into clash against team 90 Warriors. Now it's an innings of team Bundel St. Lawrence. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್, kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. So it's over to Gopi for the further explanation of the match. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So the match starts. Second innings. Exactly the target is 58. The first ball starts off with a wide. और wide के साथ इस वक्त रनों की शुरुआत इस वक्त हो चुका है बुंदेल के लिए. एक रन बिला किसी नुकसान के. 58 the target for them to qualify for the grand finale of this competition. और अविल और गिलक्रिस्ट आरंभिक बल्लेबाज और लेस्टन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथ बाएं हाथ ओवर द विकेट. जस्ट कॉल फॉर अ माइटी हीव नॉट सक्सीडेड. और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन सब बल्लेबाज को नहीं मिला. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है. एक रन बिना किसी नुकसान के. तो इस वक्त अविल के लिए ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ. इनटू द गैप एज वेल. लॉन्ग चेस फॉर द फील्डर बट ही वोंट गेट दैट वन. इट इज क्रॉस्ड ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री. फैंटास्टिकली स्ट्राक. और स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त पंच किया था अंतिम अक्षर में कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान बल्लेबाज अविल ने. और देखिए यहाँ पर रिप्ले पर देखा जा रहा है. दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कवर ड्रॉ प्लेड बाय द बैट्समैन. और इस चौके के साथ अविल का खाता खुल चुका है. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 5 रनों पर. तो अविल के लिए जैसन इन्होंने 500 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया अविल के लिए हर छक्के के लिए. देखते हैं अविल छक्का लगा पाते हैं या नहीं. तो लेस्टन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. अविल सामना करते हुए. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट किया. ब्रिलियंटली फील्ड. चांस फॉर रन आउट. लेकिन फील्डर का थ्रो जो कि काफी वाइड पहुंचता हुआ इस वक्त विकेट कीपर के पहुंच से बाहर. और एक रन का इजाफा इस वक्त हो चुका. और एक रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर. 6 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट. अगली गेंद. This time, just gone for all off, not succeeded and connected by wicketkeeper behind the stumps. रनों की कोई गुंजाइश नहीं. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के. गेंदबाज लेस्टन बाएं हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पैरों पर गेंद टकराई. स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची. एक रन का इजाफा. जस्ट अ सिंगल टीम got and with that single run leg by declared by umpire. Scoreboard moving up to 7 on the board in the over number first in progress. This is going to be really testing time continuing here for the batsmen of St. Lawrence Bundel. They have to reach the target of 58 in 7 overs which set by Ranipura. और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहा इस वक्त चुके. और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो इसी के साथ पहले ओवर के समाप्ति. फैंटास्टिक फर्स्ट ओवर केम्स टू एन फ्रॉम लेस्टन एक्सेप्ट दे he conceded a boundary in this over. He bowled very well in the next 5 deliveries in fact. 7 on the board. Steady start for Bundel chasing the victory target of 58 in 7 overs. They scored 7 runs from the first over. Now straight away coming back to the equation. 51 to get in remaining 6 overs with a required run rate of exactly 8.5 runs per over. 36 गेंदें बाकी. 51 रन चाहिए विजय के लिए. और दूसरा ओवर इस वक्त उनकी पारी का शुरू होता हुआ. दूसरा पावर प्ले ओवर कहना पड़ेगा. और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाज दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए सनील. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो बल्लेबाजी में सनील ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बना है. अब देखना यह कि गेंदबाजी में वो क्या करते हैं. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए दूसरा ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ. दूसरा पावर प्ले ओवर और सनील तैयार पहली गेंद लेकर. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव नॉट सक्सीडेड. विकेट कीपर के साथ साथ शॉर्ट फाइन लेग फील्डर भी चूके. और एक रन इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं. और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर. 8 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर सेकंड स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट फाइल अगो इन देयर इनिंग्स. सनील गेंदबाजी में है. गेंदबाजी पर तैयार इस वक्त. गेंदबाजी करेंगे अविल के लिए. दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर. और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद सनील इस वक्त तैयार. सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर. विकेट कीपर चूके. और रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच एक बाई के रूप में. और बाई के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर. 9 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस. एक बेहतर शुरुआत की सख्त जरूरत सेंट लॉरेंस बूंदेल के बल्लेबाजों को. अगर उन्हें 58 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है, स्पर्धात्मक लक्ष्य तक पहुंचना है, तो गेंदबाज ये गेंद सनील के बॉल्ड आउट. जस्ट कॉल फॉर अ रिवर्स शॉट नॉट सक्सीडेड. एक्स्ट्रा क्विकर ऑफ कटर डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर एंड ही जस्ट गेट द रीड ऑफ द बैट्समैन.
और ऑफ कटर गेंद थी कुछ हद तक तेजी आखिरी मौके पर लाते हुए। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, रिप्ले पर दिखाया जा रहा है। द बॉल पास्ड बिटवीन द बैट्समैन्स लेग एंड स्टक टू हिज मिड लेग स्टंप, बिल्स आर डिस्टर्ब्ड और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। द मैन डिसमिस्ड इज गिलक्रिस्ट मैन डिसमिस्ड। फर्स्ट विकेट लॉस्ट फॉर बुंदेल। इट्स 9 for 1. So Vikas, the number 3 batsman is now comes out to the middle और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार सनील की गेंदों का। और सनील इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। वाइडिश लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के दरमियान एक फील्डर मौजूद। ये गेंद ऑफ द रोज, गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पोजीशन मिस फील्ड। इस वक्त गेंद बैकअप होता हुआ दूसरे फील्डर द्वारा सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 10 for the loss of 1 विकेट। ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। सनील अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार सामना करते हुए। इस वक्त बल्लेबाज अविल और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस वक्त सनील ये गेंद लॉफ्टेड, जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड, फाइंड्स द गैप एज वेल, लेकिन गेंद को रोका गया इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर। इनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद को इस वक्त उछाला था, चिप किया था इस वक्त मिड ऑफ फील्डर के सिर के ऊपर से। 2 रन यहाँ पर अविल बटोरने में सफल। अविल जानते हैं इस वक्त पावर प्ले का फायदा उठाना उनके लिए बेहद जरूरी बन चुका है, उनके टीम के लिए, अगर 58 रनों के लंबे से लक्ष्य तक यहाँ पर पहुंचना है तो। और 2 रन इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं। अगली गेंद, यह गेंद इस बार गेंद को खेला, जस्ट इस बार फॉलो थ्रू में गेंद को अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए रोक लिया गेंदबाज ने। और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति हो चुकी है। 2 overs completed, 12 on the board and still struggling time continuing here for the batsmen of Bundel a little bit in this situation. Now 46 to get in remaining 30 deliveries and the required run rate is now straight away gone up to exactly 9.20 runs per over. 30 गेंदें बाकी, 46 रन चाहिए। और निश्चित रूप से यहाँ पर मुकाबला इस वक्त एक बेहतर प्रगति पर। सेकेंड सेमीफाइनल मैच ऑफ दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट प्लैनेट एट ट्रॉफी 2026 सीजन 1 इस वक्त एक शानदार प्रगति करता हुआ, जिसके शानदार तरीके से प्रस्तुति की है प्लैनेट एट ट्रैवल्स ने। फ्यूलिंग अवर मिशन टू हेल्प द नीडी, इस ध्येय वाक्य के साथ, इस स्लोगन के साथ। और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए हमसे दूर वाले छोर से सैम स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स। फर्स्ट बॉल लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर। और गेंदबाज सैम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को मोड़ा इस वक्त हवे में जरूर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद मिड विकेट पर जस्ट सिंगल ही गॉट। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3rd इन प्रोग्रेस। निश्चित रूप से एक साझेदारी की, पार्टनरशिप की सख्त जरूरत यहाँ पर बुंदेल के बल्लेबाजों को। अभी भी एक लंबा सफर उनके लिए तय करना बाकी। और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर। शाम के 5:10 यहाँ पर बच चुके हैं, रोशनी काफ़ी हद तक इस मैदान पर कम हो चुकी है। और इस बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच इस श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता हुआ। इम्प्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर। और जब तक गेंद को फील्ड करे फील्डर और दूसरे फील्डर उस गेंद को कलेक्ट कर थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ विद अ ट्विस्टेड बैट मोड़ दिया था इस वक्त गली फील्डर की बाईं ओर से, और 2 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सैम अगली गेंद लेकर तैयार अविल के लिए, बाएं हाथ ओवर द विकेट। एक बार फिर से रिवर्स शॉट खेला, इस बार भी गैप चुनने में सफल। गेंद बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में बढ़ती हुई और शायद गेंद को रोका गया है वहां पर सीमा रेखा के अंदर। बल्लेबाज 3 रन लेना चाहते हैं, थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ डायरेक्ट हिट, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है।
निश्चित रूप से वहां पर 3 रन बन सकता था, लेकिन 2 रन पूर्ण करने के बाद बल्लेबाज थोड़े झिझके और झिझकने के बाद में दौड़ना शुरू किया और आखिरकार इससे पहले कि स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज पहुंचे, थ्रो को रिसीव करने के बाद काफी क्रॉस एंगल से थ्रो किया था। विकेट कीपर ने सीधे स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ थ्रो और बल्लेबाज की पारी पर पर्दा यहां पर गिर चुका है। विकास द मैन डिसमिस्ड, अनफॉर्चुनेटली ही इज रन आउट एंड सेकंड विकेट गॉन। इट्स 18 for 2. सो प्रशांत नंबर 4 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और अविल जो कि कुछ हद तक पानी पीने के बाद अपने नॉन स्ट्राइक रन मार्क पर जाते हुए सपना इस वक्त करने के लिए तैयार। प्रशांत 18 रनों पर दूसरा विकेट खो चुका है इस वक्त। बुंदेल exactly 40 runs more required for Bundel for victory in remaining 27 deliveries. 27 गेंदे 40 रन चाहिए विजय के लिए। अभी भी सेंट लॉरेंस बोंदेल को इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। और सैम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, मिड ऑन की दिशा में गेंद पहुंची, रन नहीं मिलेंगे। इस पर 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए थे नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने, लेकिन इन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित और रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला। The scoreboard stays at 18 for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. Still, in overall calculation, it's going to be 2 balls left in this over. 2 गेंद इस ओवर में अभी भी बाकी और प्रशांत इस वक्त सामना करते हुए सैम की गेंदों का बाएं हाथों पर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और जहां तक सवाल है शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील कर लिया गया। लेग स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे। और जहां तक प्रशांत का सवाल है, पिछले मैच में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था, अविल के साथ उन्होंने भी बेहतरीन पारी खेली थी और यहाँ पर देखना है कि इस मैच में किस तरीके की बल्लेबाजी वो अपनाते हैं। सामना करने के लिए तैयार सैम की गेंदों का। सैम बाएं हाथों पर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और इस बार वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गुजरती हुई गेंद। वन मोर रन added to the total in the face of extras. 20 for the loss of 19 in fact for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. सैम इस वक्त प्रशांत के लिए ये गेंद, क्योंकि इस वक्त बेहतरीन गेंदबाजी विकेट कीपर ने विकेट इस वक्त उखाड़े, लेकिन बल्लेबाज इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग सौंपी गई है और यहाँ पर बेहतर ओवर समाप्त हो चुका है सैम का। मैं जानना चाहूंगा इस ओवर में कितने रन बने। आठ रन इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं सैम और तीसरे अंपायर का निर्धार इस वक्त आना बाकी है। Not out is the call and the batsman survived. Prashant survived. So over has been came to 3 gone, 19 on the board. Still the struggling time continuing here for the batsmen of St. Lawrence Bondel. 4 ओवर का खेल बाकी, 4 overs left and इन बचे हुए 4 ओवर में देखते हैं रन से जो चाहिए 39 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries with the required run rate of exactly 9.75 runs per over. 24 ball, that means 4 overs left, 39 required. और देखते हैं सेंट लॉरेंस बोंदेल के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं, बचे हुए 4 ओवर में। और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो आगे का खुद काल सोना के एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much, Gopi. The battle is on here for the place in the mega final between 2 very good teams. And the team still, Bondel, are searching for the right track. It's a little bit struggling in the middle as far as required run rate is concerned. Almost now the 10 runs per over is the required run rate for the team Bondel to back in the game. But this man, the Prashant, who is an outsider, and Avil, the batters are in the middle. They can change the complexion of the game. They got a potential of doing that. And wait and see how quickly they go into back in the game. And here comes first delivery of the over number 4. Up and over, lovely placement, beautiful shot. Down to deep cow point region there for Avil. He is absolutely god of offside.
as far as the cover drive and extra cover drive is concerned. He loves to play the shot, especially in that area, one of his scoring zone, extra cover and cover point region. He picked up a single, 21 for loss of 2 wicket. And Ericsson will go into ball next delivery. Ericsson, they're getting on field a little bit into the extra cover region after that stroke came from the bat of Avil. Right arm over the wicket, second time in this over. Down the leg side, it's going to be a spectra wide. Huge wide there from Ericsson. The team Bundel will going to enjoy each and every extra runs which is conceded by the team. Ranipura 22 for 2. Again played it nicely into the long off region for a single. Now they will come back with a couple, and before the fielder from long on region to come across his left to field the ball down at long off. Ample time for the batter Avil to complete the couple of runs. 24 for the loss of 2 wicket, and chasing 58 runs to win this match. Not a big deal, of course, when you're having these two batters are in the middle for the team Bondel. And they needed one big over. That's what they needed. After that slow start in the first 3 overs, they just started to get some acceleration of run rate. Ericsson. Avil wanted to go for the unorthodox reverse sweep. The first time seeing that, he just wanted to play that shot. He missed it completely. So good in that shot. The playing orthodox cover drive, extra cover drive. But this time he misses the line completely. No run scored. 24 for the loss of 2 wicket. Very important dot delivery there from Ericsson. Swings and missed. Lovely delivery. Flighted one. Tempting delivery. Inviting the batsman Avil to go for the expansive drive. Just misses the line completely. Then wicketkeeper behind the stump just dislodged the bails. But the batter is safe. Back-to-back 2 dot deliveries. Good comeback here from Ericsson. 5 runs in the first 2 deliveries. Now after that 2 dot deliveries. Nice square drive. But the protection is there in the deep cow point region, so that they need to settle for a single. And with that single scope and moves on to 25. This is a previous delivery where beaten by the flight. Now this man is a danger man. The Prashant's hard hitter of the ball. Loves to go after the bowler. They played a very good innings in the previous match for his team. Now we'll go into face Ericsson. Here comes next delivery. Right arm over the kitty balls. They wanted to go for the reverse sweep. Lovely change of line there from Ericsson. Good thinking. Just using his mind well. Seeing the batsman's intention that he wanted to go for the switch it. Lovely comeback here from Ericsson. Great over from the point of view of team Ranipura, which is comes in. And after completion of over number 4 is 25 for 2. 33 more runs required for the victory in 3 overs. The asking run rate is now jumped into exactly 11 runs per over. Runs required for every over. The big ask, but not impossible. This the altogether team Ranipura bowler did a lovely job so far. Leston to Avil. Misfield there by the fielder. And unforced error there from the fielder. Little bit making a mistake of misfielding. And a couple of runs which is completed. We did a couple of runs. Copenhagen was on to 27 for 2. For the loss of 2 wicket. Outstanding cricket tournament is in progress. Planet Air Travel organizing this cricket tournament. The lot of effort, of course, you are only observing the 2 days of cricket tournament, but more than 2-3 months of efforts is required to organizing the 2 days of wonderful cricket tournament in this beautiful Swaraj cricket stadium. And again a lovely change of line. Direct hit is gone. He is gone. This is a huge fish in the net. The danger man Prashant departs. Well. A lot of
Frustration we can see in the face of Prashant. Correction from Prashant is not happy with his partner. Why to go for that risky run? Going for the reverse sweep. Just have a look at that one. He's got a bat onto that. But lovely throw came from the fielder. I think he need to appreciate the fielder. Sunil is one of the sharp shooter in their Ranipura. The fielding department is always asking for trouble when you are going against the throwing off of Sunil. Always difficult for any batter to survive from his throw. 27 for 3. More trouble for the team of Bundel. They are really feeling under pressure now. The run rate required is absolutely creeping up. The 11 in the beginning of this over. Now so far this is a tidy one more over, which is going to be the tidy one outside the line of off time too far, so that wide call by umpire. With that extra score, but moves on to 28 for 3. Leston to Devin. Devin ties that one upishly down to deep long on region for a single. Very hard to combine the boundaries without getting a boundaries, and it's very difficult for the team Bondil to back in the game. Each and every over required at least a boundary. One boundary with the rotation of strike is definitely required for them. Lofted into the mid-wicket region. Again the lack of placement. Avil couldn't manage to get the placement right. Played it nicely, but lack of placement. One is a single. 30 for loss of 3 wicket. 28 more runs required for the victory. And this is the over number 5 in progress. 14 balls remaining. One more lovely delivery there from Leston. Excellent disciplined bowling performance so far from the bowlers of team Ranipura. Not really giving any opportunity for the batters of their opposition. Gavin. Full toss, but not an easy full toss for Gavin to deal with any big shot. Just a single. Mistimed full shot. One more tidy over, which is comes to an end. 5 gone after completion of 5 overs. Chasing 58 to win this match. Bundel still searching for the right track. Struggling in the middle. It's 31 for 3. 27 needed from 2 overs. 13.5 runs per over required run rate. A huge ask in front of Bundel. And this is the penultimate over, the very crucial over from the point of view of Team Bundel. They need to get at least 15 runs in this over if you wanted to take hope of taking this match into the final over. The bowler brought into attack to bowl the penultimate over. Sunil. This is definitely going to be a big ask, because against the bowling of Sunil, looking for 15 runs or 16 runs is not easy, but not impossible. Cricket is an unpredictable game. They wanted to go for the expansive drive. Doesn't get hold of that improperly. We're going to pick the single. With that single score, but moves on to 32 for loss of 3 wicket. 11 remaining. 26 needed for the victory. This is a man, Avil, so far is single man army. Scored 19 valuable runs so far from his bat. They faced 17 deliveries, needed some big shots in this over. Sunil, second time. Beautifully bowled, beautifully bowled. Lovely delivery in that occasion. Just keeping that line which is outside the line of off time, but it's a low full toss. Try to yoke the batsman, but line is outside the line of off tempo. Will completely defeat it. Third time in this over. This time he lofted, but I think he gone against the direction of the wind. Fielder drops the catch. The fielder dropped the catch, and they got only single. Can you believe this? Just in the fielder, the young man, he couldn't manage to hold that catch. He's got a good position to take the catch, but he just
misses the catch, lost his concentration over the ball, and chance for Avil this time. This man, a good judgment there from the batter Gavin to let it the ball go, and a white call by umpire. 34 for 3. 24 needed from 9. Again, lovely delivery, played it down to mid-on region for a walkable single. Sunil will not going to bother about the single. No, exactly, this is a 1 over. You need to restrict the boundaries. And he succeeded. 23 needed from 8. Needed 1-2 big shots here. The 2 balls remaining. I will have to deal with 1 big shot if I wanted to be in the match. Drives that one wide off that mid-wicket fielder, but protection there in the deep in the long on. Wideish. Looking for second. In comes the throw from the fielder. Couple of runs completed. Ranipura fielders now leaking some runs, fielding which is not up to the mark. 21 needed from 7. Keeping their fighting spirit, the batters of Bundel, but still they're lacking as far as the run rate required is concerned. The last delivery of this over from Sunil. Wide outside the run of off temper. You have to reball that one. The bonus run, direct hit, and is gone. Is absolutely jogging. What the batter is doing there. One more lovely throw coming from that short fine leg fielder. The left hand throw from the fielder, and now a look at that nice capture there from the Bedra Media broadcast camera. Direct it and field the batter. Have a look at it. A very lazy running between the wicket. He's not really tried to drag his bat and face the penalty for that. $38 for 4. 20 needed from 7. Joel is a new batter in. 1 big shot here. We're going to make this last over very interesting. The final time in this over. Short mid-wicket, mid-square leg region. They picked up a single. 90 needed from the last over for Bundel to grab the place in the mega final. And 19 runs from the last over. Wait and see, having Habil as well as the batter Joel. Can they do the job here for the team? Needed at least 3 massive strokes. At least 3 sixes or 2 boundaries which is needed from this last over. They wanted to win this match. 19 needed from last over. 18 correction. $19 needed. Correction in the scoreboard. 39 is the score. $19 needed from last over. Bowler brought into attack. Jaswin, the young man. The first ball outside the line of leg stump. It's going to be wide. The bonus run. 18 needed from 6. Jaswin will going to continue. Joel. Oh, this time he lost it, and 1 bounce into the fence for 4 runs. The match is not yet over. It's still alive for the team Bundel with that boundary. 14 needed now from 5 balls, and another big shot here will make this match very interesting. This is the semi-final. Again, appeal for leg before we get a chance of run out. Wicketkeeper missed it. Now Avil back on strike. Leg buys. 13 needed from 4 balls. Avil, the batter, his man is battling hard in the middle for a long time. Came as an opener for the side. You know exactly.
job is not yet over. Being the captain of the side, he's got a responsibility to take his team into the victory. 13 needed from 4. Justin Bowles. This again, I'm really not understand why is Bitash trying for the reverse sweep. Again, the run out taken place. Prashant Bundel announcing rupees 2,000 if Avil will going to make the team into the final. 2,000 rupees will going to given for Avil. So exceeds the time limits. The fielding team have to bring one fielder inside the ring. The new batter in. Really, it is a poor thinking there from Avil, trying for the reverse sweep. The good thinking by the bowler Jaswin, as he bowled again away from the batter, bowled outside the line of leg stump. Calvin will going to face Jaswin. Jaswin to Calvin. Top edge, catch it is a call, and mid-wicket fielder takes the catch. Now the things are going a little bit tougher. The things are going a little bit tougher here for Bondil. Avil still is out of the strike. Calvin just wanted to go for the big shot. Top edge when the mid-wicket fielder making no mistake at all. Taken the catch comfortably. Now last two deliveries left. 2 deliveries left in this final over. They needed 13 runs to win this match. Even 2 sixes, of course, will going to make the match tie. They need to take 2 sixes if you want to take this match into super over. So this is decider delivery. Ranipura needed one fair delivery to celebrate. But if Bondil wanted to make this match to tie, they have to get 2 sixes in remaining 2 deliveries. Excluding wides and no balls. This is what I'm talking about. Excluding wides and no balls. The batsman is out. The batsman is out. Avil is still need to come to the pavilion. Wide call by umpire. Just wait and see which batsman is going to be out. And very interesting to watch. Disappointment finish here for the batter Avil. So now 2 balls remaining, 12 runs required for the victory. Well needed from 2 balls. The batter Santosh will going to take the strike. Jaswin. 2 ball, 2 6 required. This time chance of run out. Avil back on strike. And the umpire called it wide. My goodness, Jaswin is feeling the pressure. I don't know why. Now 11 needed from 2 balls. Boundary and 6 will go into tie the match. 2 sixes will go into win the match. The batter Santosh back in the pavilion. Now Avil back on strike. The last hope for the team of Bondil. If Avil going to hit 2-6 here, definitely Bondil will going to get the place in the mega final. Jaswin still is struggling.
And 2 balls remaining, 11 runs required. Back-to-back 2 wide deliveries from Jaswin. Round the wickety balls. This time, lovely delivery. That's it. Now 11 needed from 1 ball. Unless Jaswin will not going to do the mistake, any mistake. It was just a 4 minutes left in this game for Ranipura to enter into the final. Jaswin balls, that's it. Victory for the team Ranipura. Congratulations, they defeated team Bundel by 10 runs. And they're true to the final. And they will going to play against the team 90 Warriors in the mega final. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಾಣಿಪುರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Once again, the man of the match, which goes to Sunil. He scored 17 valuable runs and bowled brilliantly. That very important over. I request the captain of Ranipura as well as 90 Warriors please report in front of the stage for the toss procedure. Ranipura ಹಾಗೂ 90 Warriors ತಂಡಗಳ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So, Sunil adjudged the man of the match. I request Sunil please come out to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. Sunil batted fantastically, scored 17 runs and he bowled very well in the bowling department. And I request Mr. Marvin to please distribute the man of the match award for Sunil for his fantastic all-rounding performance in this match. Mr. Mervin distributing the man of the match award for Salil for his fantastic all-rounding performance and best of luck for Salil. And now we straight away going to the mega final of this competition. 90 Warriors will take over Ranipura.
I request the captains, 90 Warriors as well as Ranipura, please report in front of the stage for the toss procedure. So 90 Warriors, after won the toss, they elected to field first against Ranipura in the grand finale of this prestigious cricket tournament. Planet at Trophy 2026 Season 1 is now coming up loud exclusively right in front of you, which proudly presented by Planet at Travels, fueling our mission to help the needy with a famous slogan. We are straight away going to the mega final of this competition. DJ Ashish Mix. Right, the first mega final of this prestigious cricket tournament, Planet at Trophy 2026 Season 1 is now going to start. News is here from the center that the captain of 90 Warriors have won the toss. They elected to field first, and because of that, the openers for Ranipura are now comes out to the middle.
Sachit and Sanil. Meantime, the bowler Kevin starts the first proceedings, and the first ball is now coming up. Oh, good one, good one. Quick piece of work made by wicketkeeper behind the stumps. लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज केविन का, पहले गेंद थोड़ी सी उछाल लेती हुई अंतिम अक्षर में गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट। और जहाँ तक सवाल है इस गेंद पर बल्लेबाज बच चुके हैं, एक बेहतर गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत इस वक्त कर चुके हैं केविन। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त सचित सामना करते हुए केविन की गेंदों का ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंची शॉर्ट टर्न पर, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, 1 run एडेड टू द टोटल, एंड दैट सिंगल रन इन द फेस ऑफ लेग बाय ब्रिंग्स द रन्स अकाउंट ओपन फॉर रानीपुरा एंड नाउ दे आर 1 विदाउट लॉस। 90 वॉरियर्स पिछले 2 श्रृंखलाओं में, पिछले 2 हफ्ते खेले गए दोनों श्रृंखलाओं में चेलूर और तोक्कोटो में जो 2 मेगा श्रृंखला खेले गए थे इंटर प्रदेश के अंतर्गत, तो उन दोनों श्रृंखलाओं में वो विजेता चैंपियन रही है। और यहाँ पर देखना है कि लगातार तीसरे हफ्ते में यहाँ पर अगर वो चैंपियन होता है तो हैट्रिक परिपूर्ण वो कर लेगा। तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त रानीपुरा की कोशिश ये रहेगी कि उन्हें हैट्रिक परिपूर्ण करने से रोके, और 90 वॉरियर्स की कोशिश ये रहेगी कि वो चैंपियन यहाँ पर लगातार तीसरी बार बने। इस बीच गेंद को खेल दिया, गेंद इस बार थोड़ा सा मिस जजमेंट और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा इस वक्त नजदीकी मामला, और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। केविन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज गेंद की परीक्षा करने के बाद सनील गेंद को इस वक्त लौटाते हुए गेंदबाज केविन के हाथों में, और केविन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। यह गेंद इस बार टॉप एज इस वक्त गेंद को उछाल दिया फील्ड क्लियर करते हुए, और गेंद वाइड स्लॉन्ग ऑफ की दिशा में बढ़ती हुई काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, मिसअंडरस्टैंडिंग, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट वन ऑफ देम बैक इनटू द पवेलियन। 2 रन परिपूर्ण करने के बाद तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन थोड़े से झिझके दोनों बल्लेबाज, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ, रिप्ले पर दिखाया जा रहा है, और आखिरकार थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में, विकेट कीपर ने थ्रो किया इस वक्त गेंदबाज के हाथों में, रन आउट इस वक्त होता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर। तो बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन वापस सचित, और पहला विकेट गिर चुका है 5 रनों के ऊपर रानीपुरा का। It's 5 for 1 in the first over. Sachit departs. We are just waiting for the number 3 batsman in this situation. इंतजार है इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज का, लेस्टन नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और वो इस वक्त तैयार नॉन स्ट्राइकर एंड पर फिलहाल सामना करते हुए सनील इस वक्त तैयार, और गेंदबाज इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार केविन गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट, फैंटास्टिकली स्ट्राइक, outstandingly played by the batsman. This is an absolutely magnificent reverse shot played by the batsman Sanil. He just got that one right from the middle of the bat with a twisted bat, and he just lofted that one in a style over deep backward third man fence for a boundary. Fantastic strike. और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर, 9 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 1 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए केविन दाहिने हाथ राउंड द विकेट सनील के लिए, यह गेंद इस बार स्वीप कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ, इंप्रोवाइजेशन करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। So fantastic over in Ranipura's point of view came soon, and 11 runs came from the first over, and after completion of first over, after being losing the toss and put it to bat by 90 Warriors in the grand finale of this prestigious cricket tournament, Planet Eye Trophy 2026 season 1, Ranipura made a fantastic start. In fact, the man to score 11 runs on the board after the completion of first over, और पहले ओवर में सनील बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 10 रन बटोर चुके हैं। Sanil grabbed 10 runs from the first over. Because of that, pretty good start made by Ranipura. 11 on the board after completion of first over. दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज रॉयसन इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए शाम के 5:50 यहाँ पर बच चुके हैं। लगभग मैदान पर रोशनी इस वक्त कम होती हुई धीरे धीरे अंधेरा सा छाता हुआ
और इस बीच दूसरा ओवर उनके पारी का तैयार। गेंदबाज रॉयसन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार। सामना करते हुए इस वक्त लेस्टन और ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को फ्लिक कर दिया आफ्टर टॉस गेंद जाते हुए मिड विकेट की दिशा में एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट सिंगल गॉट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। जनाब इरफान बेद्रा इनके साथ में और कुल मिलाकर एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट प्लैनेट एट ट्रॉफी 2026 सीजन 1 इज नाउ प्रोग्रेसिंग विच इज प्राउडली प्रेजेंटेड बाय प्लैनेट एट ट्रैवल्स। और मुकाबला इस वक्त जारी है इस श्रृंखला का चैंपियन खिताब प्राप्त करने के लिए 90 वॉरियर्स और रानीपुरा के दरमियान। और इस बीच गेंदबाज रॉयसन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। सनील बैक ऑन स्ट्राइक इस वक्त सामना करते हुए रॉयसन की गेंद फुल टॉस गेंद उछालने के प्रयास में चूके इस वक्त अंतिम क्षण में और आखिरकार गेंद को विकेट कीपर ने अपने दूसरे प्रयत्न में फील्ड कर लिया। बेहतर गेंद थी इस वक्त गेंदबाज रॉयसन की और सनील इस वक्त कुछ हद तक सोच विचार करने के बाद एक बार फिर से अपने बल्लेबाजी के मार्ग पर तैयार। 4 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे इस पहले मैच इस फाइनल मैच में। 4 overs per side to be played in this final match। और गेंदबाज रॉयसन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंद पर जमीन पर 6 से 7 बार पटकने के बाद यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया। इस पर गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पर इस वक्त नजदीकी मामला हो सकता है। निशाना पहुंचा थ्रो पहुंचा इस वक्त लेकिन थ्रो को इस वक्त रिसीव करने में असफल विकेट कीपर और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। काफी जोखिम भरा दूसरा रन था लेकिन यशस्वीतम इस वक्त बल्लेबाज पूर्ण करते हुए सनील। और ऐसा कहना पड़ेगा सनील ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं इस वजह से उन्होंने जोखिम उठाया इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर। और इस वक्त इस गेंद पर बाल बचते हुए 2 रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 14 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। रॉयसन इस वक्त एक बार फिर से तैयार। सनील पूरी तरह स्टंप्स कवर करके इस वक्त खड़े हुए सामना करते हुए रॉयसन की गेंदों का। रॉयसन दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सनील के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद हल्के से स्टीयर किया खूबसूरती के साथ तो नहीं लेकिन स्टीयर जरूर किया इस वक्त। 1 रन का इजाफा गली पर गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा। और जहां तक सवाल है इस वक्त सनील ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और लेस्टन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रॉयसन की गेंदों का दूसरा ओवर उनके पारी का प्रगति पर 15 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और रॉयसन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। लेस्टन जो कि इस वक्त सामना करते हुए यह गेंद ऑफ द टॉस गेंद को मोड़ना चाहा। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची आसानी के साथ 1 रन में पूर्ण करने में सफल और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। सनील एक बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए और सनील की उपस्थिति इस वक्त रानीपुरा के लिए बेहद जरूरी है जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है उनके लिए। और इस बीच और सामना करते हुए रॉयसन की गेंदों का इनफॉर्म बल्लेबाज सनील इस वक्त तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन मिलेगा। अंडरआर्म थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ और आखिरकार पल के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज। 2 रन बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा पूर्ण कर चुके हैं। तो 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 overs completed 18 on the board। So this is an absolutely a good progressing year for रानीपुरा। और अंडर दिस कंडीशन क्योंकि रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है इन हालातों में 2 ओवर में 18 रन बनाना निश्चित रूप से एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कहलाएगी। पानी की मांग इस वक्त करते हुए बल्लेबाज सनील। और जहाँ तक सनील का सवाल है इस पूरे श्रृंखला में इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया है और इस मेगा फाइनल मैच में भी उस सफलता के सिलसिले को यहाँ पर वो आगे बढ़ाते हुए और निश्चित रूप से अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए। और तीसरा ओवर जोसेफ इस वक्त तीसरा ओवर प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सामना करते हुए इस वक्त लेस्टन। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और गेंदबाज जोसेफ ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद लॉफ किया इस वक्त। गेंद थोड़े से पीछे फील्डर तैनात लॉन्ग ऑन पर जस्ट अ सिंगल ही गॉट एंड इनफैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली। और जहां तक सवाल है बल्लेबाज के पैर पर टकराने के बाद गेंद इस वक्त डिफ्लेक्ट हुए थे स्क्वायर लेग पर लेकिन तीसरा रन लेना इस वक्त नहीं चाहा दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन
बल्लेबाज यहां पर पूर्ण करने में सफल. Couple of runs added both the batters, and with that couple run the scoreboard moving up to 20 on the board for losing 1 wicket at the start of the third over. In fact, जोसेफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेस्टर के लिए अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और लेस्टर इस वक्त सामना करते हुए. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े. एक रन मिलेगा जरूर, और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर. 21 लेग बाय का इशारा अंपायर का. और सनील इस वक्त काफ़ी थके मांदे नजर आते हुए. पिछले 2 मैचेस में काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था. नाबाद 43 रन एक मैच में पिछले मैच में 17 रन उन्होंने बनाए थे, और यहाँ पर उस सफलता के सिलसिले को आगे यहाँ पर बढ़ाते हुए. और जहां तक सवाल है, इस वक्त 15 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सनील. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए गेंदबाज सनील बैटिंग ऑन 15, और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार. डीप स्क्वायर लेग फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया जा रहा है. डीप मिड विकेट मौजूद, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर रहा, कोई लॉन्ग ऑफ नहीं, मिड ऑफ पर 20 गज के दायरे के अंदर एक फील्डर तैनात. डीप एक्स्ट्रा कवर रहा, और डीप कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज सनील के लिए. और गेंदबाज इस वक्त जोसेफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. सनील के लिए रिवर्स शॉट, गेंद को खेला टॉप एज, कोई फील्डर वहां पर नहीं, और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है. डीप बैकवर्ड थर्ड बैन से बाहर 4 रनों के लिए. This is an absolutely fantastic struck, improvisation करते हुए with a reverse shot with a twisted bat. He just played that one and finds the gap as well at deep back on the third man for a boundary. और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर. 25 for the loss of 1 wicket, and a fantastic batting display continuing here from the batsman Sanil. Is batting on 19, और जोसेफ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद एक बार फिर से रिवर्स शॉट खेलना इस वक्त खेलना चाहा, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए. जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे 1. जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर डिसीजन. और जहां तक सवाल है, ये विकेट यहां पर गिर चुका है, तो लेग बाय का इशारा. 1 विकेट लॉस्ट एंड सनील कीप्स द स्ट्राइक. तो इस वक्त सनील लगभग हर गेंद पर स्ट्राइक लेना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने दौड़ना शुरू किया इस वक्त दूसरे रन के लिए. पहला रन पूर्ण करने के बाद, और दूसरे बल्लेबाज ने अपना विकेट त्याग दिया इस वक्त, सेक्रीफाइस कर दिया, और इसी के साथ 26 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका. 2 गेंदें इस ओवर में बाकी. स्टिल 2 balls लेफ्ट इन दिस ओवर. न्यू बैट्समैन नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल wearing a number 7 jersey. एरिक्सन नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, और गेंदबाज जोसेफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद सनील के लिए रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर मौजूद डीप कवर पॉइंट पर. इस बार सनील दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. डेंजर एंड पर थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो काफी धीमा, और सनील स्ट्राइक अपने पास रखने में सफल. काफ़ी चतुरता के साथ इंटेलिजेंटली इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए सनील, और 2 रन अपने और टीम के खाते में जोड़ते हुए. 28 ऑन द बोर्ड. लास्ट बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, और जोसेफ इस वक्त अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज सनील के लिए. और इस बीच ये गेंद एक बार फिर से रिवर्स शॉट ऑफर करते हुए, लेकिन इस बार गेंद को खेला 2 स्ट्रेटर एक्स्ट्रा कवर पर. नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, but he got a single for that stroke. He just keeps a strike, and 3 overs completed. It's 29 for 2. Now I must say Ranipura looking in a commanding situation. 29 for 2 after completion of 3 overs. और अंतिम ओवर का खेल यहाँ पर बाकी, और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में रानीपुरा के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. लेकिन सराहना करनी होगी यहाँ पर बल्लेबाज सनील के, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस मैच में भी आगे बढ़ाते हुए अब तक वो जोड़ चुके हैं 21 रन. 21 इज बैटिंग ऑन 21 इंक्लूडिंग 2 बाउंड्रीज. सनील और अंतिम ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखने में सफल. और जहां तक सवाल है, गेंदबाज अरुण गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. तो इस वक्त अरुण गेंदबाजी शुरू करते हुए. चौथा ओवर शुरू होता हो, चौथा ओवर अंतिम ओवर. 4th एंड फाइनल ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स. और गेंदबाज इस बीच अरुण काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त 90 वॉरियर्स की ओर से, 90 वॉरियर्स कुलूर की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए.
और इस बीच 22 रनों पर सनील सामना करने के लिए तैयार. इस बैटिंग ऑन 22. सनील facing Arun. First ball down the track. Lofted that one into the gap. He finds the gap as well. In fact, it cuts it off just inside the fence by the fielder. इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. नहीं, सिर्फ ऐसा कहना पड़ेगा 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और एक बार फिर से स्ट्राइक अपने पास रखने में सफल सनील. He is moving up to 24 now. With that couple run, 24 of 13 deliveries he scored. Fantastic batting display continuing here from him. और अरुण ने एक बार फिर से तैयार. 5 गेंदें अब बाकी उनके पारी में. Just 5 balls left in overall calculation in their innings. अरुण to सनील. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा. डिफ्लेक्ट होते हुए गेंद निकल चुकी है. शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन. इस बार सनील को ऑफ द स्ट्राइक होना होगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर. 32 for the loss of 2 wickets. And for the first time in this match, Harrison is now going to face Arun. और अरुण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं. विकेट कीपर कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद अरुण इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. इस बीच ये गेंद रिवर्स शॉट. गेंद को खेला. पॉइंट पर गेंद पहुंची. तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. हालांकि विकेट कीपर गेंद को रिसीव करने में सफल और सनील काफी तेजी के साथ 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. 33 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट. नाउ जस्ट 3 balls left in overall calculation in their innings. और सनील इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. इस बैटिंग ऑन 25 in just 14 deliveries. और इस बीच अरुण की गेंद सनील के लिए. इस बार चूके. इस वक्त ढीली गेंद थी जरूर लेकिन स्टंप्स एक्सपोज करते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता चूके और शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. बाई का इशारा. 34 ऑन द बोर्ड. 34 for the loss of 2 wickets. Couple of overs left in their innings. और दूसरी अंतिम गेंद. सेकंड लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. अरुण टू हैरिक्सन. गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का. अरुण की गेंद इस बार हैरिक्सन के लिए. बेहतर गेंद थी. सनील का विकेट. इस बार ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को टटोलते रह गए विकेट कीपर और बल्लेबाज बाई के रूप में 1 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं. निश्चित रूप से बल्लेबाज सनील के लिए खतरा पैदा हो सकता था अगर ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट करके विकेटों पर लगाते, लेकिन गेंद को टटोलते रह गए विकेट कीपर और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं. 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. इन द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. अंतिम गेंद लेकर तैयार अरुण सनील के लिए. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. उनके पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार. यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया. इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए थ्रो पहुंचा. दूसरे के लिए बल्लेबाज और बड़े लॉन्ग स्ट्राइकर पर थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो को रिसीव करने में असफल. So the innings is a fantastic knock of 27 runs unbeaten played by Sanil in just 15 deliveries. And with his help, Ranipura finished well with the 37 for the loss of 2 wickets, and they set a competitive target of 38 in 4 overs for 90 Warriors. So 90 Warriors have to score 38 runs in the stipulated 4 overs with a required run rate of exactly 9.5 runs per over to become the champion of this prestigious cricket tournament, Planet Air Trophy 2026 Season 1, which is proudly presented by Planet Air Travels. तो जहां तक सवाल है इस वक्त 38 रनों का. 24 स्टिपुलेटेड डिलीवर्स. 38 रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. तो जहां तक सवाल है इस वक्त 38 रनों का. 38 दे हैव टू स्कोर आउट ऑफ दैट 24 स्टिपुलेटेड डिलीवर्स विद अ रिक्वायर्ड रन रेट ऑफ 9.5 runs per over. The target for 90 Warriors to become the champion of this prestigious cricket tournament, Planet Air Trophy 2026 Season 1, which is proudly presented by Planet Air Travels. जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस श्रृंखला के स्पॉन्सर्स का, तो कई महानियों ने इस श्रृंखला की सफलता के लिए अपना योगदान दिया है और मुख्य स्पॉन्सर्स के नाम इस वक्त लेना मैं मुनासिब समझूंगा. और मैं इन ऑफिशियल स्पॉन्सर्स आर this prestigious cricket tournament, Planet Air Trophy 2026 Season 1, which proudly presented by Planet Air Travels. Our some official sponsors are Mr. Levin. In fact, our some official sponsors are Levin Furniture and Borewell. Proprietor Mr. Lester Pantwal. Shanti Flower. Mr. Rohan Moodubidire. Deadice Construction. Silver Stair. Mangalore. All Mills Trading LLC, Dubai. Daryl D'Souza Hospet, Baitul Salam, Dubai, Pritam Nazareth,
Hospate, iCare Builders, Ashwin J. Pereira, Moodubidire, Sri Devi Cricketers, Japu, NLAP, Sachin Fernandez, Laundrywala, Mangalore, Ajit, Lobo Traders, Eric Lobo, Moodubidire, Leo Nazareth, Hospate, Wilson Sandeep Lawrence Kutina, Hospate, Loyal Nazareth Hospate, Donald Norona Allipade, Jason Dikuna, Dubai, Ditesh Fernandez Moodubidire, Rajesh Alvarez Hospate, Heral and Asha Arhanna, Dubai, and Srikant Coelho of Muscat. So thankful to all the donors behalf of the organizers of this prestigious cricket tournament, Planet Air Trophy 2026 Season 1, which is proudly presented by Planet Air Travel. So the innings of 90 Warriors is now going to begin. 38 the target for them out of their 24 deliveries they have to score for victory. 28-4 stipulated deliveries they have to score for victory with a required run rate of exactly 9.5 runs per over. देखते हैं 90 Warriors इस 38 रनों के 38 रनों के लक्ष्य तक निर्धारित 4 ओवर्स में पहुंच पाते हैं नहीं. दोनों सलामी बल्लेबाज सुनील और लिशांत मौजूद और इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इससे पहले कि 90 वॉरियर्स की पारी की शुरुआत हो आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए आज अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा. आइए सतीश, धन्यवाद. थैंक यू. Thank you very much, Gopi. And the final innings of this prestigious cricket tournament, Planet Air Trophy 2026 Season 1 will going to start now. 38 the targets set for the victory in stipulated 4 overs, 24 deliveries and 38 runs required for the victory for the 90 Warriors to win this match. Starts with a dot ball. Sunil is a man, is excellent tournament from him, from the bat, from the ball, even in the field. What a great all-round performance from him, and again he starts with a dot ball in this first over, second time in this over. Right arm over the wicket, wanted to go for reverse sweep, one more dot ball. Each and every dot ball will going to make a problem here for the team 90 Warriors, but here is a overthrow, no backup from the field, and they got opportunity to complete the single in the form of bye. So first run comes up here for the 90 Warriors. It's one without loss of any wicket, and Sunil and Lishant are the opening batters, are in the middle. The both did a fantastic job for the 90 Warriors in yesterday's match when they came into the mega final. And the Sunil is a man, and he's really played a fantastic knock in the semi-final for his team. And even Lishant, each and every matches, he played a crucial role for the victory for the team 90 Warriors. This time top edge, but ball will going to land it safely to the deep square leg region. One bounce collected by the fielder, and they're looking for the second chance of run out, and looks like the batter is safe. And the managed to complete the couple of runs. With that couple of runs, scored the moves on to 3 on the board. Just have a look at the replay there. But the fielder have to wait for the ball after one bounce, and that will give a little bit time for the batter to complete that couple of runs. And 3 without loss of any wicket in the over number, the first stage in progress. Fantastic cricket tournament is under progress. In the 2 days of really the successful cricket tournament, one must say, all the efforts which is paid off, and by the organizing committee of Planet Air Trophy 2026 and Planet Air Travels for organizing this cricket tournament with absolutely the great saying with the fueling our mission to the help the needies, and their tournament absolutely successful one. Wanted to go for the reverse sweep, missed it completely from the bat. I think he's got a bat onto that. No bat involved, by call by umpire. And with that by scope, and moves on to 4 on the board. Sunil will not going to bother about these singles. Exactly, they set a target of 38 to win this match. They have to avoid the boundaries in this over. Right arm over the wicket, he balls to Sunil. Sunil this again, he's got a little bit bat onto that. Wicket keeper, slight a bit of fumble, just a single for the batter. With that single scope, and moves on to 5 on the board without loss of any wicket. 33 more runs required for the victory in remaining 19 deliveries. So needed one of big shots here if they wanted to back in the game. Lishant is a powerful striker of the ball. Will going to face Sunil. Again tries that one. Lovely stop. Beautiful
Excellent fielding there from the short mid-wicket fielder. Commitment is so good. And just a single here for the batter Lishant. First over completed, tied over, which is comes to an end off of Sunil after completion of first over, chasing 38 to win this match. Just 6 on the board. That means 32 more runs required for the victory in the remaining 3 overs. 33 needed from 3 overs. 32 needed from 3 overs. And looks like that target is might be a little bit difficult one, but not impossible. Difficult road often leads to beautiful destination. The destination which is set by the opposition team for the 90 Warriors is 38. They got 6, still they need to get 32 in remaining 24 deliveries. Around the wicket, over the wicket, left arm, switch it. Played it over the deep cow point fielder, and that will go racing towards the fence for 4 runs. And this is what needed. Lovely improvisation. Just have a look at the replay. Lishant got that unorthodox stroke. Switch it quite effectively played over the head of the backward point fielder. And he got a boundary for that. Even the fielder has got a lot of effort behind that fielding. But still he couldn't manage to stop the boundary. And with that boundary, Skobanda moves on to 10 on the board. 28 needed for the victory. And the remaining 17 deliveries needed such kind of comeback here for the batters of 90 Warriors. They need to play like a Warriors if they wanted to win the match against Ranipura. Down the leg side, going to be a wide. They're going for a run. A chance of run out. Oh my goodness. The Lishant is not responding for the run. Sunil wanted to get the extra run. This is a huge dismissal. Wide call by umpire. Extra run already there, but he needed to get another extra run. The fumble by the fielder at short third man, and that's why Sunil wanted a run. Definitely is very much disappointed. They need to see that the Sunil is the one is running towards a dangerous end, and Lishant have to run towards the safer end, and this is really disappointment here for Sunil. 11 for 1. Joseph, the new batter in. Again the wide delivery. Now going for the run. Now going for the same situation. The same situation the previous one. That time Lishant is not responded. This time he's responded. They got a run. Wide +1. The couple of runs. The bowler is in absolutely under pressure. Leston are looking in trouble. Couple of runs added to total. 13 for 1. 25 needed for the victory. Top edge. Opportunity for the fielder. Jaswin is not trying for the catch. Just a single. No, no. Yes and no. Yes and no. Yes and no. He's in trouble. Now umpire asking for the third umpire. Well. Lishant wanted to come back for the second, but again the very poor running bit to the wicket. Absolutely poor running bit to the wicket. Now he is looking in trouble now. Lishant definitely is in trouble. If the batsman is back, I think the more trouble for the team 90 Warriors. They're looking in more trouble. The third umpire has been given. Is gone. Lishant is out of crease. Is short of a crease, surely. Huge fish in the net. Both the danger batters are in the hut. Sunil and Lishant. Both are out in the form of run out. It's 13 for the loss of 2 wickets. Joseph is a man. He's not really running quickly. When the ball is in the air, it's a long time for the batter to come back for the second. It's 14 for 2 now. Tense which is mounting up in the dugout of 90 Warriors. .25 needed for the victory still. Leston to the new batter Sandy. Left arm over the wicket. Nicely swept that one down to short square leg region. The only a single, not more than that.
with a single score, but moves on to 15 for 2 in the over number second is in progress. This is a mega final. This is a mega final of prestigious Planet Earth Trophy 2026 Season 1. Planet Earth Travels organizing this very successful Season 1. Very delightful trophy, attractive trophy in right of our commentary box in the main stage. The dream of these two teams to get into this beautiful, attractive crystal trophy. Again wanted to go for the reverse sweep, missed it completely from the bat. One more dot ball. You cannot play the dot ball. It's definitely crime in this 4 overs match. If you play the dot ball, we're going to make more trouble for the chasing team. Listen balls. Going for the safe shot. Appeal for half-hearted shout for leg before wicket, but it's from the bat. One more addition with the addition of that single score, but moves on to 16 for the loss of 2 wicket. Fantastic tournament, and even the umpires, the officials did a great job so far in the 2 days. Reverse comes into play, just a single. The bit good comeback here by the bowler Leston. After that, he's got a shackling start. He's back in the game with some good line and length. 17 after completion of over number 2. 21 needed for the victory in the remaining 2 overs. 21 means 10.5 runs per over. The required run rate for the team 91 is to be this match. Yes, we are talking about the officials. Thanks to the all 3 umpires did a great job. Umpire Suresh Moodubidire, Satish Moodubidire, and as well as umpire Swaraj did a wonderful job as an umpire for this cricket tournament. And in commentary box, our scorer did a lovely job. Man behind the screen, one of the most difficult job to do in commentary box. Definitely Kiran Joyce did a great job as a scorer. My friend Mr. Gopi, always, as always, very supporting in our commentary box. Thank you very much for Gopi. And all the cameramans, technicians of Bedra Media did a lovely job. Outside the line of off time, too far, going to be a wide. One more extra, 18 for the loss of 2 wicket. And even NLAPS sounds, providing a wonderful sound system for this 2 days of cricket tournament. Thank you very much once again, the proprietor of NLAP Sounds and Electricals, Sachin Fernandez. Appeal for run out. Umpire says not out, rightly so. Is safe by call by umpire. With that extra score, but moves on to 19 for the loss of 2 wicket. Time is exactly 6 past 20. Slowly the dark which is covering the ground. Lights are on, that artificial lights which is provided. The permanent artificial lights provided for this cricket ground. And already the natural light is off. Sun already finished the journey from east to west. And there's still another 11 balls remaining. Appeal for leg before wicket, but umpire know exactly this is a leg by. Ball is missing the stump. One more addition with the addition of that single scoop, but moves on to 20 for 2. 18 needed. 10 deliveries remaining, 18 needed. One big shot will go in to change the complexion of this match. Ericsson. Joseph lofted, chance for the fielder to take the catch. He drops it. He drops it, but single taken by the batters. A lot of mistakes coming from the fielding department of team Ranipura. 21. 17 needed. 17 needed of 10 ball. 10, 11, 9 ball. 9 balls correction. The batter is on strike. Joseph is on strike. Lofted! And he got the distance! Oh my goodness! Can you believe this? That ball is gone out of the park. Ball definitely in the arc of Joseph. And he dispatched that one out of the park.
What a shot there from the batter. Joseph is making the match quite interesting. 27 for 2. 11 needed for the victory. The match is not yet over. 8 balls remaining and 11 runs required for the victory. This has been a fantastic comeback. This is why I always saying that the cricket is unpredictable game. The cricket is game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. The one big shot will going to change the entire complexion of this game. The Joseph, the man, held his now and played an exquisite, lofted on drive out of the park. Ericsson to Joseph, bowled him, cleaned him up. Good comeback here by Ericsson. But the batter Joseph making a mistake. After he got 6, he just tried to repeat the one more. But always the bowler are searching for the comeback. Lovely delivery, good line. Just have a look at the celebration there of Ericsson. You know exactly that he's got a big fish in the net. Eleven needed from 7. 11 needed from 7. The 7 balls remaining. The jersey number of bowler Ericsson is also 7. And Tala for the reason. Eleven needed from 7. The batter came into bat. Prajesh to face. Down the leg side. Pressure is building up. 10 needed from 7. What a match. This is what the crowd wanted to watch the mega final. Need to finish with the nail biter. It's going to be anybody's game. 10 needed from 7. 10 needed from 7. The bowler Ericsson to Prajesh. Lofted! And ball is sailing into the deep mid-wicket boundary for a maximum. I request 90 warriors, don't cross the line. Here comes the next ball. The hitter from Prajesh. He's absolutely muscles that one. He's absolutely muscles that one. Ericsson really getting some treatment here. Exactly what the doctor ordered. The muscles man is muscled that one. 17 runs came from this over. Just 4 runs required for the victory in last over. What a change in the game. Unbelievable change in the game. Joseph the man is the reason behind that. After he got 6, Prajesh came in and he got one more 6. A fantastic final under progress. Unbelievable, isn't it? Now last over remaining. The bowler is going to bowl the last over. Sam brought into attack. The Sam, if he wanted to restrict the 4 runs in last over, he need to bowl like a Sam Curran of England. Starts with the wide. Wide +1. Couple of runs. The pressure is off in the first ball itself. Just a couple of runs required for the 90 warriors. One more crown for the team 90 warriors in this season. 2 runs required. Prajesh has got opportunity to get the winning run. They're going for the quick single. Sunil looking for the run out. Overthrow. 90 warriors are won the match. They become the champion of Planet Hair Trophy 2026. The celebration is on. They defeated the team Ranipura with the margin of 7 wickets. Congratulations for the team 90 warriors. Hard luck team Ranipura. Not really able to defend the total. The very good target set, but bowling is not up to the mark. Prajesh and then Joseph. Everyone did the job. A lovely cricket match. Lovely finish for the tournament. Congratulations for the winner. Congratulations for the
loser, they'll become the runner-up. And thank each and everyone for a wonderful support for the success of this Planetary Trophy 2026 Season 1. Thank you. Request and backup. Come out for it. कृष्णा मतलेसर बाजार
Requesting backup. Come up for it. डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार 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 Search and destroy. Let's go. डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार Requesting backup. Come up for it. Requesting backup. Come up for it. डीजे कृष्णा मतलेसर बाजार Hello, check. Good evening, everyone. Welcome to the post-match presentation ceremony of the prestigious Planet Air Trophy 2026 Season 1, which is proudly presented by team of Planet Air Travels. A wonderful cricket tournament which is comes to an end. 2 days of absolutely a festival of cricket which is witnessed in this most prestigious and historical Swaraj Maidan. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ರಾಣಿಪುರ ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. So for this post-match presentation ceremony, we have the dignitaries in the main stage already. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ಆಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಓಸ್ಪೇಟ್ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕ್ವಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಸ್ಲಿ ಓಸ್ಪೇಟ್, ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, and thank you very much sir for your contribution for the success of this cricket tournament. We have one more chief guest for the presentation ceremony. Frinson Ospet ivaru nammondhigiddare. Here is Deanery President of ICYM Moodubidire. Ivarige ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಣ್ಯರಾಗಿ ಮೆರ್ವಿನ್ ಒಸ್ಪೇಟ್, ಕಾನೂನು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಮೆರ್ವಿನ್ ಒಸ್ಪೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ honored with the memento. Welcome for this prestigious post-match presentation ceremony of a prestigious Planet Air Trophy 2026. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ರೋಹನ್ ಒಸ್ಪೇಟ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಫ್ ಶಾಂತಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸರ್, ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಸ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ರೋಹನ್ ಒಸ್ಪೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. So 2 days of wonderful cricket tournament. Everybody knows that without the support from the officials, it's very difficult to organize such a wonderful cricket tournament. 2 days of the cricket tournament which is successfully organized. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸತೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸತೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಲವಾರು ಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸತೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸತೀಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಪರೇಷನ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಇದೇ ಪರಿಸರದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೂಡ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪರಿಸರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ದ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಶ್ರೀರಾಜ್, ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಫ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ Shraj for your wonderful contribution for the success of this cricket tournament, hoping for the same support for the incoming tournaments. Yes, 3 ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ, ದ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಿ, ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ
ಗೋಪಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಸ್ ಅ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗೋಪಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೀಕ್ಷಕವೀರನ ಸಹಗಾರನೂ ಆದಂಥ ಸಹವರ್ತಿ ಆದಂಥ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕವೀರನು ಕೂಡ ಆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಮೈ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, Gopi. Absolutely, Gopi. And yes, coming back to the next one, very important part of the cricket tournament, the man behind the screen. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರಂದರೆ ಸ್ಕೋರರ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಟು ಡೂ, ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂಸ್ ಡಿಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್, ಕಿರಣ್ ಜಾಯ್ಸ್, ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಗಾರ ಕೂಡ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ as a scorer, as a commentator. So thank you very much, Kiran Joyce, for your contribution for the success of Planet Air Trophy 2026 Season 1. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಇರ್ಫಾನ್, ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿ. ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಇರ್ಫಾನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ number of subscribers and loved by each and every cricket lovers. Thank you very much, Irfan, for your wonderful contribution. Your team is did a great job for the success of this Planet Air Trophy 2026. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡೋದು ಮೈಕ್ ಹಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆದಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೈಟರ್ ಆಫ್ ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್, ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026. ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕಾಣೋದು ಕೇವಲ 2 ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 2-3 ತಿಂಗಳ ಎಫರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, 10 ಕೈಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ನಾವು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್. 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಆಕಾಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಕಾಶ್ ಫಾರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಎಸ್, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ individual performance of this prestigious Planet Air Trophy 2026. So first of all, began for the 2 finalists, the team 90 Warriors and team Ranipura. Chappale barlebeku 2 tanda, the most deserved team in the mega final. Of course, winning and loss, which is a part of cricket, but both are played a very good game of cricket. Nothing to lose the heart. ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ತಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೋಫಿ. ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. Just it's a part of game. So played a very, very wonderful game of cricket. First of all, it's a final man of the match. Very difficult. Final man of the match ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಉಂಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ 90 Warriors are really struggling to
reached the home. ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಣಿಸಿದ್ರು ದ ಮಣಿಪುರ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% in the game. And 90 warriors out of 90% they're out of the tournament. But man who came with the bat with a lot of confidence, hit 1-6, changed the complexion of the game. Absolutely you're right, Mr. Joseph. Joseph ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. The game changer. Hit 1-6 and changed the game, and he is the man of the match. And he will going to receive the very beautiful trophy from our chief guest. 90 warriors, they played like a warriors, and he is deserved the man of the match. Congratulations, Joseph, for your wonderful performance. Yes, now next one, the very important part of the cricket, the unique part of cricket, the best bowler of the tournament. The best bowler of the tournament, which is goes to the man who picked up most wicket in the tournament, and more deserved man. Any guess? The letter which is start from R and ends in N. Absolutely, Royson. Royson of 90 Warriors Cooler, who judged the best bowler of the tournament for his wonderful performance. They picked the most wickets along with some economical overs. Congratulations, Royson, for your wonderful performance in this tournament for 90 Warriors to become the champion. Yes, next one more important part of the cricket, the best batter of the tournament. The best batter of the tournament, undoubtedly. Yeah, guess Bundel and Pettu Burde, Bandar Anchagobudir. So the man only, one and only, the man who played throughout the tournament is unstoppable from the bat, is one and only Mr. Sunil of Ranipura, is the best batter of the tournament. Arege gottu pandi 8 run barder in the batted. But 143 runs which is scored is the highest individual score in one match by Sunil. But throughout the tournament is unstoppable and must deserved man to receive the best batter of the tournament. Congratulations, Sunil, for your wonderful performance. And unfortunately, your team not becomes the champion, but you are played like a champion. And now it's all up to that the dream of each and every players to become the man of the tournament. Man of the tournament, man of Planet Air Trophy 2026, the king of all individual, which is goes to again the man, of course, man of the series Pandikudle, I to rud contribution kornakle matra chance upon the wicket taking as well as scoring the runs. The man he did in a both department with his golden arm, and one and only once again Sunil will be the man of the series, the man of the Planet Air Trophy 2026. What a tournament he is having, wonderful season, being the one of the top class player in South Kenda district, representing for the team Friends Kuttar, and now he is playing for his home team and played like a champion and deserve the man of the series. Congratulations. Yes, that's the end of all the individual department. Congratulations for each and everyone for your excellent performance in this tournament. Now, time to welcome the runner-up of the prestigious Planet Air Trophy 2026 Season 1. Let's welcome Team Ranipura. Chappale barlebeku, the big round of applause required for the runner-up of the prestigious Planet Air Trophy 2026 Season 1. One by one, kindly receive the medal from our chief guest. Planet Air Travel ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಗುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ, and one of the most memorable cricket tournament played in this beautiful and historical Swaraj Maidan. So time for the photo session and the celebration, and now it's a time to receive the most beautiful trophy. Yes, one of the most delightful and attractive runner-up trophy, the Crystal Trophy.
the special and most attractive part of this presentation ceremony. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ So congratulations for the team Ranipura to become the runner-up of prestigious Planet Air Trophy 2026 Season 1. Wonderful performance from Ranipura to receive this beautiful and very attractive crystal trophy, the Planet Air Travel Trophy 2026 Season 1. Congratulations for the winners, and now for the runners. Now it's a time to invite, of course, so before we are going to call upon the champions, of course, it's not an easy journey for the 90 warriors, surely. Yesterday we have watched so many matches, but 90 warriors, definitely they came into this mega final with a lot of hard work, and they must deserved. And let's welcome the team 10 short of 100, 90 warriors. The 90 warriors are to become the champion of the prestigious Planet Air Trophy 2026 Season 1. Let's welcome all the champions into the main stage to receive the medal. Well deserved champions for this tournament. Congratulations for each and everyone. They will going to receive the cash prize along with check. They will going to receive the very beautiful trophy from our chief guest. Search and destroy. Let's go. Here we go, the Champions Trophy. The 90 Warriors will going to receive the Dream Trophy, very attractive trophy, Planet Air Trophy 2026 Season 1. Absolutely, the very clinical performance there from 90 Warriors. They played like a Warriors and they become the champion. The once again 90 Warriors, the consecutive success for them in this particular season. The third crown in the head for the 90 Warriors. Of course, luck is a fundamental ingredient in success. They got some luck as well in the quarter final and in the second round and the first round. So time for the celebration. So here you go. The cheers for the champion. Here you go. 90 Warriors are to become the champion of Planet Air Trophy 2026 Season 1. Congratulations. Thank you so much. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು